और ये सेशन का जो नाम है ना, इंडियन लैंग्वेजेस एंड नॉलेज प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब मैं एक दो शब्द बोल देंगे, उसके बाद सबको निमंत्रण देंगे। ये इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, ये बड़ा अजीब बात है, क्योंकि देखिए 5 पीढ़ी गोरा अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया से 50 साल से हिंदुस्तान आ रहा है, तो और मैं पूरा विश्व घूमा है, तो बहुत गहराई से देखा है भाषा के बारे में। और मैं आपको सचमुच में बतलाता है कि सिर्फ 2 देश है दुनिया में जहां लोग अंग्रेजी के पीछे में पागल हैं, हिंदुस्तान और बगल वाला पागल देश। मैं मजाक नहीं कर रहा है, ये सही बात है। दूसरी चीज़ है, आप हमेशा याद रखिए, मैंने एक चीज़ में मेरा नज़र में आया 50 साल से जो हिंदुस्तान में आ रहा है, मैंने ये देखा है ना कि यहाँ हर एक व्यक्ति गांव में कितना भी गरीब है, कितना भी अमीर है, 4-5 भाषा आता है। अगर मैं तो बचपन में बिहार में रहा ना, अगर मैं गांव में रहता है और फिर पटना आता है, तो धीरे धीरे मेरा जो मगी, अंगिका, बजीका, भोजपुरी, मैथिली वो सब भूल जाता है। फिर दिल्ली आकर के अंग्रेज बन के पूरा अंग्रेजी में। अब प्रश्न उठता है, तो उससे क्या है ना, लोग बोलते हैं ये तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मैं एक अंग्रेज लोग का कमजोरी बतलाता है, मातृभाषा मेरा अंग्रेजी। आपको मालूम है अंग्रेज लोग को दूसरा भाषा सीखने में बहुत मुश्किल नहीं हो पाता है। कितना वाइस चांसलर, कंपनी डायरेक्टर विश्व में हमको हमारे पास आकर के बोलते हमको जलन है तुम्हारे साथ, पूरा जीवन में हम एक दूसरा भाषा सीखने को कोशिश करें, नहीं हो पाता है। तो अगर आप दिन रात अंग्रेजी बोलता है, दिन रात अंग्रेजी सोचता है, तो आपका बच्चा भी वैसी होगा और यहाँ का भाषा आएगा नहीं। जब यहाँ का भाषा नहीं आएगा ना, तो आप आगे अपने संस्कृति के साथ, अपना बच्चे के साथ नहीं हो पाएगा, सब अंग्रेज बन जाएगा और आपको विचित्र विचित्र जवाब देगा जीवन में। बात तो सही है ना। तो चलिए अब तो सेशन शुरू करेंगे। तो मैं माफ़ कीजिए, मेरा उच्चारण कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, देहाती उच्चारण के साथ है। लेकिन अभी कोई श्री A.G. अल्फोन, एमिनेंट राइटर एंड एक्स सिविल सर्वेंट बाबू है, आइए पढ़ाइए। कैसे? AJ और KJ, अरे वो तो ये छपवाया है, तो मेरा गलती नहीं है। आप पढ़ाइए ऊपर, आइए ना। हाँ, ताली बजाइए उनके लिए, मजा है। आप अगली है कशोल किशोर, राइटर, और वो भी एक्स बाबू है। कहाँ है? आइए ना, आप भी आइए, बैठिए। उसके बाद सुरेखा साहू, आप भी आइए ना। वो भी, अरे ये तो अभी भी बाबू है लग रहा है, और वो भी लिखत है, ये तो बहुत खुशी का बात है। उसके बाद कोई प्रोफेसर है, उनका नाम है MJ वासी। हाँ, अच्छा, और वो अध्यक्ष है पूरा देश का लिंग्विस्टिक सोसाइटी। ये तो कमाल का बात है। आपको निमंत्रण दे रहा है, आप आइए बैठिए। और अब मॉडरेटर कोई जिंदल जी है, विनय कुमार जिंदल, आइए बैठिए। अब मेरे समाज और जिंदल जी अब पूरा कार्यक्रम। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक नया परंपरा कर रहा है ना, कोई और लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल ऐसे नहीं करता है, पहले फैसिलिटेशन करता है। गंगा जी और संजय आइए, कुछ अच्छा अच्छा चीज दे दीजिए हम दोनों को, सब लोग को। कहाँ है कि बाद में करेंगे? हाँ, अरे थाली बजाइए। ये विदेश में नहीं करता है ना, ये तो खाली हिंदुस्तान में। ताली बजाइए ना, कुछ नहीं मिलता है विदेशों में, खाली हिंदुस्तान में।
ताली बजाइए. We have worked together in social justice policy, but she has become writer and people. And he is a writer and a very good photographer, world-class photographer. Hello. Good morning to all distinguished guests, scholars, writers, administrators, and members of the audience. I am thankful to Shri Ganga Kumarji to give me this opportunity to moderate this session. It is my privilege to moderate this important session, Indian languages and knowledge preservation. As we all know, India's linguistic diversity is richest in the world. Our languages are not merely instruments of communication, they are living archives of memory, identity, philosophy, ecological wisdom, and collective experience. Every language holds within a unique worldview shaped over generations. Yet, even as we celebrate this diversity, many languages, especially regional, tribal, and oral traditions, are facing vulnerability. Globalization, migration, digital homogenization, and changing educational priorities are transforming the linguistic realities of our society. So, this has raised a question before all of us how to preserve languages, but at the same time, how to ensure the languages are living, evolving, and meaningful in the contemporary life. So, this has raised two basic questions before us. Will digital systems help protect linguistic diversity, or will they unintentionally accelerate homogenization? The second most important question this has raised before us is how can governance, education, communities, and culture work together to ensure that linguistic heritage of India is not reduced to a symbolic celebration alone? To discuss on these all issues and all these questions, we are joined with the eminent panel of distinguished speakers, Shri Alphonse ji, Shri Kaushal Kishore ji, Shrimati Surekha Sahu ji, MJ Varsi ji. I warmly welcome all the panelists and thank them for being part of this important conversation. Now, I begin with the first question for all our esteemed personalities. So I'll start from you, sir. Languages are not merely tools of communication. They carry memory, worldview, and civilizational knowledge.
What do we lose as a society when language disappears? Good morning. Very happy to be here. Thank you, Ganga Umar, for inviting me here. I already warned him that I'm really not an expert in this particular subject. I just going through the brochure, there were many topics on which I have really spoken better, but you chose asked me to speak on this, so I should express my ignorance in a lot of things because I'm really not an expert. Really very happy to share the stage with such distinguished people out here. I also see my senior colleague Sanjeev Chopra sitting there. He was the director of the IAS Academy, scholar, writer, many things. So see some of my friends out here, very happy to be here. Now, first of all, I come from a village. I studied in Malayalam medium school. When I passed school, I couldn't write or speak one sentence in the English language. There was no electricity in my village, so we studied under the garrison lamp because the entire village didn't have electricity. My father was a school teacher with 9 children. And hold your breath, he was a little crazy like me, my parents. They adopted 2 more from the orphanage. We became 11 children. I'm not here to sell property. I don't come from a poor family. I was from a well-off middle-class family. Basically, my thought process, my thinking process, everything is basically Malayalam. And mind you, it's not Malayali, okay? Because most North Indians pronounce the word as Malayali. You speak Malayali. It's not Malayali, it's Malayalam. Okay. So I carry that heritage. So my deepest emotions are always expressed in the Malayalam language. In my house, I have my wife and my 2 sons. Both of them are abroad, but we speak only in Malayalam, not in English. And let me correct here. It is not out of any inherent feeling within me that my language is superior to any other language. No. I do not hold that Malayalam is superior to any other language. I speak a language because I was born with that language. My mother spoke to me in that language. So my emotions are better expressed in that language. So for me to say I were a very proud Malayali, sorry, there's nothing to be proud of. Each person is born with a language about which he can be very. I don't see this whole thing about pride in a language. That leads to problems. That leads to exclusion. When you say I'm proud, that means you are not so proud about something else. Why should I not? I mean, why should I be less proud of somebody who speaks Tamil or any other Punjabi or anything? I think you are born into it. Like I'm a Christian because I'm born a Christian. But I'm not proud to be a Christian. Why should I be? I mean, I'm born there. I have no intention of changing into anything else. And I'm pretty happy everybody believing in whatever they are born in. So I think problem with we getting unnecessarily parochial about our language has huge dangers of, I'm putting in inverted commas the word nationalism. Okay? When that leads to say that your country is better than anybody else, like some country today is declaring we are the only country in the world, we can bomb anybody, we can kill anybody, all that leads to a feeling that you are superior to anybody else. Sorry, nobody is superior. Even though if you look at the Declaration of Independence of the US, it says, starts with the sentence that because we are all born equal, but did they give voting rights to the blacks till, 1964? Didn't. So we say something, we declare something, but then we practice something else. Now, how do we preserve our language? Like I come from a state, Malayalam is a very young language. It possibly got a script only in the 9th century. We evolved from Dravidian languages, mostly Tamil. So we are possibly the youngest language in the country, Malayalam. But Malayalam has incredible amount of literature. It's one of the richest languages in terms of the quantity of literature. Like a lot of books which are published in Kerala to sell 500,000 copies. You would be surprised. Such a tiny state.
Many of the books which are published sell 500,000 copies. And therefore, so we have a people who actually keep the language alive, because unless people buy books, the language won't be kept alive, the authors won't be kept alive. Now the problem is, how do we preserve whatever is our inherent knowledge? Now we are in an age of AI. Now we have a huge problem here. Are we able to digitize most of our knowledge and be available for an LLM model to work? Because unless you have an LLM model which can work, which can be trained on the AI, you can't have really all your ancient knowledge preserved. I'm told the government of India has a scheme of digitizing, what, 1.5 million or multi-million number of ancient documents on the Sanskrit language. You have a scheme. But the problem is, do we have the hardware and the software to digitize some? And even if you digitize, how do you make an LLM model out of it? Isn't it? Because you need millions of actually documents for an LLM training to come into place. Is it possible? Even in Sanskrit, in Hindi, how much of our ancient traditions, language, text is actually digitized, number one. Number two, after digitization, do we have the software to train through an LLM model? Do we? Should happen eventually, but when is it going to happen? I have my serious doubts. So preserving the ancient wisdom, traditions, all that stuff, I think is extremely important in India. And of course, Nalanda, this entire Nalanda Dialogue talks about, we were possibly the repositories of the biggest knowledge in the world. Yeah, knowledge in the world. And of course, we all talk about the Greek tradition, Greek literature. I think long before that, we had a tradition of so much of literature, so much of knowledge. When did the West come to know about the planetary systems, the solar system? I mean, Galileo was burned alive at the stake, I think, by the Catholic Church, because he said, he says, there is a solar system. And he was thrown out, excommunicated by the church. Long before that, thousands of years back, our people, we knew about the solar system, about the whole lot of stuff. And if you read the Gita and the Upanishads and all these ancient literature, there is so much of inherent wisdom which is there. But the whole question is, do we live according to that knowledge, that wisdom? That's the greatest thing to. See, let me tell you one of the scenes from one of these movies, where the Greek emperor is attacking Persia, and he's on the doorstep of the Persian Empire. You know what the Persian Empire says? What Persian emperor says? He says, the barbarians are at our door. So what the modern civilization considered to be the most ancient, biggest civilization in the world, the Greek civilization, was considered by the Persians to be a barbarian civilization, isn't it? So it all depends on the perception, our traditions. I think we just need to live it. Yesterday I was having a lengthy conversation with a friend of mine for about 2 hours in the IIC coffee shop. IICB also talks things other than politics, okay? Other than gossip. 2 hours. And he's running an organization which only theme is goodness. How can humanity turn to goodness? If our culture, our civilization doesn't help us to be good, I think it's useless. If I don't bring India's goodness into my office, it's useless. Absolutely. We talk about our ancient civilization of being at the footsteps of the teacher and living together. That's ancient Indian civilization. The biggest contribution of India to the world is Vasudhaiva Kutumbakam. But do we treat each other with dignity? Do we treat the planet with dignity? We've destroyed planet. We've destroyed our rivers, though we pretend to worship them. We completely destroyed our air. We have the pride of being the dirtiest city in the world. Therefore, one moment, I'm just concluding. When we talk about wisdom, it has to be a lived wisdom reflected in our lives. Otherwise,
All the talk of our ancient civilization, our wisdom is useless unless it reflects in my job. When I got into civil service, I said I have only one objective when I went to Masuri Academy. I said my objective is only to bring a smile on the face of the citizen. That's all, nothing more. So, sorry, I'm deviating, but I'm taking... Thank you very much, sir, for your insightful perspective, sir. And your extremely important point, sir, that you have connect the languages and their preservation, sir. Sir, now I request Kaushal Kishore, sir, to have their views on this point, sir. I will begin with one confession and one disclaimer. I don't know. The confession is that I'm not an expert on linguistics, or I have not studied language. I have studied economics from Delhi University, Delhi School of Economics, JNU. Professionally, I was part of public administration in Government of India. So public finance, public administration. But yes, so this is the confession part. And this is the disclaimer part. Confession is, I was born in a village of Patna district. My mother was teacher and my father was a school headmaster. Yes, sir. We were four. I was the third child of that teacher couple. 25 kilometers away, and this is what I would like to believe, that it is on the way from Patliputra to Nalanda and Rajgir. So in my wild dreams, I think that if Lord Buddha may not have stepped his foot on my village of my birth, he must have seen. Historically, it is said that he spent 10 plus Varsavas in Magad, and Magad always meant. So 45 years after he lived, he died at the age of 80. At the age of 35, he attained enlightenment. So historically, it is places where he spent his Varsavas, 4 months of rainy season, that is identified. Maximum number of years was spent in Sravasti. Then close to 10 years it was spent in Magad. तो 10 साल अगर उन्होंने मगध में बरसावास गुजारा तो मेरे गांव से या तो देखा होगा या नजरें पड़ी होगी. So I feel fortunate. So that is my connect, sir. I believe I would like to place this, coming back to your question, into 3 parts. Who we are linguistically, how did we come, where we are, how did we reach here, and what we should do, drawing lessons from who we are, how did we reach here. I think even now we have historical record from who we are. 1872 first census, our literacy rate was 3.5%. So what happens in 1901? Again, less than 5%, right? What happens when we got independent? 1951, it was 18%, and where we are as per the 2011 census. Mind your literacy figure, that is ability to read, write, and do plain arithmetic, counting. Even illiterates are able to count and do plain arithmetic, so reading and writing. So still it is 74%. So whether we call it 3,500-year-old civilization, 5,000-old years civilization, large part of our civilizational existence has been lived in oral tradition. We have been illiterate society. If by 1872 literacy was only 3.5%, it can be well imagined. So we have been a civilization of oral tradition. My mother tongue is Maghi, and my mother used to make a transition from Maghi to Hindi when I used to land in her school as a child, and my father would speak to me in Hindi. I believe, I'm not familiar about the reality of
southern part of the country, but Indo-Gangetic belt, everybody who has been to a school or to a college, he knows at least 3 languages. He knows the folk language, Maghi, Hindi, English, and being born in that land, one has some knowledge of Sanskrit and Urdu. What is the difference between Urdu and Hindi? But for the script, hardly any difference. Languages become different when the verb forms changes. It is not by adopting adjectives, nouns, and pronouns, right? Once the verb form gets changed, then only it becomes a different language. It is just like a species. When 2 different species can crossbreed and produce a fertile offspring, then they belong to the same species, right? So similarly, Hindi and Urdu. So anybody born in Indo-Gangetic plain, he knows the Awadhi, Mathili, Bhojpuri, Angika, Bajjika, Malvi, Bundelkhandi. Hindi is the medium of instruction in school, and then English. And he knows Sanskrit, he knows Urdu. ओरल ट्रेडिशन का देश रहे हैं हम, लेकिन भाषाएं, लोक भाषाएं मर रही हैं. लोक भाषाओं के मरने से हमारी जो संचित थाती थी, ट्रेजर ट्रोव ऑफ आवर सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो गोइंग अवे. If we don't do something concrete here and now on an urgent basis, what will happen? Before 1837, we did not know that this land is the land of Buddha. We did not know that we had the Chakravarti Samrat, Devanam Priyadarshi Ashok. So can we imagine in India today, 2026, can we think of India who is unknown or remains innocent of Ashoka the Great and Lord Buddha? How poorer we would be. It got, I will take 2 minutes. It got lost. Only James Princip, he deciphered Brahmi, and then by 1875, 1900, we had rudimentary knowledge that yes, there was a Patliputra, there was a Nalanda Mahabihar, there was a Ashok, then we started locating. So unless we do something concrete, immediate, and here and now, in recording what is there, the body of knowledge which is contained in folk languages like in Magadhi, Mathili, Bajjika, Angika, Malvi, Bundelkhandi, and countless others. India has 700 languages. 22 of them are part of the 8th schedule. 121 or 22, they figure in the census language code. No, 22 is 8th schedule. 122, there is a separate code in the census, right? Three of the languages, Sanskrit, Tamil, and Pali, we have accorded classical. But that is only a scratching of the surface. So, just like Brahmi script, Kharoshti, and other things, it will get lost unless we do. And with the loss of the treasure trove of civilizational knowledge, which is contained in the folk languages, we will become what we were before 1837. So, as of now, I will say only this much. Sir, thank you very much, sir. You have taken our discussion to deeper cultural dimensions, sir. Now I request Surekha ma'am to have their views on this question, please, ma'am. Hello. Hello. Thank you, everyone. Thank you, Ganga and Vinay. Just want कि अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें, बिकॉज मैं साउथ में ट्रैवल किया, मैंने ईस्ट में किया, अब मैं सेंटर पार्ट से हूँ. आई एम फ्रॉम भोपाल. तो जी मैम, प्लीज. लैंग्वेज आर नॉट मेयरली टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन. They carry memory, word view, and civilization knowledge. What do we lose as a society when languages disappear? Definitely. तो languages जैसे आप सभी ने कहा है, language क्या है? हमारा माध्यम है एक दूसरे को हमारे संस्कृति के बारे में बताने के लिए या हमारे विचारों से अवगत कराने के लिए. जैसे ही आपने
बहुत अच्छा कहा कि आप मलयालम में बात करते हैं, आपके उधर मगधी और बाकी भाषाएं चलती हैं। जैसे ही हम लोग अपनी हिंदी में बात करते हैं, तो हमारे हर प्रांत में अलग अलग लैंग्वेजेस रही हैं और उनका अपना एक ट्रेडिशन रहा है, कल्चर रहा है, और वही भाषाओं से या कल्चर को उन्होंने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन किया है। तो लैंग्वेजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसा हमारे स्टार्टिंग में कहा कि इंग्लिश ही कोई एक भाषा नहीं है जिससे हम अपने आप को समझें कि हम नॉलेजेबल हैं या पढ़े लिखे हैं। जी बोलिए। Sir, we will have your questions in last, sir. Sir, we will have your question in last, sir. मैं यही कह रही हूँ, जैसे हम लोग की मातृभाषाएं हैं, हम सपने देखते हैं अपनी भाषाओं में। कोई डर आता है या फियर है या हमें मदद चाहिए तो हमें हमें हमारी मातृभाषा, आप मलयालम में बोलते होंगे मदद के लिए, आप मगधी में बोलते होंगे, मैं हिंदी में बोलती हूँ मगही। वैसे ही हम सपने भी और वैसी मदद के लिए। तो भाषाएं हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर जैसे हमने कहा, हम क्षेत्रीय भाषाओं को या अपनी भाषाओं को जितने अच्छे से समृद्ध करेंगे और इन्हें प्रिजर्व करेंगे, मुझे लगता है कि हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन आगे बढ़ेगा। और इससे ये नहीं है कि हम कहीं पीछे हो जाएंगे, हम आगे चलते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम, जैसे आपने कहा बिहार में कि कितने लोग कितनी भाषाओं को जानते हैं, तो ये एक एडवांटेज है हम लोगों को कि हम क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अपनी हिंदी और इंग्लिश तो हम लोग जानते ही हैं। और मुझे लगता है कि सरकार अगर इन भाषाओं के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ काम करेगी, जैसे मुझे लग रहा है एआई का आप कह रहे हैं, तो अब बहुत काम हो रहा है क्षेत्रीय भाषाओं में। इवन अपनी पांडुलिपि को प्रिजर्व करने के लिए बहुत काम हो रहा है, और एलएलएम की सहायता से और एआई की सहायता से। और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है हम लोग अपने पुराने जो हमारे पांडुलिपियाँ हैं उनको पुनर्जीवित कर पाएंगे और आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर पाएंगे। धन्यवाद। मैम, होगा, धीरे धीरे होगा सर, बट होगा ज़रूर, हम लोग आशावादी हैं। आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सिंपल भाषा में कितना डीप कंसर्न दिखाया, पर्सनल कंसर्न दिखाया अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ, वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। अभी नाउ आई रिक्वेस्ट वारसी सर टू हैव देयर कमेंट्स और देयर व्यूज़ ऑन दिस। Thank you, Vinay, for initiating the session in a right perspective with the question that you posed about the preservation. Since yesterday, first of all, I would like to congratulate Ganga Kumarji and his entire Nalanda Litfest team for giving me this opportunity to share my thoughts with you all. This is very unique opportunity for us to share when we talk about multidisciplinary and interdisciplinary approach to see. So we are on this panel from different backgrounds, as scholars like Alphonse, Surekati, and Sir. So I have traveled a lot, having lived in 15 years in US, teaching their Indian language and culture. And since yesterday, I am hearing the debate, discussion, the dissent going on here on this platform. Chopra sir, Nalanda University, Vaitanga, Siddharth sir, Madam from Mauritius, and many different perspectives that we are listening since yesterday about talking preservation, language, IKS, Indian knowledge systems. So what we have realized lately that India is since long that it is one of the richest linguistic and cultural nation of the world. Unfortunately, we have not, हम कहते हैं कि घर में चीजें होती हैं तो हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. Even the first linguistic survey was done by a foreign scholar, the linguistic survey of India, George Gideonson. We have not realized the importance that we have given in the past to the world, the knowledge system, the Nalanda knowledge system that we belong to. We have given the world everything that the world deserves. Slowly, somehow or the other, that we have ignored the wealth that we had in our understanding, in our preservance, but slowly it has gone out. But lately, the people in the world, they have realized India as a knowledge hub, knowledge system, and we can produce many things. What
what about the different language? When we talk about the richness of the linguistic diversity of our country, at the same time we are talking after a long time, we have seen an education policy that give emphasis on regional languages, home languages, local languages and mother tongue education. So if you want, अल्फोंस सर ने सही कहा कि मलयालम में जब हम सपना देखते हैं, हमारी मातृभाषा में जो सपना देखते हैं, फिर जब हम ट्रांसलेट करते हैं, हमने वहाँ पढ़ाया तो हमने भी देखा कि हम सपना अपनी मातृभाषा में देखें। मैं मैथिली बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, तो मैं उसी भाषा में सपने देखता हूँ। और जब हम बात करते हैं, ट्रांसलेट करना पड़ता है, एक मैकेनिकल ट्रांसलेशन हमारा ब्रेन करता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश को दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं। इट इज़ we cannot deny the fact that English is like employability language that gives employment to the people who are running worldwide in a global perspective. But we have to work. Since yesterday also we have heard somebody was talking about a revival of the language in Thailand or somewhere. I know for the Hebrew was dead at one time, but slowly they have revived because of the practical use. So we have to get into preserving, like we have to make data of all this with the help of artificial intelligence. And many technological young generations are more powerful, more knowledgeable than us. They can preserve, document. Documentation is one of the important part that we can document. सर ने सही कहा कि हम बिहार में जब ग्रो होते हैं तो हम कई लैंग्वेजेस बोलते हुए ग्रो होते हैं। वहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने जब पढ़ाया यूएस में तो वहाँ दे आर सो सरप्राइज्ड कि हाउ यू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन इंडिया यू so many languages. 2011 census that speaks about 1361 mother tongue or like languages besides oral traditions that we have transmitting medicine, culture, like folks, everything that oral tradition is a very strong cultural ethos of ours. So we have to work in that direction. I think preservation, documentation is one of the important aspects of this hour to get the local languages or regional languages get going like in our. थैंक यू वेरी मच सर। सभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि सपने हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं। कल रात में अभी पंजाबी में सपना देख रहा था, तो मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो मैंने भी ये पूरी तैयारी रात की अपनी पंजाबी में की थी सर, कि कल सुबह मेरे को सपने जो आ रहे हैं वो कैसे वहाँ पे दर्शाने हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो प्रिजर्वेशन को लेके डीप कंसर्न दिखाए हैं सर, प्रिजर्वेशन को लेके बोला है कि इट्स नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनल सर, इट हैज़ डीप कंसर्न विद एवरीबॉडी, एवरी इंडिविजुअल सर। तो सर हम इस पूरी डिस्कशन को थोड़ा और ब्रॉडन करते हैं सर। तो नाउ वी हैव ओनली वन स्पेसिफिक क्वेश्चन सर, बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड टाइम सर, 3 to 4 minutes sir for each question sir, and only one question for eminent personality sir. Sir, for Sir Alphonse sir. Sir, since you have worked a lot from policy execution to policy formulation sir, sir, how development, sir, we generally talk about development policies sir, which are having often prioritized economic growth and administrative efficiency sir. But now here sir, how can language preservation become an integral part of governance and development rather than a parallel cultural concern sir? I was a member of the drafting committee of the NEP. In fact, the first part, the introductory part, that our young people should dream, they should discover knowledge. So most of that is my contribution. Then I became minister, so I had to leave. The whole problem is, as I told you, I spoke only Malayalam, didn't speak one sentence in the English language. Then I learned English. And to confess really, today, I can make, I'm a politician today. And of course, before that I was a district collector. I can make a 3-hour speech in Malayalam without any problem. I'm as good as any politician, and we Malayalis are really great with a mic. So I can make a 3-hour speech in Malayalam without any problem. I'm good at it. But let me make a confession. Most of my thinking process, my emotional attachment is to Malayalam, but most of my thinking in conceptual level, unfortunately, is English. And I don't see anything wrong with that. Most of my speeches, even today, the way I'm speaking just now, I'm thinking in English, I'm translating into, when I speak in other language, into that language. Is there something wrong with that? No, there's nothing wrong with that.
As long as your fundamental is very clear that the language and your culture, everything is designed to bring humanity together with the objective of Vasudeva Kudumbakam, I do not accept any argument that is divisive of humanity. Why should we? Whether English is good, most of the knowledge today, which really I'm talking about technical knowledge, ever since the Industrial Revolution comes, it's in the English language, whether we like it or not. I went to speak in a medical college and they said, sorry sir, you'll have to speak in Hindi because these medical students do not understand English. My simple question to the Vice Chancellor was, show me your textbooks in Hindi for medicine. Then I said, let me speak to the children in the engineering colleges. They said, sorry sir, you'll have to speak in Hindi because they don't speak English. I said, show me your textbooks, your engineering textbooks in Hindi. So when we make a claim that we are a certain language is repository of knowledge, it has to be backed with substance. Today, why is Chinese, they have their own platform, they don't use Google, because they have developed things in the Chinese language. They have a huge LLM model in the Chinese language. Almost everything that is in the English language is today in the Chinese language. Why is it that it had to be a marshal in 1924 publishing a book about Indus Valley civilization? Why? Do we care to find out what our roots are? The problem is we talk a lot, but we do very little. This is a fate. We will talk about preserving our language, starting with Sanskrit, which possibly is the biggest repository of knowledge, but we will not do the simple things step by step of, number one, digitizing it. Secondly, as I said earlier, creating an LLM model with that. Without that, how are we going to pass it on? Because the future is going to be a lot of AI-based learning, the whole thinking process. So we have a problem. You understand me, no? Yes, our languages are fantastic. They are such a repository of knowledge. Our thinking process is that. Somehow in the process of learning, unfortunately, my thinking process has switched to English language. But I'm as good in Malayalam as in the English language. Is there something wrong with that? I hold no. Because humanity is one here. We need to share knowledge, whatever emerges anywhere. We just need to know about that. So I don't really think this whole divide, though, even though I was a member of the NEP, I don't think about this whole divide about languages. Like one of my main objections when Article 370 was abolished in the Parliament was, I was a member of that Parliament when it happened. I said the whole talk about was preserving the culture and language of Kashmir. I said, sorry, is Tamil language and culture less important than your Kashmiri language and culture? Why Article 370 only for Kashmir? Why? Then you should have Article 370 for every state, for every language, yes or no? Nothing special. Yes, there is everything special about Kashmir and people. So there is everything special about Gujarati, about Rajasthani, about Tamil, about Telugu, every language. So this whole argument becomes fallacious. I think every language is beautiful. And the way we use it, and to me, emotionally, the only thing which matters to me in everything, in administration, in my speeches, as I said, the only thing matters to me is happiness. Am I able to bring happiness into the lives of people? That's the only thing which matters to me. As an IAS officer, then I was an MLA, then I was an MP, then I was a union minister, independent charge. To me, that's the only thing matters. I think everything else to me is irrelevant. Thank you very much, sir, for this insightful perspective for the languages, sir. कौशल सर, आपने बताया सर आप एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं, वहाँ पे आपने बहुत सारी सर लैंग्वेज में भी बात करते हैं. उसी से कंसर्न से सर लेकिन मैं आपसे सर पूछना चाह रहा हूँ सर, language preservation succeeds most meaningful at the community level, sir. How can local governance system empower people to become active custodians of regional languages? मैं इसका जवाब हिंदी में दूंगा. Sir. Pardon me if I have to switch to English.
अभी इस सेशन के शुरुआत में एक वार्ता हो रही थी, पाली प्राकृत संस्कृत। विद्वानों के बीच में ये मतभेद है कि क्या प्राकृत और पाली अलग अलग भाषाएं थी या प्राकृत के एक रूप को पाली कहा जाने लगा। लेकिन जिस बात पर मतभेद नहीं है वो मतभेद है कि अशोक ने, मौर्यन, द माइटिएस्ट ऑफ द मौर्यन रूलर हु वाज अशोक, ने रॉयल पैट्रोनेज दिया पाली को। ऑल बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स मौर्यन एम्पायर के उस दौर में पाली में लिखे गए। फिर 500 साल का एक गैप है, 6ठी शताब्दी में बुद्ध घोष की रचनाएं आती हैं पाली में। एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो राज्याश्रय दिया, रॉयल पैट्रोनेज मिला पाली को। पाली वो मौर्यन एम्पायर की का स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गया। वो रॉयल पैट्रोनेज खत्म हुआ, अगेन प्राकृत अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती गई। तो रॉयल पैट्रोनेज या राज्याश्रय या सरकारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाषाओं के, लोक भाषाओं के संरक्षण में। बार बार एक चर्चा आ रही है कि मैन्युस्क्रिप्ट का हमें ये ख्याल रखना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट India has been a land of mainly oral tradition. When till 1872 we had only 3.2% literacy rate, 1901 only 5%, 1951 less than 18%, and even now 74%, 2011. So there has to be explicit recognition that we remain a land of oral tradition. Manuscripts ka digitization will come only later. No. That addresses only a small part of the problem. Main part is it has to be recorded, the oral, there has to be a recording, and then digitization. What is it happening? Yeah, this is the task which India as a land of civilizational antiquity should do. This is what I am saying, How sir. much have you progressed in that? Yes, sir. We have not, but even the acknowledgement of the necessity is, I think, a right step. So there is one. Two things. So royal patronage, as it happened in the past, and government support as is required now, is essential. Two things I would like to add quickly. I will not take much time. One, Vasudhaiv Kutumbakam, वो जो संस्कृत का स्टैंजा है, उसका एक later part है, the fourth part. पूरा complete is generally not recognized, as sir was saying. Otherwise, we run the risk of falling in the trap of supremacist, something to be proud of, nothing. Anything which I get because of my birth, what is there to be proud of? I was born in a village of Magad. What is the proud? I had set of parents. क्या इसमें pride की बात है? My ethnicity, my physical appearance, मेरा रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग, इसमें proud की क्या बात है? ये तो प्रकृति प्रदत्त समाज द्वारा दी गई चीजें हैं। तो ये मुझे मूर्खता का पर्याय से ज़्यादा कभी कुछ नहीं लगा, irrespective of who is pontificating on this. वो पूरा स्टैंजा है, अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम। अयम निज, यह मेरा है, यह पराया है। अयम निज परोवेति, यह दूसरे का है। अयम निज, यह मेरा है। परोवेति, यह दूसरे का है। गणना लघुचेत साम, ऐसी गणना, गिनती करने वाले, लघु चेत साम, उनका चित्त लघु है, छोटे दिल के लोग हैं। इसके बरक्स, इसके विपरीत अब वो ऑपरेटिव पार्ट है। उदार चरिता नाम, जिसका चरित्र हृदय विशाल है, उसके लिए यह वसुधा कुटुंब है। लघु चित्त वालों के लिए वसुधा कुटुंब नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं। चूंकि यह पूरा डिस्कशन इट इज हैपनिंग अंडर द एजिस ऑफ Ganga Kumar ji and his team and his friends Sanjay, Anirudh, and all those who are not known to me, but the faces have become, they are doing their contribution is signal contribution, and I see this as part of Nalanda initiative. बात आती है spirit of Nalanda की। नालंदा का जो spirit था, मिलिंद पहियों के beginning में, the questions of King मिलिंद, नागसेन की जो रचना है, सेलिब्रेटेड पाली, उसका एक स्टेंजा मैं पढ़ना चाहता हूँ। नागसेन को जब
राजा मिलिंद ने अपने दरबार में बुलाया तो राजा के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर पाता था, साधु रहे, संत रहे, गृहस्थ रहे, उसको केन। तो जब नागसेन पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि हे राजन, यह वार्ता कैसी होगी? क्या विद्वान और विद्वान के बीच में जो वार्ता होती है उस तर्ज पर होगी, या फिर राजा और उसके मातहत के बीच में होगी? मिलिंद ने पूछा कि क्या मतलब, कैसी बात होती है विद्वानों और विद्वानों के बीच में? तो rather than substituting my extempore translation of that, please allow me to read those 4 lines, right? There's the English translation of the Pali. Nagsen says, the sage Nagsen, I will converse if you, sir, will converse in the speech of the learned. But if you converse in the speech of kings, I will not converse. राजन, अगर आप विद्वान की तरह बात करेंगे तब तो मैं बात करूंगा, लेकिन अगर राजा की तरह बात करेंगे तो मैं नहीं करूंगा. How revered Nagsen do the learned converse? King Milind asked this. Here comes the reply of Nagsen. When the learned are conversing, sir, a turning over is made. An unraveling is made, and a refutation is made, and a redress is made, and a specific point is made, and a specific point is made against it. And the learned are not angry in consequence. पक्ष, विपक्ष, फिर कुछ दूसरी बात, सबूत, और ये सब में कोई भी गुस्साता नहीं है, कोई भी क्रोधित नहीं होता है. It is thus, sir, that the learned converse. और विद्वानों के बीच में यही बात, ऐसी ही बात होती है. मिलिंद ने पूछा, and how do kings converse, revered sir? When kings converse, sir, Nagsen is saying, they approve of some matter and order a punishment for whosoever disagrees with that matter. वो अप्रूव करते हैं और उसकी अगर समर्थन में नहीं है तो उसके लिए पनिशमेंट घोषित, इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन हिम. इट इज दस, सर, दैट किंग्स कन्वर्स. उसके बाद राजा मिलिंद कहते हैं कि हम विद्वानों के बीच में बात की तरह बात होगी, राजा और प्रजा की तरह बात नहीं होगी. तो मुझे लगता है कि स्पिरिट ऑफ नालंदा है. हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम, जस्ट 30 सेकेंड्स और दीजिए. मुझे लगता है कि स्पिरिट ऑफ नालंदा, जो नालंदा महाविहार का स्पिरिट यही था कि विद्वानों के बीच में विमर्श होना चाहिए. तो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन में भी हम लोगों ने ये मुझे लगता है कि सबको ये समझ है कि लैंग्वेज प्रिजर्व होना चाहिए. कैसे किया जाए, कितनी जल्दी किया जाए, किस तौर तरीके से किया जाए, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो 1837 के पहले बुद्ध और अशोक अनजान हो गए थे हमारे लिए, वही स्थिति होगी. थैंक यू. धन्यवाद सर. सॉरी आई टुक मोर दैन अलॉटेड. सर मैं गंगा कुमार जी का आप ही के बात के ऊपर धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हम यहाँ विद्वानों की तरह ही बात कर रहे हैं सर सभी. तो सर मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह मैम इतिहास में हम अपने घरों में भी देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि महिलाएं अपने बच्चों के थ्रू उनको गाना सुना के, लोरी सुना के, उनको स्टोरी सुना के, रिचुअल्स के थ्रू हिस्ट्री ट्रांसमिट करती हैं. पॉलिसी में हम उस चीज़ को कहाँ तक ले जा पाए हैं, या हम भी अभी तक कितना डिस्कोर्स पब्लिक पॉलिसी में जा पाया है? आपने बहुत सही कहा. जिस तरह से आप कहते हैं ना ओरल नरेशन. आल्सो वन रिक्वेस्ट मैम, यू हैव ओनली 1 मिनट मैम. तो ये बहुत ज़रूरी है पॉलिसी में. और ये मुझे लगता है कि जिस तरह से ओरली हम लोग, जो महिलाएं, जब बच्चा स्कूल जाता है उससे पहले ही माँ और घर की दादी नानी कहानियों के थ्रू या लोरियों के थ्रू बच्चों को अपना कल्चर और अपने साहित्य के बारे में बताती हैं. उसको पॉलिसी में लाकर उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. अभी उस पर काम नहीं हो रहा है. हम लोग अपने डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट और इन सब को प्रिजर्व करने पे लगे हैं, बट ये भी बहुत ज़रूरी है. और इसको मुझे लगता है जल्दी ही होगा, क्योंकि आप तो उदाहरण लीजिए ना, आप अपनी, जैसे आप तीजन बाई, अगर आपने नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने इतना अच्छे से महाभारत का जो व्याख्यान करती थी, वो अपना प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश, देश और विदेश तक में पहुंची है. तो जो ओरल, जो लेडीज़
बताती हैं, जो कल्चर का ट्रांसमिशन होता है, वो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने के बाद या साथ साथ ही हम लोग करेंगे। और इसको थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक आप देख लीजिए बिहार में, अगर शारदा सिन्हा आप लोगों ने सुना होगा, उनके संगीत लोकगीत कितने प्रसिद्ध हैं, या राजस्थान की महिलाओं के, तो थोड़ा सरकार पॉलिसी में भी लाएगी तो उनको हम और प्रिजर्व कर पाएंगे। और ये जब तक नहीं हो रहा है तब तक महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को प्रिजर्व करने का काम कर रही हैं, लोक कला के थ्रू, लोरियों के थ्रू, या बच्चों को जो कहानी सुनाती हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मैं वारसी सर को इनवाइट करना चाहूँगा। सर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन सर। आज हमारे लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के जो फ्रेमवर्क्स हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें क्योंकि आप सर इसके प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया में सोसाइटी के, क्या गैप्स हैं सर, और उन गैप्स को किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं सर? हाँ, मैं यहाँ पे बहुत हद तक अल्फोंस सर से सहमत हूँ कि जब विल पावर होनी चाहिए, जब तक हम किसी चीज़ को, पॉलिसी तो बनती है, उसको हम ज़मीन पे कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और किस तरह से उसको हम आगे बढ़ा पाते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे कल्चरल प्रिजर्वेशन है, जब कोई लैंग्वेज डेड होती है तो इट इज़ नॉट ओनली, इट टेक्स इट स्टोरीज, ट्रेडिशन, हिस्ट्रीज एंड द वे वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओनली द डेथ ऑफ द लिंग्विस्टिक tradition, it is also the cultural, intellectual and deeply human losses are there. So हमारे पास जो preservations के लिए we have many things, we are technologically very advanced and we can take those technological support to preserve, to document, but this should be also part of the policy and the implementer, to what extent we are going to implementing in the field. And the community participation is also very important. Unless we have the community participation, we may not be able to give a good outcome from there. So it's both way, like it's not only one way traffic, it's both way, and through that participation, we will be able to, maybe slowly, but we will be able to in future, the technology that we are living in this age, like 10 years ago, what we were doing, we do not know what is going to happen in next future of after 10 years. So with that technological support, with the government ability and to implement the policies on the ground will certainly help to preserve. And the sir has said rightly about the oral traditions. That is, we are full of oral traditions, and that contains like medicinal values, folk traditions, regional richness like this. These are all in the oral traditions. We need to preserve, otherwise our future generation will not be knowing why we were so rich in the world linguistically and culturally. थैंक यू वेरी मच सर। नाउ हम लोग ऑलमोस्ट सेशन ख़त्म करने वाले हैं सर। कोई एक क्वेश्चन सर हम सर माफ़ी चाहूँगा, 2 मिनट और लूँगा सर आपके। एक क्वेश्चन हम जरूर लेना चाहेंगे सर आपकी। बेसिकली आई एम ए ट्रेंड बायोलॉजिस्ट विद 2 डॉक्टरेट, टॉप मोस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाषाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ और सीख रहा हूँ, और मैं सीखने के लिए आया हूँ। क्लैपिंग हो सभी की तरफ से इनके लिए। नहीं, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सीखनी है। जो आपने मेरा बेसिक पर्सन आपने लिखा है ना, भाषाएं, नॉलेज, प्रिजर्वेशन, इनको कोई कहीं उसमें फ्रिज में रखने से उससे नहीं होंगे। भाषाएँ प्रिजर्व की जाती हैं बोलने से, और बोलने वाले कितने हैं और सिखाने वाले कितने हैं। इस सरकार में एक ही फ़ायदा है कि ये संस्कृत के लिए, भाषाओं के लिए बड़ी फेवरेबल माहौल हमारे देश में है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा ग्राउंड पे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का 15 साल से विद्यार्थी हूँ, कोई पढ़ाने वाला, आप बता सकते हैं कि आज देश में 11 साल में 11 बच्चे नए हैं जो भाषा बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, तो प्रिजर्व कैसे करेंगे? पांडुलिपि की बात उस प्रोग्राम में मैं था, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बट दैट इज़ ए डेड नॉलेज। रिसर्च करने के लिए है, इकट्ठा हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत पैसा लगेगा उसमें, पूरी दुनिया को वो मिलेगा, लोग उसमें रिसर्च करेंगे और पेपर छापेंगे, नाम उनका होगा, ज्ञान हमारा होगा, अच्छी बात है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस तरफ? यहाँ हमारे देश में भाषाओं के मामले में बाढ़ जो है खेत को खा रही है। हिंदी भाषा हम बोलना चाहते हैं, हिंदी वाले इतने भारी भरकम शब्द बनाते हैं कि हम वो खुद नहीं बोल सकते, तो हम कैसे बोलेंगे? अंग्रेज क्या करते हैं, हमारे शब्दों को उठा के अपनी डिक्शनरी में डाल देते हैं, क्योंकि उनको भाषा को प्रमोट करना है, तो कैसे होगा? एक चीज़ से मैं हैरान हूँ हिंदी भाषा से, आप हैरान हो जाएंगे, जो एग्जिस्टेंस है जिसमें गौतम बुद्ध ने काम किया,
और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बात किया, और एक लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर प्रोजेक्ट चल रहा है अभी सबसे महंगा, वो काम कर रहे हैं। हिंदी भाषा में सिर्फ एक शब्द है परमाणु। क्या कोई यहाँ महानुभाव बता सकता है इसका क्या मतलब है? परमाणु का मतलब है परम अणु। ये वो श्रीमान जी, एलिमेंट आपने है, ये बहुत वो- अच्छा सर, बताया ना। बोलने आप देते हो नहीं तो- नहीं नहीं, आप बहुत कुछ बोला है। आप प्लीज, अभी नेक्स्ट सेशन है, मुझे पूरा कर लोग दीजिए, आया है, ये 30 लोग भी सेकंड जाना और है। हैं। अगर आप कोई बोल रहे हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ। अच्छा, ठीक। मैं आया हूँ खासकर इसके लिए, भाग जी। के कहीं से। सर अब ये परमाणु को है- आगे बढ़ाइए सर, परमाणु। हाँ, ये एटीट्यूड सीखने का नहीं है। अब वो एक शब्द ऐसा है पूरे संसार में, मैं जितनी भाषाएं जानता हूँ और सीख रहा हूँ, उसमें अल्टीमेट हिंदी भाषा में ये बता दिया गया परम अणु क्या है। वो वही है जिससे दुनिया हिग्स बोजोन गोड्स पार्टिकल की बात कर रहे हैं। भाषाओं की ये इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। हमने डायलॉग सिखाया, शास्त्रार्थ सिखाया। आजकल मन की बात चल रही है, आप बोलने नहीं देते किसी को, तो कैसे डायलॉग होगा? भाषा कैसे चलेगी? और भाषा दिमाग के उस हिस्से से प्रोसेस होती है जिससे इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। भाषा उसी से होती है, किसी भाषा में नहीं सोचते, ब्रेन अपने आप सोचता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसका मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो तो इस भाषा को हम प्रिजर्व करें, इसे कैसे करेंगे? बेसिक नॉलेज पे हमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए विश्वविद्यालय में कि हम हर साल कम से कम इतने स्टूडेंट को भाषाएं सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तब भाषा आगे बढ़ेगी, तब भाषा प्रिजर्व होगी। धन्यवाद आपका। सर बहुत बढ़िया आपने सर ये अपनी बात रखी सर। अभी मुझे पता है मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, तो सर मैं बस एक ही लाइन में अपनी बात को पूरी करूँगा। सर क्या हम सारे सेशन को ये कह सकते हैं कि हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथ है, वो कहीं पे बैरियर नहीं है। तो विद दीज वर्ड्स आई एम सिंसियरली थैंकफुल अवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट श्री अल्फोंस जी, कौशल किशोर जी, सुरेखा साहू जी एंड वासी जी। थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर द पार्ट ऑफ दिस मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, मीनिंगफुल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू ऑल। जय हिंद। और जिदुल जी को भी धन्यवाद बोलता है, मॉडरेटर बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। So, ओनली 10 सेकंड सर। आपने स्टार्टिंग में बताया था ये मैंने बुक लिखा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, सिविल सर्वेंट के साथ साथ पैशनेटली फोटोग्राफर भी हूँ। मैंने अंडमान में 4 साल नौकरी किया, वहाँ पे एक बुक लिखा था। अंडमान में मुझे कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिला कि कुछ मैं देख पाऊँ, तो तभी मैंने ये टूरिज्म के ऊपर ही लिखा था। वहाँ पे आगे भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे आप। okay, so time is upon us, so we are starting the next session. Okay, the next session is public engagement, academic exchange, and cultural dialogue. And with this session, we're going to have some of the elite civil service of this country, of Bharat. So can I call to the stage Dr. Vishwapati Trivedi? Acha, theek. So Dr. Vishwapati Trivedi, please come to the stage. Can Sri Tajender Singh Luthra please come to the stage? Can Sri Chaitanya K. Prasad please come to the stage? And the moderator, Sri Rajesh Ranjan, please come to the stage. So now we have one of the most eminent panels possibly in Bharat. All are very senior officers from the civil servants of this country. And the topic is a very serious topic. And let's not forget, ये देश आबादी में सबसे बड़ा है, सब कुछ में बड़ा है. तो ये जो public engagement
एकेडमिक तो सबसे ज़्यादा संस्था हिंदुस्तान में है, और संस्कृति का डायलॉग, हर एक क्षेत्र में अलग भाषा, अलग संस्कृति, और यहाँ इतना प्रकार का अलग दाम है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, और बहुत मशहूर लोग हैं वो बैठ गया। तो रंजन जी शुरू कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग थोड़ा अलग है ना, फेलिसिटेशन पहले करता है। चलिए थाली बनाइए। Official dinner hosted by the President and Prime Minister. Try to do this. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जो कि पब्लिक इंगेजमेंट, एकेडमिक एक्सचेंज एंड कल्चरल डायलॉग के ऊपर है, जिसको दिल्ली नालंदा डायलॉग ने इसलिए चुना है। मैं सर्वप्रथम इस मंच के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री गंगा प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और साथ में और भी इन्फॉर्म करना चाहता हूं, आज उनका बर्थडे भी है। सो विश यू हैप्पी बर्थडे गंगा, इज गुड फ्रेंड। So let me start. I'm Dr. Rajesh Ranjan, moderator for this session. I'm a 2001 batch Foreign Service Officer, currently serving as ICCR as DDG. As you all know that आज हम प्राचीन नालंदा के उस महान परंपरा को पुनर्जीवित करने आए हैं। उस नालंदा में जहाँ दूर दूर से आए विद्वान केवल ज्ञान ही अर्जित नहीं करते थे, बल्कि वाद संवाद के माध्यम से एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए एक ज्ञान का पुल बनाते थे। कल मैं सुन रहा था पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह जी को, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि नालंदा की जो आत्मा है, वाणी, विचार और व्यवहार, ये त्रिवेणी है। ये जो वाणी, विचार और व्यवहार की त्रिवेणी है, इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो एक ही धारा में प्रवाहित होती है। तो उसी विचारधारा को मैं आगे ले जाते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का सत्र इस नालंदा की इसी स्पिरिट को जीवंत करने का प्रयास है। दिस सेशन सेलिब्रेट्स दैट वेरी नालंदा स्पिरिट थ्रू three key pillars. That is the topic of the today's discussion: public engagement, academic exchange, and cultural dialogue. In today's fast-changing and sometimes divided world, these pillars helps build trust, foster collaboration, and strengthen cultural bonds. We are truly fortunate that we have three distinguished panelists, very senior civil servant, most of them are senior to me, very long senior actually, and they are also
very sensitive and powerful writers. So their unique journey beautifully reflects Vadi Vichar or Vyavhar ki Triveni actually. So let me welcome them. Welcome you, sir, all. Let me introduce a minute. I will not take much of time to introduce each of them. Very briefly, Dr. Vishwapati Trivedi, retired IAS officer, former Union Secretary for Shipping and Mines, and he's also economist from LSE and Simon Fraser University, author of several books on policy and cultural heritage. And Sri Tejinder Singh Luthra ji, senior IPS officer, and also a TEDx speaker, mentor, and masters in applied positivity psychology for UPenn. He's also a poet and author. Sri Chaitanya K. Prasad ji, he's a 1991 batch, also civil servant, currently head of the Government Communication Outreach, Ministry of Education, and also author of 2 books, Age of Influence and When Branding Met the Movies. So let's begin this conversation on the true spirit of Nalanda. I will start with the 2 questions, sir, to all of the panelists. Very simple one. Why do a conversation around the culture and civilization, wisdom often remain confined to the academic or elite circle? We have seen in the previous session there was some grievances on this. So I would like to pose this question, why this is only confined to the elite, and what we can do to make them part of everybody's public discourse actually. And the second question also, what kind of institutional ecosystem do we need to sustainably connect academia, governance, and literature, and the public imagination? We would like to love your thoughts, sir. Hear your thoughts also on this. Thank you. Let me start with Dr. Vishwapati Trivedi ji. Thank you. Today's topic is a bit difficult to speak on if you have to speak on all 3 together. But I think the relevance of all 3 segments of today's discussion have to be a coherent narrative in this, in our country, in the international perspective also. I tried thinking about most of these issues. Most of the time, I'll tell you, my training as an economist brings me back to thinking in terms of economics on this subject. I'll just make a couple of lines on this, and then I'll move on to a non-economist interpretation of what I would ideally want to happen in these 3 sectors, or in these segments of the subject today, the theme today. I heard the earlier panelists talking about what is the government to do. The government is to do this, government has to do that, government has to digitize, government has to take the narrative, government has to take it from Chhattisgarh, from Tijanbai to several. In economics we say, well, in economics we say that if the government fails, then what happens? I mean, there's always a question. There is a government, there's a thing called market failure, and then there's a thing called government failure. Well, when the government fails, then we need somebody to take the subject forward. Somebody to take up all these issues which we keep discussing. Now that brings up to the moderator's question that in today's world, how do we do with both government behind as the spine of the entire narrative, but the offshoots of this have to be market-oriented. And this is exactly what is happening. The most famous singers are invited, they have to be paid, and then they are engaged, and then some of them do well, some of them don't do too well, and some engage with the highest of the artists in the area, and then they make a movie, and then they make a killing, and so on and so forth. But what happens to the other lower engagement
type of people. I think that's where the public engagement part comes in. The public engagement part is very important. But today, as I see, I mean, this is not the public engagement of 20 years back. ICCR itself used to engage very actively, had centers all over the world. But today ICCR is not the only person who's doing it. There are so many other verticals who are doing all this. There's a National Museum Authority, there's a National Archives, there's and so many IGNCA, INTAC, and many narratives, all on the public engagement of the soft part of, I'll come to this soft part a little later when I come to the last part of it. There is too much noise in the system. And public engagement is a narrative which is primarily, as I say, the spine is driven by the government, or the central government, or the provincial governments, state governments, state administrations in their own manner. We are lucky that our entire country has linguistic provinces. So each province has somewhat, besides the national responsibility, to develop its own cultural ethos and cultural history and cultural archives and digitize them, besides the central government, which remains the biggest player in this area. But public engagement through things like this, and we draw this from Nalanda because Nalanda was supposed to be the biggest public engagement university, as we have heard historically. And there was a way of communicating through the university. I'm sure even they would have drowned in this current 142 crore people. How to engage with all of them? We don't have to engage with all of them. We have to engage with those who are inclined this way. We have, I think we have to ration our, in the public engagement, we have to ration our efforts and concentrate on sectors which can move forward. On the academic exchange, the question aapne jo pehla wala question tha ki why is it that only academia engages with in these things? It is not strictly true. It is, you said elite. Yes, I think the definition of elite, what we say, जिसने BA कर लिया वो elite हो गया, which is not true actually. Elite भी एक define करना पड़ेगा, but I think I know what you mean by the elite, which drives these cultural issues, and it has to seep down below. An earlier question in the earlier one was कि भाई संस्कृत का क्या हुआ? संस्कृत तो इतना pressure है, इतना सरकार कर रही, फिर भी क्या हो रहा है उसके लिए? There are things happening. I mean, I can tell you, it's not that it's not happening. People are studying Sanskrit. People are driven by Sanskrit. There are those who traditionally have the family to do it, and there are people who, there are people who are into Sanskrit because of their family traditions. There are people who are into Sanskrit because they think it's an interesting language. There are people who are into Sanskrit because they think they can, from an employment point of view, from an economics point of view, they are all happy to do Sanskrit. But then there are people who do Sanskrit, as they say, by the force of economics, because they can do nothing, तो वो बटुक बन जाते हैं, उनके घर वाले बटुक की तरह भेजते हैं, आश्रम में उनकी ट्रेनिंग होती है, संस्कृत की ट्रेनिंग होती है. It is, I think what probably was behind the question was कि how to spread this more beyond the layer that it is existing in. I think there is, the question is very obvious. There are, as I said right away, either the market does it. I mean, you make the market for Sanskrit teachers well, make the market for Sanskrit good enough, or you have to
be a Smithsonian of India, which does things without asking for markets. I mean, they are endowed by various large corporations, but then they do their work and they spread the knowledge in the manner that they can to all levels of society. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you. Now we'll request Tejinder Singh Luthra ji. Sorry. Thank you. Thank you very much. Thank you to my dear friend Ganga, and a very blessed birthday to him. Today is his birthday. Thank you for inviting us on this dais today, and thank you for your question. So I will start from culture. So what is culture? Culture is very simple. We have complicated it, but I think understanding culture is very simple. Culture is about your food, your language, your clothes, your traditions, and it is defined by, or rather it is actively acted upon or participated by the masses. Masses decide when they participate in various traditions, when they speak different languages, and they decide these are the clothes that we would be wearing, they decide what our culture is. Elite does not decide what the culture is. Elite only discusses what the culture is, and in that sense, elite does a service to the culture, but also does a disservice to the culture also. First, I'll discuss what is the service that elite does. Elite does a service to the culture by discussing it, by understanding it, what it is, and also does a service by giving it academic language and an academic framework. Because elite has the strength to do it. Elite has a dais, elite has the sophisticated language, elite understands the academic framework, so he does all this. So it's a great service to the culture. We should be thankful to our elite for understanding, discussing our culture and giving it a framework, giving it a language. But in the process, elite also does a disservice to our culture. And that disservice is that it chooses. It is very selective. That this part of the culture is real culture, and the other part of the culture which I don't like or I don't understand, it is not culture. Whereas masses, they are not selective because they are the active participants of the culture. They speak languages, whatever suits them or whatever is comfortable to them. At the masses level, you don't speak a language to impress someone. You speak a language which is comfortable to you, which you can understand or can make others understand, and you pick up a language which can give you some kind of employment. So, masses act or participate in the culture on some other basis, whereas elite chooses the culture on some other basis. So now, how can we make the two meet? How can we make sure कि ये जो दो कॉन्टिनेम के अलग अलग सिरे हैं, कि एक सिरे पर तो मासेस हैं जो कल्चर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके डिफाइन कर रही हैं कि हमारा कल्चर है क्या, हमारी भाषाएं क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारा फूड क्या है, हमारा खाना क्या है, हमारा पीना क्या है, हमारे पकवान क्या हैं, हमारे कपड़े क्या हैं और हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे त्योहार क्या हैं जो हम मनाते हैं. तो एक तरफ तो मासेस हैं जो ये डिसाइड करते हैं बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़ दैट आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर, और कॉन्टिनेम का जो दूसरा सिरा है उसके ऊपर एलीट बैठा है जो ये डिसाइड करता है कि मुझे इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगती है
बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उसको मैं पिक करूँगा, चूज़ करूँगा और कहूँगा यही कल्चर है, दूसरी चीज़ें कल्चर नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं अपने एक सीनियर के यहाँ कॉलन करने गया, वो बिहार के थे, तो उनके घर गया तो उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो बहुत छोटी थी, 3 साल की, और एक पंजाबी का बड़ा मशहूर गाना उन दिनों चल रहा था, लंबर गिन्नी चलाए जांदे हो, तो उसके ऊपर वो बच्ची जो है अपना मस्त होकर घर में डांस कर रही थी, छोटी सी बच्ची थी। और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से बताया, देखो देखो ये हमारी ग्रैंड डॉटर है, ये पंजाबी गाने के ऊपर इसको ये गाना आता है पूरा। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, पंजाबी मेरी भाषा, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन आपने सर इसको वर्नैकुलर सिखाई? थोड़ा झिझकते झिझकते मैंने कहा, कहते वर्नैकुलर, व्हाट डू यू मीन बाय वर्नैकुलर? मैंने कहा सर आपकी वर्नैकुलर या मैथिली होगी या अवधी होगी या भोजपुरी होगी, आप उस साइड के रहने वाले हो। तो झिझकते झिझकते मैंने कहा, सीनियर थे मेरे, तो उनके चेहरे पे ऐसे भाव आए जैसे मैं कोई अनपढ़ों जैसी बात कर रहा हूँ। उनको लगा ये मुझे क्या बोल रहा है कि ये अनपढ़ों वाली बात कर रहा है कि मैं कहाँ इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर और मेरे बच्चे जाने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आए हैं और उसकी बच्ची है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, और ये उसको मैं मैथिली, अवधी या भोजपुरी या ब्रजभाषा सिखाऊंगा। तो हम जो एलीट हैं हम सेलेक्टिव हैं कि हमारा कल्चर क्या होगा। हमारा कल्चर क्या होगा, वो स्टैंडर्डाइज्ड हिंदी होगी, मानक हिंदी जिसको हम आज बोलते हैं। वैसे अगर हम हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला उपन्यास लिखा गया, चंद्रकांता संतति, सुमन जी चंद्रकांता संतति को ही मानते हैं हम पहला उपन्यास? हाँ, चलिए चंद्रकांता संतति को मान लेते हैं, देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। उसकी अगर आप भाषा देखें तो आपको हैरानी होगी कि उसमें जिन शब्दों को हम उर्दू के शब्द कहते हैं वो इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं, एक सेंटेंस में 4-4 शब्द हैं, इकरारनामा जैसे शब्द हैं। तो हमने धीरे धीरे अपनी हिंदी को स्टैंडर्डाइज किया, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, भाषा तो बदलती रहती है। और लेकिन भाषा के बदलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाषा नरिश हो रही है कि नहीं हो रही है। भाषा का बदलना और भाषा का नरिश होना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने अपनी भाषा को परिष्कृत तो किया, स्टैंडर्डाइज तो किया, नरिश नहीं किया। उसी कारण हमारी भाषा जो है वो धीरे धीरे मुश्किल होती चली गई और इसीलिए वो उसका जो संपर्क है वो मासेस से धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और हमको दिक्कतें आ रही हैं। सीधा सा कारण है, अब जैसे देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पिछले 8-10 साल से ये शब्द चल रहा है, हम इसका एक अच्छा हिंदी में शब्द नहीं दे पाए। अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ करेंगे, एआई ही यूज़ करेंगे और हमको विली नीली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अब हमारी भाषा में भी यही शब्द चलेगा। तो कल्चर को जो डिसाइड करता है वो मासेस करते हैं, लोग एलीट जो है वो उसको सिर्फ सेलेक्ट करता है और उसमें थोड़ी सी सर्विस करता है, बहुत सारी डिससर्विस भी करता है। Now, how can we remove this dichotomy? How can we get clear of this paradox? The only answer is public engagement. जब तक हम अपने कल्चर को डिफाइन करने में पब्लिक एंगेजमेंट को नहीं लेकर आएंगे, ऐसे मंच तैयार नहीं करेंगे जिसमें पब्लिक की एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, एक्टिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और साधारण लोग, आम लोग हमको आकर बताएं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे कौन से खाने हैं, हमारे कौन से पकवान हैं, हमारी कौन सी रस्में हैं, रिवाज हैं, कौन से त्यौहार हैं, कौन सी भाषा है जो हम बोलते हैं। अब आप देखिए ना, जेनजी जो भाषा बोल रही है उसको क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? जेनजी के पास कुछ ऐसी वोकैबुलरी है जो मैं नहीं समझता हूं। अब अगर मुझको समझना है, अगर मुझको जुड़ना है उनके साथ, तो मुझे वो उन शब्दों को समझना ही पड़ेगा, उसको फिर जो मैं लिखता हूं उसमें भी जगह देनी पड़ेगी और एक बड़े लेवल पर हमको अपनी सारी भाषाओं में भी उन शब्दों को, उस वोकैबुलरी को, उन वर्ड्स को जगह देनी पड़ेगी।
और अगर हम नहीं देंगे तो फिर हम उनसे कटे रहेंगे, वो हमसे कटे रहेंगे। खैर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मोटी बात ये है कि हमको इफ़ वी नीड टू डिफाइन आवर कल्चर at the ground level and in the real sense, we have to do it through public engagement. Thank you. Thank you, sir. Big round of applause. Yeah. Thank you, sir. आपने बहुत सही कहा सर, जो आपने कहा elite और masses के बीच का जो difference है उसको कैसे हम भर सकते हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे टीचर ने बताया था मुझे कि अगर तुम्हें ना किसी ड्राइवर से लड़ाई करनी है तो मातृभाषा में ही गाली देना, ठीक है ना। और अगर किसी ऑफिसर से कुछ बोलना है ना तो इंग्लिश में ही बोलना, या गाली भी देना हो तो उसी में। तो ये संवाद की भाषा है सर, कैसे समझाई जा सकती है वो अलग विषय है। तो वहाँ पे भाषाओं में कोई वो मैं अंतर नहीं मानता, ना तो मैं कल्चर को मानता हूँ, बट ये जरूर है कि ये अंतर कम होना चाहिए इलीट और मासेस के बीच का। थैंक यू सर। विद दीज फ्यू वर्ड्स नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री चैतन्य के प्रसाद जी फॉर हिज कमेंट्स। थैंक यू। Thank you. Good morning. Thank you very much. First of all, happy birthday, Ganga. I mean, it's a very important day for you as well as organizing this dialogue. And thank you very much for having me over. My two previous speakers have been very eminent officers wherever they've been. I happen to be a communication person all my career. So the question of conversation around culture and civilizational wisdom, my personal view on this is that, you see, today we are in an age of instant communication. We are on a 24/7 information overload, right? So when this is happening, I think our ecosystem has adapted and adopted itself the different streams that are available as far as ideas, content, knowledge, etc. is concerned. And this goes across everyone who's a participant as far as our ecosystem is concerned. Why I say this is that as far as culture is concerned, you would agree that in the good old days, say 5 years, 10 years ago, I mean, I am coming to a dialogue first time in my career. So for me, it's like a debut. Like what you have in cricket, you have debuts. So for me, it's a debut today, and thank you very much, Ganga, for that. But we used to read about those eminent lit fests which were happening across the country, right? If you recall, if I would recall, Jaipur Litfest used to be very prominent. It used to be the connoisseur for all eyes and ears, who all participated, what was the kind of discussion. Then there was this Delhi Litfest. Now, what has happened after that? And Sanjeev sir, you would be in a better position to explain that for us, is that today there is a kind of topping of cultural or literary fests all over the country, where they talk about ideas, they talk about content, they talk about themes, which are state-specific, which are region-specific, which cover the idea of India, if I may be allowed to say so. So that is one area where perhaps the glass ceiling or the barriers to communication which were not existent earlier, have broken down. So people are fully aware. So as far as talking about it being confined to academic or these elite circles, I think today people are very, very aware because of the phone in their hand and the access to ChatGPT or talking about Google. Any question, go to Google. In our good old days, we used to hunt in a library if we had to look for an answer, but today it's instant. So that is one part of the story. When we were in college or when we were in university, you may recall we had the Spick Mackey series. And it was quite an enthusiastic lot which would go and watch those Baitaks and listen to it. So say somewhere around the mid-80s or the early 90s, classical music had become a flavor for institutions across the country, whether it was IITs or central universities or normal colleges. So the Baitaks, so the flavor for classical music came in, and then there were other forms of music that came over. I would just draw your attention today to this phenomenal person, Rishabh Sharma. He's revived the sitar. And his sitar, I mean, the way he plays it is a combination of the current trend of what the Gen Z, as sir was mentioning, and the old style. And he just did a concert in India. He went across different cities, even he was there in Delhi.
and it was impossible to get a ticket. So no sifarish for a pass would also work. We also tried, we didn't get it. So we saw whatever was available on YouTube. What I'm trying to say is that with these barriers having broken down, and it is very difficult to talk about an elite perception. That would be my view. And as far as public discourse is concerned, today we are talking of Nalanda, and thanks to Ganga and efforts made in the past, Nalanda, the brand Nalanda has suddenly woken up. Not that the legacy was not there, but suddenly everyone is talking about Nalanda, which is a perfect jugalbandi between the past and the present. How does it connect the past with the thinking as far as the current generation, the current ideation is concerned? Now, the important thing is that if you look at soft power, I've been associated with cinema, so I would definitely dive deep into looking at cinema. Look at the way cinema has woven and weaved together cultures. Unfortunately, due to the pandemic, that was a positive offshoot, was thanks to the pandemic, when we were all confined to our homes, look at the splurge as far as OTT is concerned. We developed a liking and understanding from movies across different regions. So that was a kind of a blitzkrieg, right? There was no question of barriers as far as language was concerned. The earlier session talked about barriers to language. Because now we have the translation which is there in every OTT platform or any movie that we watch. So that is a kind of an integration that has taken place very effectively. As far as connecting academia, governance, literature, and public imagination, I think today public imagination is not at all filtered. You can't stop people from dreaming. What is the reason why? When we, people from tier 2, tier 3 cities, if I may recall today, and sir would be in a better position to say so, look at the kind of achievements or the kind of glorious moments that we all see for ourselves when the examination results come out. Boys and girls who qualify for, if I may say so, just as a reference point, the civil services, coming from different backgrounds, etc., coming from different areas, coming from different cross-sections of society. I mean, that is the kind of imagination that they have. You walk into any institution, you find that everyone is together. There is a common thread which goes through. I think that is one big achievement as far as we as a society is concerned. So my final take would be that it is impossible to have a tightrope ecosystem because information is available everywhere and people have access to information. The phone is everybody's weapon today, in the sense, irrespective of what you earn, everyone has a phone. Irrespective of your economic status, a phone is always there. And a classic reference point would be our house helps. And finally, I would say, today we are in Nalanda. When we were growing up, etc., the Bihari Litti used to be something which had not crisscrossed the country, right? That is something which is now a very exquisite dish available everywhere. And this is something that we all would like to reflect over as to how this crisscross of ideas, cuisine, culture, cinema is taking place. So personally, one last line, ladies and gentlemen, I think the interconnect that is happening between different levels of society is unbelievable. And one last word, everyone over here, we are talking about Nalanda. Look at the Chhath festival. It's a national phenomenon today, which was limited to the backwaters of regions and areas in Bihar. Today, it's a national festival. People are introduced to the power of Chhath, the kind of nitty-gritties, the intricacies that go with that festival. So for me, culture is something which is exploding now. Right or wrong, I would not be able to say. Thank you very much. Thank you, sir.
Thank you. Yes, you rightly said that culture is going everywhere without any boundaries. I have seen in several incidents, not only Chhat, I see Onam also around the world. Means we take each state, you will see there is a representation outside, because I have witnessed those things. And also you have mentioned Rishabh Sharma and OTT platform. Yes, these are the things are happening in front of our eyes. Because we have paucity of time, I will not pose a few more questions. I will be happy to take the question from the audience first, and then I will. So any question from the audience side? Though I have a few questions to the, yes. Please, I will request to introduce yourself first and be brief in your question. And if you have a particular question with the panelists, please take their names. Thank you. मैं ऑर्गेनाइजर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा एक सुझाव है, अगली बार इसमें एक सर ने एक वर्ड बोला था, भाषा सुनने में कैसे लगती है, एक एक्रोस्टिक भाषा है ये, इसमें एक टॉपिक आप आगे से ऐड करें और जो फिजिक्स के लोग हैं उनको इसमें बुलाइए, क्योंकि जब हम श्लोक बोलते हैं, श्लोक का कोई मतलब नहीं है, लिख दिया और आपने बोल दिया किस किस तरह से, लेकिन जो हमारे गुरु होते थे वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे बोलो। वो लैंग्वेज का जो उसकी साउंड है वो एनर्जी है। एक इस तरह का टॉपिक आप जब आगे करेंगे तो उसमें अगर इस तरह का ऐड करते हैं तो वो भाषा में बहुत ज़्यादा उसकी उसका बढ़ा देगा। ये मेरा सुझाव है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका सुझाव मैं नालंदा लिट फेस्टिवल को बोलता हूँ, आयोजकों को इनका नोट कर लें। और कोई क्वेश्चन? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन पोज योर क्वेश्चन। थैंक यू। Hello, good afternoon. I am Anushka Jaiswal and I am pursuing Sanskrit plus philosophy from Delhi University. And my question is, in an age dominated by digital media and AI, how can authentic cultural exchange be preserved? Thank you. I would like to have one more question if you have, otherwise I will little bit elaborate. I have the similar question almost. Yeah, please go ahead. थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी, रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि हमारा अभी का टॉपिक है पब्लिक इंगेजमेंट। तो अभी हमारे पास में एक पब्लिक इंगेजमेंट के लिए एक मंच है जिसके अंदर पब्लिक आ रही है, स्पीकर से मिल रही है, मतलब इंगेजमेंट हो रहा है। पर सर ये हो भी कहाँ रहा है, एक प्रोमिनेंट सिटी के अंदर हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कि जो इलाइट लोग हैं उनका जो इंगेजमेंट है वो जो धरातल पर लोग बैठे उनके साथ में कैसे किया जा सकता है। व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? क्योंकि यहाँ पर अगर लिसनर्स है तो भी वो यहीं से एक इलाइट सिटीज़ है, तो एक धरातल के लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, वो भी इंगेजमेंट, पब्लिक इंगेजमेंट इन रियल बेसिस। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. I think one first question was pertinent to you, Chaitanyaji. Since you are from the media, let me elaborate on that. In this age of social media, polarization and short attention span and instant opinion also on the social media, can the meaningful public dialogue still survive? Like today we are having, what practical approach you will have, sir? And the second question, sir, I will pose both of you, sir. Like I'm talking about the half of our population, about the women. When we are in the family, I think mother's roles are more important. But where these half of our population you see right now, there are a lot of people are coming up, but still we are behind in terms of our women. Participation in academia, discussion and other engagements. But though there is a strong tradition in the family, when they are the family, I think whole generation they are building up. So this question. Any other question if you want to have a similar idea or something? Otherwise, this is the last question I will not take because we have to follow the time also. I'm very strict on that also. We have 10 minutes more. So, sir, floor is open. Chetan Prasad. Sir, please. Dr. Yeah. Thank you. The moderators
Mic always works. Very complicated question, but and also going by what Tejinder said, he brought a lot of clarity between the dichotomy between the elite and the non-elite and the transmission mechanism between that. A young fellow just said that it could be why in a big town, maybe in a smaller town, maybe those people who are so-called non-elites, they should. But I have a philosophy here. You see, I may consider myself an elite, but I can also consider myself as a catalyst, because I have studied from Faizabad, Muradabad, Amritsar, and Kendriya Vidyalayas all over the world, all over the country, and then come up to be categorized as an elite, right? So my age and my generation, which includes our colleagues here, are really a catalyst. So what have I done? I'll show you. You see, there is a set. What we were thinking is the elite and then the download. Why just the download? There can be an upload also. There is this non-elite and then they upload. So in that direction, I have made some public service. I wrote a book. My mother wrote 48 books in Hindi. They were all beautiful written Hindi books. And she wrote from 1970 for 30, 40 years. But she could not, she was not a great TV artist. So if she spoke, she was so soft. If she spoke, I couldn't hear her out. So she just did what she had to do. She wrote the book. Many of these books, there used to be a magazine called Saptahik Hindustan. So the reviews used to come, we would cut the reviews, read the reviews. She would get postcards from her, people who admired her. And I used to see in my earlier days that all this is going on. But when I came to a position where I think I asked people whether those books are ever read, Shivani's books are read, Neil Ganga is read, no, people don't read those things. Wheeler has no shops in the railway stations where we used to buy a book for 4 rupees and read it. Kanpur to Delhi, you would read in the... but those things are not there. So who does all this connectivity? So I had translated one of my mother's books that was titled Chir Kalyani. Chir Kalyani is a book written about a little known subject, known very well to some, maybe not to all, is about Dashrath Ji's eldest daughter. She was called Shanta. And she was Ramchand Ji's elder sister. The book has been written so beautifully in Hindi. I read it twice, thrice, then I thought I'll translate it. So I thought I'll upload it to the elite. Let the elite also know that there are books written like this. And I can tell you, translation is a very, very difficult task. It took me 1 year to get the ethos, the language, and the quotes there, and the description in a manner. And today I can tell you with great pride that this book is being nominated for the International Translational Works Awards. Whether it gets it or doesn't get it, another matter. But it gives me a great feeling that at least people are reading it. So this is the kind of thing that has to be done. People of our age have to be catalysts somewhere. ये क्या है नालंदा डायलॉग? किसी ने IIC बनाया होगा, किसी ने नालंदा डायलॉग सोचा होगा. अब उसको we are talking to people of all levels, students भी आ रहे हैं, public भी आ रही है, publicity भी हो रही. जैसे आपने कहा, Nalanda has become a buzzword for this upload download mechanism, and I hope it continues. I mean, we just have to all work for it. ये अपने आप तो कुछ होने नहीं वाला है, तो आपको काम करना पड़ेगा. अब क्या है, Pali is considered a very scoring language in UPSC exam. People just read and study Pali only कि वो एक इम्तिहान देना है, civil service exam, उसके लिए Pali पढ़ो. वैसे नहीं पढ़ेंगे Pali, ऐसे पढ़ेंगे तो. So everything is getting transactional, everything is becoming monetized, everything is becoming something which can be rewarded. And that's the world. The current world is such.
there is economics behind everything, but culture has to be sponsored, communicated, spread by all of us. Thank you. मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं और आपकी इजाज़त हो। सर ने बहुत अच्छे से आपके सवाल का जवाब दिया, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। यू आर वरिड दैट big cities like this, tier 1 cities, have big platforms, big public engagements, but what about the tier 2, tier 3 cities, and not just tier 3 cities, what about our small towns and villages? वहाँ पे ऐसे platforms नहीं हैं, ऐसी public engagement नहीं है, तो वहाँ पे हम अपने culture के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो public engagement कैसे लेकर आएं? यही आपके मन में दुविधा थी? देखिए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हमारे जो गांव हैं, हमारे जो कस्बे हैं, उसमें ठीक है, उसमें IIC तो नहीं हो सकता है, उसमें नालंदा जैसा डायलॉग इतना बड़ा लिट फेस्ट भी नहीं होगा, बट वहाँ पे एक बड़ी प्रॉमिसिंग चीज़ है, और वो चीज़ है हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और हमारे टीचर्स। मैं भी बहुत छोटे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, 1 रुपया 25 पैसे फीस होती थी 1 महीने की। तो वहाँ के जो टीचर्स थे, उस स्कूल का जो माहौल था वो बहुत प्रॉमिसिंग था, बहुत विश्वसनीय था, बहुत क्रेडिबल था, और वहाँ से हमने, ठीक है वहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल्स तो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हमने अपने टीचर्स के थ्रू सीखा, गुरुजी के थ्रू सीखा, वो बहुत प्रॉमिसिंग था और उसी को लेकर हम आगे बढ़ पाए हैं। तो इसलिए आप चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर हमारे कस्बों में, हमारे गाँव में अभी वो ताकत, वो शक्ति, वो कुव्वत बची हुई है। थैंक यू। आपने पूछा सोशल मीडिया के बारे में कि उसको कैसे कंट्रोल करें। देखिए, ये हाउ शुड आई पुट इट, इट्स अ डिजीज़। आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं अपने लाइफ में, दैट इज़ अप टू यू। एक ऑब्सेशन है कि सुबह उठते के साथ पहली चीज़, ब्रश करने के पहले इंस्टाग्राम देखें या एक्स पर जाएं, और इट इज़ अ नेचुरल थिंग कि हम एक तरफ से आकर्षण हमारा होता है कि क्या हो रहा है। आप, वाई आई एम सेइंग दिस टू यू इज़ दैट जब हम लोग ट्रैवल करते थे बचपन में, कॉलेज में ट्रेन से जाते थे या अब प्लेन से जाते हैं, यू जस्ट सी द काइंड ऑफ इकोसिस्टम दैट वी ऑपरेट इन। लोग चेक इन किए, बैठ गए, अगल बगल कोई एक दूसरे के बारे में बात नहीं करता है। नोबडी इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू ईच अदर। एवरीवन टेक्स आउट अ phone and starts looking at it. Back and forth, scrolling up and down. So this is the phenomenon which personally one has to be very careful of. Now as far as public discourse is concerned, ये जो हमारा information explosion है, जिस तरह से एक तरह से perception बनता है कोई भी गलत चीज़ का, क्योंकि वो तो viral effect है, उसमें आपको खुद ही अपने आप को कंट्रोल करके रहना पड़ेगा, right? That's one. आपने पूछा था AI and संस्कृत. I happen to look after news in Doordarshan. One of the most popular programs of Doordarshan, जिसके लिए हमारे पास कितने बार रिक्वेस्ट आए कि ड्यूरेशन आप बढ़ाइए, उसका नाम है वार्तावली। आई एम श्योर आप देखती होंगी उसको। वार्तावली की फ़ैन फॉलोइंग इज़ अनबिलीवेबल। और कहने का मतलब ये है कि जो लोग उसको देखते हैं, उस न्यूज़ बुलेटिन को, या जो जिस तरह से हम लोगों ने पैकेज किया था, वो हर बार हर एक एपिसोड से वो आगे बढ़ता है, माने उसकी व्यूअरशिप बढ़ती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ विल है वहाँ वे होंगे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, राइट। हमको अगर सीखने की प्रवृत्ति है मुझ में, इफ़ आई वांट टू लर्न समथिंग आई विल डेफिनेटली डू इट। सर वुड अग्री दैट व्हेन दोनों सर ने मेंशन किया कि वी हैव स्टडीड इन tier 2, tier 3 cities and we have studied in different kind of schools and colleges जहाँ access to information नहीं था। आप लोगों के पास आज बहुत सारा information available है। The only word of caution I would like to give you is that you should not be carried away. उस भ्रम में नहीं रहें, क्योंकि आपको निचोड़ करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं। You have to be perfect in that. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। इसी में मैं कुछ छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं हमारे पास, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं है।
दो मेरे साथ घटनाएं हुई थी जो मैंने खुद बचपन में देखा है कि हमारी मानसिकता से भी जुड़ी हुई हैं कि कभी भी हम ट्रेन में सफ़र करते थे, जब उस समय तो धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान भी चलती थी और इंग्लिश के भी नावल थे, हिंदी के भी, लेकिन जब भी मैं ट्रेन में सफ़र करता था तो जो हिंदी का नावल पढ़ रहा होता तो उसको पब्लिक थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखती थी, जो इंग्लिश वाला पढ़ रहा होता उसको लोग विद्वान समझते। सर वही मेरा था एलीट का जो परसेप्शन है, आपने शुरू में कहा। It's always good to end a session with a little bit of humor. तो मैं थोड़ा सा एक बताऊं कि मैं जब पढ़ के निकला केंद्रीय विद्यालय से तो नंबर इतने आ गए कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज की इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जहाँ 101% आना पड़ता है एडमिट करने के लिए, एडमिट कर दिए गए साहब। अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में तरह तरह के लोग आते थे, कोई देखिए साहब वो कैम्ब्रिज का टॉपर है तो वहाँ का टॉपर है, ऐसे ये विलक्षणीय लोग थे। हमारे साथी येचुरी सीतारमन हमारे साथ के थे, हमारे साथ ही थे, सब बगल में बैठते थे हमारे। वहाँ पे एक हमारे द्विवेदी जी थे, हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट था बट पासिंग, उसका नंबर जोड़ते नहीं थे कि पास करना पड़ेगा हिंदी, तो वो हिंदी पढ़ाते थे द्विवेदी जी। ऐसा उन्होंने एक हिंदी डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट रखा। अब उसमें कोई सेंट स्टीफेंस कॉलेज की अलग ही रुझान है, वहाँ पे हिंदी जैसा आपने कहा थोड़ा सा ऐसे वैसे देखा जाता है। तो द्विवेदी जी हमसे बोले कि भाई आप तो आ ही जाइए सुबह, आपको तो एक कोई तो पार्टिसिपेट करे हिंदी उसमें पोइट्री कॉन्टेस्ट में। तो हमको उन्होंने बस कह दिया और अगले दिन पहुँच गए। जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई अब बोलो, तो मुझे कोई हिंदी पोइट्री तो याद नहीं थी, जयशंकर प्रसाद की हो किसी की, इतना तो था नहीं। तो हमने साहब हनुमान चालीसा पढ़ दी वहाँ पे। This is what I call uploading, and I got the number second prize of the 3 people. 3 लोग बोले। थैंक यू सर, थैंक यू। बस केवल हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है, भाषाओं में कोई आपस में कंपटीशन नहीं दिखता है मुझे। थैंक यू। एज वी कंक्लूड द सेशन, आई सिंसियरली थैंक द डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी जी, Sri Tejinder Singh Luthra ji and Sri Chaitanya K. Prasad for their open and experienceful insights, sir. This doesn't come oftenly. So, and engaging reflections. Today's conversation truly brought alive the Nalanda spirit, where Vadi, Vichar, or Vyavhar ki Trivedi enriched the public engagement, academic exchange, and cultural dialogue. Let us carry this spirit forward. Thank you once again, and thank you, the organizer. Thank you. With this session is closed. Thank you. Jai Hind. So now we're commencing the next session, and this is going to be another amazing session. It's called The Language of Wisdom, Decoding Nalanda through Gyan Bharatam. Now, the amazing thing in this session is we actually have the Vice Chancellor of the Nalanda Mahavir University with us, and he's going to be, so please can we invite him up? His name is Professor Siddharth Singh. And also, to his credit, he's written many books, and I'll just mention a few of them. History of Buddhism till the 13th century, Biography of a Buddha, Zen Buddha, Remembering the Legend. Now, to accompany him, we have Professor Himanshu Prabhat Ray. So please come to the stage. Maaf kijiye, aapka naam galti se bola, aaiye na. And she is also a prolific writer of books. Just to mention a few of them, an amazing Archaeology and Buddhism in South Asia, The Return of the Buddha, Ancient Symbols for a New Nation. So aap upaiye, pataiye. Next, we have Professor Anand Singh, also a great writer of books, Buddhist Ecology, Prachin Bharat Mein Kumbh Parva, and Nalanda, the Glorious Past. And of course, they've written many more other books.
And then we're joined by the moderator, Dr. Shashank Shekhar Singha, who's also a great writer of books and has written Restless Waters, A Social History of Ancient Northern India, Delhi Heritage of the Edge, and many other type publications. So now I would like to call Srimati and Sriman Ganga Kumar ऊपर आइए ना facilitation करने के लिए ऊपर आइए ना आइए आइए और उसके बाद फिर moderator अपना काम शुरू करेंगे धन्यवाद एक चीज़ आपसे बता दूं मैं पहली बार बोला स्टेज पे दिस इज गोइंग टू द वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑन नालंदा Okay, good afternoon. I know we are waiting, we are standing between the very good sessions and the lunch. You had very stimulating sessions, so one naturally feels hungry. But we'll try our level best to have the session within the time, wrap-up session within time. I think what we are doing is we are trying to have a slightly different format for the discussion today. And what we are doing is within the Delhi Nalanda Dialogue 2026, we are going to have a mini dialogue between three elements which inform the theme of today's sessions. So the theme is, basically the three key elements would be languages of wisdom, Nalanda, the idea of Nalanda, and Gyan Bharatam. So we'll have a mini dialogue between these three key elements, and there'll be three experts. So there'll be three experts who will be talking about, taking a creative, take on these three elements and their larger possibilities and larger meanings through their own areas of expertise. So with very different vantage points, we'll be doing that, I think let me open the session with one of the key elements, which is the Gyan Bharatam idea. I was recently, just a few days ago, 4 or 5 days ago, I was reading in the newspapers
about this chit of paper, a scrap, a very brittle scrap of paper which has been found in MP archives, Madhya Pradesh archives. And this paper has a signature of Tatya Tope. And this paper was discovered during the Gyan Bharatam mission, you know. So it has a document which is, carries a signature of Tatya Tope. It is in Bundeli, the language is Bundeli. They have deciphered it. And eventually they found out that this paper is being addressed to the Subedars, the sepoys, the soldiers of the princely states of central India. So this is one part of it. The second part of it is the deciphering part of it. How do you make sense of it? How do you make it intelligent? How do you interpret it? And when it was subjected to interpretation, what they found out that he is trying to instruct those people to come into the revolt. Now, how does it inform our understanding of that subject, which is 1857 in this case? It changes or it modifies or perhaps it informs our discussion of the debate on 1857 in the following way. That there has been a debate on 1857 saying that, you know, was it a spontaneous or was it a planned uprising? And this letter, you know, brings to fore an idea that there was an element of planning, there was an element of strategizing. Right? In a way, it also, and it was done under the auspices of the Gyan Bharatams. In a way, it sums up the idea of the Gyan Bharatam, which is basically to collect, curate, conserve, and digitize the archives. That's part one. The second part is about interpretation, which they put it under the section called linguistics and translation. And the third part is about, you know, publishing and outreach, you know, basically, the second part. And that brings me to the second part, which is the languages of wisdom that you talk about. Now, wisdom, there is a difference between wisdom and knowledge. Wisdom is to make sense of the stuff that you have found. It's not knowledge, it's to make sense of the stuff that you have found, critically appraise the stuff that you have found, and that is where your ideas of interpretation, your ideas of how do you look at the text come into picture, right? And here in this case, what we also see is when we talk about, so there are several things become important. So it is not just, you know, collect, conserve, or digitize. How do you interpret it? So there are different differentials that come into picture, which is like region, time frame, which region it has come from, what is the time frame it has come from, what is the subject, how does it do, how does it fit into the scheme of things, what languages and scripts does it use. Speaking of which, in the Buddhist tradition, we all been talking about the Pali language, you know, and then from Pali it moves on to, you know, with the coming of Mahayana, we see into basically the coming of Sanskrit. Professor Ray has also worked on the Gandhar Prakrit tradition, which is in the northwest, and then we see the coming of Chinese and Tibetan languages, you know, basically into which make a repository, big repository. So that's what, you know, comes under this, the fourth pillar of Gyan Bharatam, which is basically about linguistics and this thing. And finally, about the idea of Nalanda. Now, there are things that we know which are commonly known about Nalanda. That it was a center of Buddhist learning, that is pretty well known. That it had students from all over large parts of Asia, you know, basically, right? You know, Southeast Asia, East Asia, Tibet, China, then, you know, some parts of Central Asia. But what is not so commonly known are a few things that I'm going to talk about, right? The first part that I'm going to talk about in this is while it is known as the Center for Learning, and His Holiness the Dalai Lama talks about Nalanda tradition as being the most authentic, most logical, and most scientific tradition of learning. But what is also within that layer, there are several other layers of meaning, right? So it is, an interesting part is Nalanda's tradition also talks about the coming together of sciences and humanities and social sciences. You know, Professor Anand Singh has written, in his book about Nalanda, which is being displayed about, you know, how there are various disciplines and subjects being taught, which include both sciences and social sciences and humanities. In addition, how we have talked about, you know, the idea of debates and discussions, but in addition, there was one other thing, that Nalanda was a big center for production of manuscripts and copying of manuscripts.
and has, to its credit, several illustrated, or, colophons, and basically, or the illustrated manuscripts, or the painted manuscripts tradition, right? Then the whole idea about, we have already talked about the larger geoculture connections in the form of students coming from different parts of Asia. But what the recent archaeological, the aerial surveys and wide-scale archaeological surveys have shown is that Nalanda had the Mahavihara that we see today, the ruined site, had a larger connection with the surroundings, right? And a big connections with the surroundings. So we are now shifting the discussion from the Mahavihara to the region. You may call it the Greater Nalanda, you can call it the Magadha region, and also the region where both Buddha and Mahavira walked and lived, basically. So we are talking about the larger regional dimensions, basically where, Professor Siddhar Singh will also talk about the Magadha region and the pluralistic tradition that we have, come to this one, basically. And then we also talk about Nalanda in terms of, one part that gets completely unnoticed or under noticed is that it is not just about learning, but it's also about very high accomplishments in art and cultural traditions, basically. I'm aware that Professor Himanshu Prabhare has been talking about very significant contributions to the bronze, culture, basically, which informed the metal art of Nalanda, informed several countries in Asia and Southeast Asia. And finally, it is not just a center where the student comes. It is a center which has been involved in dissemination of knowledge, right? So the knowledge from Nalanda goes on to Tibet, to Nepal, to Sri Lanka, to East Asia, and to Southeast Asia. So it is working both ways, especially when the university is said to be in a disintegration phase. Now, metaphorically, what Nalanda means is basically it talks about a very superior, learning and knowledge ecosystem. It talks about a tradition of excellence. It talks about a glorious past, right? So all these three elements, open up to several layers. And with that in mind, I'll first invite the first, but before inviting the first speaker, the format that we are following is that, all the three experts will get to speak for a certain time, say 10 to 12 minutes, and then we'll have questions between the panelists towards the end. So that is the system that we'll be following. And that's with that, I invite Professor Siddhar Singh for his take on, the first take on basically how, and I hope, he's planning to bring elements about pluralistic and sacred landscape, and also about this idea of, Pali, Sanskrit, Buddhist literature, and also Sanskrit literature. So over to you, Professor Singh. Hello. Thanks, Shashankji, for setting the tone of the entire discourse in a wonderful way. I'm thankful to Gangaji and Sanjayji and Anilji and the entire team of Nalanda Literature Festival for having me on board. Well, we see, when we talk of Nalanda, so Nalanda as a place during the time of the Buddha, then Nalanda as a university during 5th century onwards, and Nalanda as a tradition which was accepted in the world of knowledge, as Shashankji rightly said about the wisdom, and wisdom is pronounced as pragya in Indian literature, Sanskrit literature and Pali literature. And when pragya is defined in a way that yatha bhutam prajanati iti pragya. To know the things as these actually are is pragya. So, by that wisdom, if you evaluate Nalanda, so Nalanda as a place in the earliest Pali literature of Tripitaka, it comes as a neighboring place of Rajgriha, which is now known as Rajgir. And Rajgriha was the capital of Magad Empire. And Nalanda
mostly is mentioned in the Pali literature in a way that ekam samayam bhagava nalandayam viharati pavarik ambamani. There was pavarik mango grove, and Buddha was staying in that. But generally, Nalanda was not that. It was a prosperous town. It was a nigam. But it was not a center of knowledge, but actually Buddha used to stay from Rajgriha, on the way from Rajgriha to Patali Gram or Pataliputra. Because why we understand that Nalanda was not that prominent from the knowledge perspective, although Buddha has delivered many suttas at that place, like very prominent Kevatta Sutta and Upali Sutta has been delivered by the Buddha at Nalanda. But generally, it is his entire journey, as Kaushal Kumarji mentioned that in the first session, that Buddha had almost 17 rainy seasons in Rajgriha. And Magad had the complete ecosystem of the dialogue of the different religious and philosophical views, and Buddhism was one of those. Mahavir Swami also passed 14 rainy seasons in Rajgriha. At the later stage, it was the place of Guru Nanak Dev, but when you talk of the time of the Buddha, so not only Buddha and Mahavir Swami, all the other 5 contemporaries of these 2 masters, Makhali Gosal, very prominent master who had a large following, who produced Ajivaka, who was the founder of Ajivaka tradition, and nudist tradition. And you can imagine that at that time, the nudist tradition was existing in the 6th century before the Common Era, and nobody was persecuted. They always had a dialogue on something. Then Purana Kashyap was there, another heretic, another master, religious master who had a large following, and then Ajit Keshkambali, who is mentioned by a gay in Asadhya Veena. Then different Prakut Katyayan was there. So 5 different religious views were there, and even Sanjay Belatthiputta, who the disciple of Sanjay Belatthiputta, Sariputta, and Moggallán became the most prominent disciple of the Buddha at the later stage. So it was a complete ecosystem of Magad in which the dialogue used to happen between the different traditions, and Buddhism was one of those. But as I mentioned that when we talk of Nalanda, so we should always take Rajgriha also into account, because it was the similar ecosystem. At the later stage, and the Pali was the tradition. Simultaneously, if we talk of the language, so Pali was the tradition. Almost 400-500 years after this tradition, you see the emergence of the hybrid Sanskrit tradition. When Buddhism is being created, in the kind of literature which is being written in the hybrid Sanskrit, it is neither classical pure Sanskrit nor complete Pali, but it has a lot of phonology and morphology of Prakrit languages, but at the same time, it follows the pattern of Sanskrit language. And the initial literature of Mahayana was started with the hybrid Sanskrit literature. Mahavastu Avadan was written, Lalit Vistar was written, and actually these 2 literatures gave the first biography of the Lord Buddha. So hybrid Sanskrit, and then at later stage, because every religion, every philosophy, when it has to become structured, and when it is properly structured in the society, then it aims to address the elites of the world, elites of that society. And perhaps Buddhism realized that the classical Sanskrit should be adopted to produce its treatises, and then this area of the Nagarjuna's 2nd century Common Era onwards started. Then Mool Madhyamik Karika came into existence, Vigyapti Matrata, Siddhi of Asang, and mind-only school was started. The philosophy which was pluralistic, which was
empiricist in a way, which believed in plural existence rather than dualistic or monist existence. That came into the form of the mind only. And then you see the journey of the journey. By the time Nalanda University was established, Buddhism had traveled a journey of almost 1,000 years. So the entire incorporation of these ideas was culminated into the form of Nalanda University, into the curriculum, when we see that Sankhya philosophy is also being taught, Chikitsa Vidya is being taught, Adhyatma Vidya and Shilpa Vidya and so on. So it was a complete mixture of the secular sciences as well as the spiritual sciences. And then this Nalanda University was ready to take off with all the entire heritage of 1,000 years, and then it could give it could proliferate the knowledge of the entire history of Buddhism to the world. So with these things, I think I would give the epigraphical and archaeological explanation of Nalanda I have left over to Anandji and Madam Professor Himanshu Prabhare to further this discussion, and after that we will continue. Thanks a lot. Thank you, Professor Singh. I'll just a little bit of introduction, because I realized that, Professor Siddharth Singh's introduction was read out. So just a little bit of introduction. Professor Himanshu Prabhare is a Tagore National Fellow at JNU, Jawaharlal Nehru University. She was earlier a professor at the Center for Historical Studies, JNU. What not many people know, that she has been the founder chairperson of the National Monuments Authority of India, basically. And, all three panelists, I'm very privileged to be in the company of all three panelists, have written many number of books. I'm not getting into that, but just a bit. Over to you, Professor Ray. Thank you, Shashank. And thank you for the organizers for inviting me. It's been a learning curve in the morning. I was trained in archaeology, and I taught history and wrote my dissertation in my thesis in history. So I have a very different take. And as we learned in the first session, it was an academic debate in the Milind Payo, as we talked about, where you discuss different perspectives and may or may not come to a consensus. So let me start. I'm going to talk about two things, which is the theme of our session. The theme of the session is the language of wisdom. I would humbly request that this be changed to languages of wisdom. And wisdom here, when we are talking about Nalanda, we are talking about Buddhism. I don't have time to come to that. I have a whole book on the colonial intervention and why it is important that we understand what happened in the 19th and 20th century. It was not just James Prinsep deciphering, but a whole new way of understanding our past was written. I won't go into that, I don't have the time. But let me just start by the languages of Buddhism. When the first history of Buddhism was written in 1844, this was written by, in France, Eugene Burnouf, who was the chair in the Collège de France. He wrote that the language of Buddhism was Sanskrit. Why did he write that? He wrote that because the manuscripts that he got were manuscripts that were collected by Hodgson, who was the British resident in Nepal, and those manuscripts were all in Sanskrit and were sent to Eugene Burnouf to write his history. Then a subsequent change happened when Pali became the main language in which Buddhism was supposed to have, or the Buddha Vachana was supposed to have been written down. And of course, we know that Rhys Davids, who was again an administrator, he set up in 1881, he set up the Pali Text Society, which did a great deed for the preservation of Pali manuscripts and for the propagation of Pali, and also for this, the trend that emerged, that Buddhism, that Pali is the language of Buddhism. I'm sorry, but that's only part of the story. By the 1990s, there's a whole new set of manuscripts that were discovered. These were discovered in the British Museum. They were stored in a clay pot. As you know, the Buddhists kept their manuscripts in clay pots.
And these manuscripts dated from the 1st century BCE, so prior to what we have in Pali literature. The language of these manuscripts is Gandhari Prakrit. The script is Kharoshthi, it's not Brahmi. It's the Kharoshthi script, but what is very interesting is that the Gandhari Prakrit manuscripts, they define a completely different sacred landscape of Buddhism. And that landscape sort of extends from northwest, what is today, northwest Pakistan and Afghanistan. The problem in India is that we don't look at anything outside India. And so none of this actually comes into the discussion. Now, the next point is that if we are actually looking at the creation of a sacred landscape in Buddhism, and what role did manuscripts or inscriptions play in this, I would point you to the Ashokan inscriptions, particularly the Ashokan pillar inscriptions. His inscriptions are everywhere. The Ashokan pillar inscriptions are all over North India. They are written in North India, they're written in Prakrit, but we know that Ashok used many languages, including Greek, Aramaic. He did not use Tamil, even though his inscriptions are found in Karnataka. Second point is that when we look at this sacred landscape of the pillar inscriptions, which define these places related to the birth and narrative of the Buddha, an important pillar inscription is at Sanchi in central India, in Bhopal, which then we don't know how or why or it was put there, but certainly the point is that this sacred landscape extended beyond Magadh, beyond Bihar, beyond UP, and well into central India, largely the Ganga plains. The next point is that I have talked about the fact that the Gandhari Prakrit manuscripts, they define the sacred landscape much more in northwest India. By the 1st century, Buddhism had gone into China. And there were translations which were undertaken. There were many manuscripts, many Buddhist texts which were translated. And there are a large number of manuscripts that were discovered in Dunhuang, in the Dunhuang caves, dated from the 4th to the 11th century. Now, again, these manuscripts define a very different sacred landscape of Buddhism, which largely then extends across China. I would also like to bring in another language, which is often not discussed, and this relates to my own work at Nagapattinam. Shashank just mentioned that I work on Buddhist bronzes, and Nagapattinam, on the Tamil coast, not very far from Puducherry or Pondicherry, is a site which has yielded a large number of Buddhist bronzes, the latest being dated the 16th century. So it's a time period that we often don't discuss as Buddhism having lived in or having survived in India. But Buddhism did survive, and the languages that were prominent for the spread of Buddhism in South India was Tamil. So there are texts in Tamil which were shared with the Sinhalese or the Sinhala written texts in Sri Lanka. So the point I'm making is that what we have is a shifting terrain and a fluid sacred geography that extends all the way from North India to the foothills of the Himalayas. Remember, the Buddha was born in Lumbini in Nepal. And his bones or his passing away, the relics have been found in Piprava, where there's a whole debate. We had the exhibition, an excellent exhibition, and Kapilavastu was identified. Shashank, do I have time? Or can I?
Okay, so finally, I would like to bring in a second point, which is the second point of Jnana Bharatam and the Decoding Nalanda. So what is the connection between these manuscripts and the archaeology of Nalanda? So let me say that I've talked about the Chinese manuscripts, but the Chinese pilgrims were an important group of people who visited India, and the most prominent being Xuanzang in the 7th century. And Xuanzang's memorial is in the Nalanda Mahavihara, which is another story, which is 1956, Nehru, the India-China Bhai story of 1950s. But let me go back to Xuanzang. After having visited India, he wrote his travelogue. Those manuscripts were translated in the 19th century from Chinese into French, and then from French to English. So after they were translated into English, they became a prominent source for the study of people like Alexander Cunningham, who was prominent in the search for the Buddha's, for the sites associated with the Buddha's life. And Alexander Cunningham then used these manuscripts to find Nalanda. He visited Nalanda in the 19th century and many times. And it is really he who identified the archaeological remains of Nalanda in the 19th century. So I think we need to look at different perspectives, the manuscripts, the languages of the manuscripts, the fact that these manuscripts, how they were deciphered, and how they then impacted the study of Nalanda. And certainly what we see today as Nalanda Mahavihar is all that ASI could buy at that time. It was not something which was given. So as Shashank said, it's a much larger space. But finally, I would like to end that the what gained ground or what provided popularity to Nalanda, the university, was the book by H.D. Sankalia. Sankalia was set up the Deccan College in Pune. He wrote his thesis based on Buddhist manuscripts, and he's the one who then popularized or promoted the notion of Nalanda, the university. But there's a lot of archaeological work still to be done. And what we have today in terms of the writings on the archaeology of Nalanda is really not even 0.01%. There is so much there which has not been written about and which needs to be brought into the public domain. So with those words, I'll end, and thank you very much. Thank you, Professor Ray. And one of the very significant points to pick up on is, how Professor Singh also emphasized, as in there are two Professor Singh, so I must say the full name. Professor Siddharth Singh also emphasized the idea of a pluralist tradition. A pluralist, it's not just about Buddha and Mahavira, but 5 other heterodox sects which are flourishing in that region. The enormity of the thought, basically, the vastness of the thought is very striking, and how Professor Ray is adding to that how this, there is a shifting terrain, there is a fluid, sacred landscape, basically, and how there is a difference in languages as well, how we approach this, basically, and how that adds to the variety of it. And with that, I come to the third speaker, Professor Anand Singh. I shouldn't say Professor Singh. Professor Anand Singh is a professor of history at Babasaheb Bhimrao Ambedkar University. He's earlier been professor at Central University of South Bihar and Nalanda International University. And he's going to talk about the manuscript cultures related to Nalanda, Buddhism, and beyond. So over to you, Professor Singh. First of all, thank you, Shri Gangaji, for just inviting here, and happy birthday again. First, just beginning with the idea that what Professor Ray says, that what we are learning and what we have learned about Nalanda is only a very meager thing, and it needs more to be done.
definitely it's almost a very scanty evidence. And when we started working on that, it was said that how you can just thinking to write about a monograph. But it took 7 years, and I have done, you can say that it is substantial. And then I thought that it may be the material known to me, it will take 30 to 40 years to finally summarize that what Nalanda has. Regarding what our moderator is saying, that just on the manuscript culture. So first, when we talk about that manuscript, and especially talk about the manuscripts of the Nalanda, we have to just think that what is manuscript and what type of the manuscripts we are talking about. So first, when we talk about the manuscript, especially Nalanda manuscripts, so first category that I found is that the religious manuscript. And this religious manuscript has a two variety, you see. One is that is for the academic purpose, basically that is on, you can say, the treatises written on Nagarjuna, Madhyamika and different philosophy, and that is used for the Vada tradition. And the second that is started from 7th century Common Era later on, that manuscripts used for worship, like one of the most important thing is that Pragyaparamita Sutra. Second is most important, that is less discussed, is that is non-religious manuscripts. Basically the manuscripts that deals with common man features and also the monastic features. That is the most important thing, is that medical treatises, that inventions that is going on, that is the kind of metallurgy science that is going on. So we are not talking about, and it has a very plethora of, you can say, that such kind of manuscripts are scattered across the world. Third is basically again the religious purpose. It's a short manuscript, a formula of Patitya and all, just putting in the stupa and all. So we have a different kind of manuscripts, and they show the different kind of knowledge tradition when we talk about the Nalanda. Second important thing is that why we need such a vibrant manuscript culture in the Nalanda. So there's a very common perception that after the 4th, 5th century, the students' number is ever increasing, and we have a much talk about since yesterday that 10,000 and all students. But one is sure that the students' number are increasing, and students in Nalanda, we have a clear epigraphic records, though from the latter age. We have at least 3 Pal inscription that directly mentions that everything right from food to pencil to ink and paper is provided to a student by the Mahavihara. So simply means you have a large gathering of the students, and you need a regular kind of, you can say, academic instruction. So it needs some kind of academic collection, and for that, for the university, you need a large group of manuscripts. So the very first task is that you have to just, and these manuscripts are definitely very perishable material, so it keep on perishing, and so it's a continuous process that you always just need a new manuscripts and just disposing of the other. And that's why what Madam was talking about the Gandhari culture, why we discovered this culture, because in that area, that was one very specific process. The manuscripts were almost on the perishable condition. They never abandoned it. What Salman says that they put it on the pot, and a kind of burial was done to them. And because of that, it survived. So in India, basically, it was put under the earth and it was perished. So this kind of medicine, second manuscript culture is there. Third, when exchanges started from the different part, these exchanges generally we talk about that foreign exchanges. No, there is 2 types of exchanges. One exchanges is that within the academic institutions of the India. So we need that a kind of exchanges, and in it we found it, we have a definite evidence, like when you talk about the Nalanda, the dominant mode of manufacturing of manuscripts is what we say that
palm culture or palm manuscript. But when you talk about that Kashmiri culture, we have a Braj culture, that is Bhojpatra culture, and both kind of manuscripts found from both the institutions, like Bawar scripts, that is very important, discovered in the Kashmir tradition, that belong to Nalanda tradition, that is Pothi tradition, that is book-like tradition. So you see that internal exchanges are there. And the second is that the foreigners that are coming, they just copy it and they carry forward our manuscripts finally. These, when you talk about the foreign, that is very important mechanism. That if you talk about that the language is a carrier of culture, then the question is that you have to learn. The Indian monk who is going to different country, they have to learn their own language to translate their own knowledge there. If the foreigner is coming, then they have to learn our culture. Very, very, you can say that formidable institution was created. When you talk about in the 6th century, it is mentioned that in Bhog, there is a place in Java, a huge Sanskrit college was developed for the Chinese, especially Canton, the people who are coming from the Canton region. They will stay for 6 to 7 months, learn Sanskrit, basic Sanskrit, element Sanskrit. Then they will come into Tamralipti. They will again refresh their language, and then finally they will went to Nalanda or Vallabhi or other institutions. Similar kind of things are found when Indian monks are going. They have two institutions. One is in Sri Lanka, other is again in Indonesia. They just learn their own culture, and because of that, you just found it that almost 6-7 languages are parallelly moving when you talk about that Buddhist manuscripts. It is Tibetan, it is Chinese, it is Tocharian, it is Uyghur, that is under Turkey, it is Sanskrit. So almost in the latter fate, it is Mongolian. And when we talk about, let's leave that it is only religious or this kind of medicine. When you talk about that generic manuscripts that deals with like folklore and all, like Jatak Mala, Jatak stories, it is a very different story. It is also covering the European, it is the Syriac, it is the Portuguese, and we have the latest manuscripts of the Jatak Mala and Jatak, that is in English, belong to 1556. So you see that language, the very important question Michael Hahn is raising, that why we talk about that hybrid. So hybrid is, it's not a compulsion, it was intentional. When people are moving, especially the Sarvastivadin monks, from Mathura to Kashmir, their languages got transformed from Prakrit or Pali to Sanskrit. So they put the core element of the teaching in Pali and Sanskrit, and they added rest of the content into the Sanskrit. That is the reason for development of the hybrid Sanskrit. So you see that what kind of invention basically they are carrying forward. And the other, and other very important point that we are talking about, that we are just mixing about that Nalanda and Nalanda tradition. We should just avoid that the Nalanda and Nalanda tradition. Nalanda is definitely, there is own tradition, there is own culture, academic culture. But when we talk about that Nalanda tradition is the knowledge developed out of Nalanda and learned and imparted by other traditions like Vikramshila, like Jagdalla, like Mainamati and all. So almost all exclusive knowledge Nalanda has, and when we talk about that Nalanda tradition, it covers all Mahavihara that is lying in the middle and lower Ganga valley. So we have in the clear mind that how you just describe, differentiate the knowledge. Definitely, the source of knowledge is in Nalanda, but Vikramshila developed more in the sense of, you can say, ritualistic knowledge. So, and Nalanda is more specifying that on, you can say, that scholastic tradition. One last point I want to discuss, that generally Nalanda is talking about that Mahayana institution, Sanskrit is the carrier of culture. Definitely, dominantly it is. But Nalanda clearly
till its decline maintained both tradition of Buddhist culture, that is monastic as well as scholastic. Nalanda never left that monk would not be trained. We have a very rich culture it is found, and that monastic knowledge was in the traditional, what you call in the Pali tradition. Xuanzang himself mentions that he went to Tilhara and where more than 13 Tripitikacharyas. Tripitikacharyas simply, they were the experts in the Pali tradition of the literature. He went there, stayed more than 3 years and learned the traditional languages. So you have to just look into that how you just say that both tradition, one language is dominating, other is just supporting. And this kind of knowledge you will found in 9th, 10th century when China became developed as a hub of that. In China, 9th century, there is a many acharyas who sent back their disciples to Nalanda. They also just instructed them, you also have to go to Sri Lanka, and then you also have to go to Vallabhi along with Nalanda. Then the question was that why one disciple that is sitting in the China also just instructing that you have to go to Sri Lanka and also to Vallabhi, both are the Theravada centers, not the Mahayana centers. So they want to learn also with the Mahayana culture that what is the traditional culture, what is the early Buddhism, teaching of the early Buddhism that India is still have. So this is the very important thing. And the last point, I'm just concluding in the 30-second, this manuscript culture is not only in the northwest region for only. The Myanmar and Sri Lanka have a same kind of inspiration as you find in the Kashmir and the northwest. Though the language is and the content is totally changed. When you talk about that Myanmar, the same rich manuscript culture is found, but it was totally Theravada, not the Mahayana. So, and one of the very late 16th century manuscript is found in Nalanda and deposited in Professor Siddharth Sir's university. So you can see it is written with the gold. So, and I have published it one cover page in that. So finally you can say that manuscript culture is not limited to only one school and all. It is almost widespread. It is a great Indian knowledge tradition that was accepted by all, at least whole part of the India, Southeast Asia, East Asia and Southeast Asia. Thank you. Thank you, Professor Singh. Thank you very much. I'll go back to where we began, basically. We started this discussion saying that, within the larger Delhi Nalanda dialogue, we are going to have a mini dialogue about 3 elements that inform the title or the idea of the panel, which is the idea of Nalanda, the manuscript culture, and the languages of wisdom, right? We already, learned from the first 2 speakers that, how the Nalanda is a more complex one, a more plural landscape, basically. And also now, Professor Anand Singh, rather than using Professor Singh, because as I said, there are 2 Professor Singhs, so Professor Anand Singh added this idea that how, even, what we talk about in terms of the intellectual legacies, in terms of treatises that we have, the manuscripts, the nature of manuscripts that we have, it's much more, could perhaps present Nalanda in a different light too, basically. And the second part is that, so one is that this idea of Nalanda is a much wider connotation. The second, all 3 speakers talked about is basically this whole idea about a much rich and diverse nature of manuscripts, many of which we haven't even made sense of, basically. Many of we haven't been adequately discussed or brought to light, basically. And the third part of it is the whole idea of this Gyan Bharatam, how do we connect it to? Now, for those who are, just by way of a ready reference, this is a mission that the Government of India launched in 2025, this Gyan Bharatam. It has 5 elements, So the first is about surveys and collection. The second is about conservation. The third is about digitization. I'm talking about very broad elements.
The fourth is about, basically linguistics and translation. And the fifth is about outreach and publishing. Right? Now, what we're going to do now in the time that we have left, and I think we have around, we have 5 minutes, basically we have, and I'm going to throw a question to all the panelists, which is about is there a way in which we can broaden the scope of the Jnana Bharatam through the discussion that we had? Also in terms of, is it possible to have, knowledge bridges, rather than inventing the wheel all over again? If there are manuscripts in different, all of them perhaps in some way or other pointed out, there are manuscripts in possession of several institutions, not just within the country, and because of the very nature of languages of this, the scripts, basically, and the different languages in which Buddhism was then, they're in different countries too. So 2 questions. One is that, how do we broaden the scope of this, Jnana Bharatam using Nalanda and the manuscript culture as a reference point? And 2, is there a way in which we could we can build knowledge bridges, rather than, reinventing the wheel? We'll start with you, Professor Singh. So 1 minute each. Thanks, Shashank ji. I would like to make my remarks in Hindi on this special aspect, because this aspect has a very close connection with the common people of India. ज्ञान भारतम मिशन के बारे में, अभियान के बारे में जो भारत सरकार ने अभी शुरू किया है 2025 में, उसके बारे में शशांक जी ने पहले ही बता दिया है कि लगभग उसके 5 आयाम हैं, जिसमें एक है सर्वे और कैटलॉगिंग। उसके बाद दूसरा, यदि आपको कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है और वो मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ मठों में, मंदिरों में, इंस्टीट्यूशंस में ही नहीं, घरों में मिल सकती है। और पांडुलिपि की परिभाषा, जैसी आप जानते हैं कि भारत की जनरल परिभाषा है कि 75 वर्ष पहले का हो, हैंड रिटन हो, भोजपत्र, ताड़पत्र, कॉपर प्लेट्स, पेपर कैप या कपड़े वगैरह पे लिखा हुआ हो, और उसका एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हो। तो उसके फिर कंजर्वेशन दूसरा एस्पेक्ट है, फिर तीसरा उसका डिजिटाइजेशन है, फिर ट्रांसलेशन है, और फिर 5वां जो है वो उस पर रिसर्च बेस्ड है। ये अभियान शुरू हुआ है जिससे कि भारत भूमि के अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपियाँ किसी भी भाषा में हो, किसी भी लिपि में हो, वो मिल सके। AI उसमें आगे बहुत मदद कर सकता है कि उसका लिप्यांतरण करना, उसकी लिपि चेंज करना, अपनी समझने लायक और उसका अनुवाद, अब चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले ये चुनौती है कि वो मिले। भारत में दुर्भाग्य से पाली की कोई पांडुलिपि नहीं मिली। 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद श्रीलंका, और उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड, इस तरीके से आज जो त्रिपिटक हम पढ़ते हैं बुद्ध के नाम पे, बुद्ध वचन के नाम पे, वो उन देशों की मैन्युस्क्रिप्ट्स की देन है। क्योंकि और भारत की सारी पांडुलिपियाँ पाली वगैरह की ब्रिटिश म्यूजियम या अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के बाद बहुत बड़ा कलेक्शन है, थाई में पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके पास है। ऐसे ही संस्कृत का भी हमारे यहाँ अच्छा हाल नहीं रहा है। यदि गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिली होती 1931 में, तो शायद हमारे पास उसका भी कोई बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं होता। ऐसे में भारत के अंदर जो पांडुलिपियाँ हैं, उनका संरक्षण, उनका डिजिटाइजेशन, उनका अनुवाद, उन पे रिसर्च होना, ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, जिसमें कि पूरे भारत के सभी लोगों को, चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्थाएं हों, उन्हें आगे बढ़ के भाग लेना चाहिए अपने आसपास। क्योंकि मैं एक ऐसी संस्था का प्रतिनिधित्व करता हूँ, ऐसी संस्था का कुलपति हूँ, जिसको बिहार का क्लस्टर, एकमात्र क्लस्टर सेंटर बनाया गया है, नौ नालंदा महाविहार को। क्लस्टर सेंटर और इंडिपेंडेंट सेंटर 2 कॉन्सेप्ट हैं। क्लस्टर सेंटर का मतलब कि पूरे राज्य की आपकी जिम्मेदारी है, जो उस राज्य में कहीं भी। इंडिपेंडेंट सेंटर वो है, जैसे मैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है, बहुत प्रसिद्ध पर्शियन के लिए, अरबिक के लिए, उसका भी मैं अभी डायरेक्टर हूँ। तो वो इंडिपेंडेंट सेंटर है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने सेंटर में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइजेशन वगैरह करें। तो भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास, अपने गली मोहल्ले, अपने घरों में, गाँव में देखे कि उसकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
क्योंकि बहुत सारी पांडुलिपियां इस देश में इग्नोरेंस, इस अज्ञान के चलते नष्ट हो गई कि उन्हें लगा कि ये तो कूड़ा है, अब क्या करेंगे, बाप दादे छोड़ गए, अब इसको कहीं फेंक दो, इसीलिए बहुत ब्रिटल हालत में मिलती हैं। भारत की यात्रा, जब भारत की पांडुलिपियों की और ज्ञान की यात्रा होती है तो समस्या ये है कि केवल ज्योग्राफिकल ढंग से हम नहीं सोच सकते कि भारत भूमि के अंदर ही, क्योंकि जब बाहर चली गई सारी पांडुलिपियां, अधिकतर पाली में, संस्कृत में, गांधारी, प्राकृत में, तो अगला कदम हमारा ये होना चाहिए कि जब हो जाए या उसके साथ साइमल्टेनियसली हम ये भी देखें कि हमारे ज्ञान की जो पांडुलिपियां हैं वो विश्व के किस किस लाइब्रेरी में, धरोहर में हैं, और इंटरेस्टिंगली उनमें से अधिकतर को उन देशों ने या उन विश्वविद्यालयों ने डिजिटाइज कर लिया है बहुत अच्छे से। सियाटल में हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में है, सारी जगह। इवन जापान में मैं रहा हूँ, जापान में ओतानी यूनिवर्सिटी है जो पाली मैन्युस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सबसे पुराना चलता था जापान में। तो ऐसे देशों से, उन लाइब्रेरी से भी हमें कनेक्ट करना चाहिए और वो डिजिटाइज फॉर्म जो है हमें उनको ले लेना चाहिए। उससे हमारी बहुत मेहनत, बहुत समय और बहुत ऊर्जा बच जाएगी। बहुत धन्यवाद। Thank you, Professor Singh. May I now request Professor Ray? I think one of the things which I've found very interesting is that, and where you can come in if you wish, is that, the whole idea about inscriptions also being added, or perhaps the Jogimara cave inscriptions being there, if you would like to add on that part or something else, please. Yes, I think इसके दो पहलू हैं। आपने हिंदी में शुरू किया तो I think we can continue. एक तो है अभी भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा manuscripts हैं, there is no doubt about that. और वो manuscripts ना documented है, ना किसी को पता है कि वो कहाँ है। तो documentation और उनको ढूंढना और उनको digitize करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और बहुत important कदम है। पर इसका दूसरा पहलू ये है कि written matter also occurs on copper plates. आपने अभी कहा कि copper plates पे भी, हाँ, जोगीमारा और वेबसाइट पे भी जोगीमारा केव इंस्क्रिप्शन, वो केव में है, कॉपर प्लेट पे भी नहीं है, केव में इंस्क्रिप्शन है। तो इस ज्ञान भारतम मिशन के अंडर क्या हम सारा रिटन मैटर इंक्लूड कर रहे हैं कि खाली मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हैंड रिटन इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप कॉपर प्लेट्स पे इंक्लूड कर रहे हैं तो कॉपर प्लेट्स का एक अलग should one say that was a distinctive trajectory, क्योंकि एपिग्राफिया इंडिका में 19th century से लेके बहुत सारी कॉपर प्लेट्स have been translated, have been published, और ASI ने उनको डिजिटाइज करके अब तो एपिग्राफिया इंडिका ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एक तो हुआ कॉपर प्लेट्स का, क्योंकि उसके और अभी जब हम नालंदा की बात कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट कॉपर प्लेट तो है which comes from सुमात्रा, श्रीविजया, जो वहाँ का रूलर नालंदा में डोनेशन दे रहा है फॉर द सस्टेनेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द मंक्स। तो कॉपर प्लेट्स की तो हमने बात ही नहीं की आज। और दूसरा, आपने बीच में थोड़ा बहुत कहा था प्रोफेसर आनंद सिंह ने, जो रिचुअल बैरियल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पर सीलिंग्स का क्या हुआ? नालंदा में इतनी हज़ारों में सील्स एंड सीलिंग्स मिली हैं जिसके ऊपर लिखा, not just the प्रतीति समुत्पाद सूत्र, पर और भी लिखा जा चुका है। So my point is that as a researcher, and if I take my own position, I'm not sure whether we put the chicken and the egg story, or have we found a solution to this. Do you document and then start research? Or do you have a research question in mind and then you look for data? So which way should it be? वो जो digitization है, that's documentation, fine. पर अब जब documentation हो जाएगी, then where are we finding researchers? कि अच्छा ये documentation तो हो गई, अब आप में से आइए कोई और make some sense out of this Mount Everest. So I think there are issues here, and I think the way I think, or the way I have gone about my work, it would also be beneficial to have some younger scholars who come up with some research themes based on not just the manuscripts, but also the other written material, but also archaeology. And my final point, which I have to make in this audience, archaeology is not to be seen through written texts. Archaeology is a parallel discipline. It works independently. So let us then at least look at one kind of material, but not equate it to the site. So with that, I will end. Thank you. Thank you, Professor Ray. I think
जो आपने इस जो दायरे को और विस्तृत कर दिया, ये जोड़ के कि कैसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी ला सकते हैं और कैसे हम मतलब उसको एक रिसर्च इकोसिस्टम के एक शोध प्रणाली के साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसका एक मूल्यांकन होना चाहिए, किस तरह से हम उसको देखने का हमारा नज़रिया होना चाहिए। अदरवाइज़ आप कितने डिजिटाइज करें, कितने कंजर्व करें, डजेंट रियली मैटर, यू नो। तो एक रिसर्च इकोसिस्टम के साथ जुड़ा होना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट, फॉर फाइनल वर्ड्स, आपको प्रोफेसर सिंह। मैं तो अब नालंदा पे ही बोलूँगा। एंड दो बहुत अच्छा, एक तो बहुत ही प्रॉग्मेटिक जो एक है उसको मैं आपको बताता हूँ। लुक टुवर्ड्स योर हिल स्टेट्स, आप सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, इवन नेपाल को जाओ, एंड देन यू लुक बैक टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में जाओ, यू फाइंड इट दैट 70 to 80% of their medicine system is out of Nalanda. अभी भी वहीं चलता है। चाइना में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा डिस्पाइट बहुत ज़्यादा जो है बीमारी जो बढ़ भी जाए तब भी वी ट्राई दैट 70% मेडिसिन हमारा जो होता है वो ट्रेडिशनल है। एंड डेफिनेटली दीज मेडिसिन स्कूल्स वेर बोरोड फ्रॉम नालंदा और अदर ट्रेडिशंस। So, if they people are doing, and why our Ayush is just failing in this, तो एक बहुत important pragmatic aspect है that we have to look into it. I am just mentioning you two literature, 10 पेज के हैं, जरूर पढ़िएगा। कश्यप सूत्र, कश्यप स्त्री चिकित्सा सूत्र एंड रावण बाल सूत्र। अद्भुत है वो 9th सेंचुरी में जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, 9th सेंचुरी में चाइना में डिस्कवर हुई है। नालंदा के किसी मॉन्क ने वहाँ पर ट्रांसलेट किया है। मॉडर्न जो एक गायनेकोलॉजिकल अप्रोच है वो पूरा फेल उगता दिखता है। 14 मंथ्स का मेडिसिन है, हर मंथ का फूड, साइकोलॉजी, किस मौत से डिप्रेशन गुजरती है, postpartum system after the birth child and uska hai. I have not seen in any modern medicine system that Nalanda was just preaching in the China in the 9th century. So एक आपको you have to look back, हर चीज खराब नहीं है जो ancient में लिखी गई है, and the दुनिया follow कर रही, then why we should not follow. तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि there are certain manuscripts जो हमारे से चली गई। I am just exemplify. Sir is standing here. I will take 1 minute only. That time we will talk about the Xuanzang. 657 category of manuscripts को ले गया. Only 100 were translated. Rest थे, cultural revolution तक वो intact थे. Multiple copy में आया, मैडम ने बताया, उसका एक कॉपी दुनहुआंग से डिस्कवरी हुआ। When you talk about that I Ching, 4 लाख श्लोक ट्रांसलेशन किया, 400 वॉल्यूम में ले गया, till 1713 at the time of his death, उसने केवल 52 का ट्रांसलेट किया, rest of it is the China. So the question is, it is our own original manuscript. Cultural revolution के पहले intact थी वो, अभी भी होंगी कहीं ना कहीं, तो it's our task to discover it. वही नालंदा है रही। अब हम उस पर रिलाई कर जाते हैं कि तिब्बतन ले गए थे तो 5800 समथिंग मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, and that is only the final thing. ऐसा नहीं है। Though it is a क्या कहते हैं कि एक डार्क होल है, उसमें ब्लैक होल है, it's very difficult to discover, but somewhere sometime anybody is to start, किसी को करना है। If you want to your real knowledge, come back to India. Thank you. थैंक यू प्रोफेसर सिंह। मेरी एक दुविधा रहती है कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वो ज्ञान का भंडार आपके साथ साझा करूं या फिर आपसे सवाल लूं। तो ये एक सवाल मतलब 1 मिनट का हम लेके हिंदी अंग्रेजी किसी में आप पूछ सकते हैं, सवाल नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे प्लीज़। और आप किसी मतलब करके कर सकते हैं, फिर हम 1-1.5 मिनट में इनको दे देंगे बस। मेरा सवाल सिद्धार्थ सर से है। एक चीज़ नालंदा में मिसिंग है और वो है आजीवक जो रिलीजन है, धर्म है, जो विलुप्त हो गया, जिसकी बराबर केव्स है जो इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं ग्रेनाइट में और चमकता है,
उस पर काम नहीं होता, उसकी लिपियों को कोई पढ़ नहीं पाता, उसके मैन्युस्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं पाता, और वो अशोक के बहुत क्लोज का धर्म था और उसको उसने काफ़ी विकसित किया था, मगर उसके रिचुअल्स काफ़ी टफ थे तो विलुप्त हो गया। तो ये चीज़ पे ज्ञान भारतम में कुछ काम होगा या ये चीज़ के बारे में मिसिंग हो जाता है? क्योंकि हम बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, गुरु नानक देव, मखदूम साहब पे बात करते हैं, मगर ये जो एक चीज़ सर है। प्लीज कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट, हमारे पास समय बहुत कम है, आप अगर बोल आप प्लीज एक बट सर 30 सेकेंड्स नॉट मोर। नहीं, आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप तो बात आप भेज जाइए ना, अभी सबको भोजन में क्या जाना है, आप भेज जाइए। नहीं, एक सेकंड सर, एक बार आप बोल दीजिए और हम एक ही साथ जवाब दे देंगे, बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि बात बताई खाने के बारे में, अब इजराइल में आइंस्टाइन पैदा क्यों होता है, भारत में क्यों नहीं होता? चलिए वो सारा खुद का काम है। हाँ, और उसमें सारा साइंस उसमें है। बिल्कुल। तो हमारा वो ज्ञान यूज करते हैं जब महिला का प्रेगनेंसी से बिल्कुल। लेकर 6 साल तक उनका ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है कि आइंस्टाइन वहीं पैदा होता है। चलिए अब हम लोग सर अभी लंच के ऊपर में काफ़ी इनरिचिंग डिस्कशंस होंगे, बट क्विकली इफ एनीबडी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन इन सॉरी खाली प्रश्न। सर मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, आज से 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन किया, मैंने भी सोचा और समझा और काफ़ी कुछ जानने का प्रयास किया। तो सर मैं चाहता हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर सबसे ब्राइटेस्ट यूनिवर्सिटी बने, क्योंकि हम उस कल्चर को अगर हम चाहते हैं तो मेरा सीधा प्रश्न है कि आपके दिमाग में एज ए वाइस चांसलर आप क्या सोचते हो आने वाले 10 सालों में आप उसको फर्स्ट लेवल पे कैसे लेकर आओगे, एंड हम कैसे रोल उसके अंदर दे सकते हैं? थैंक यू। थैंक यू। गंगा जी हम लोग आपको रोक भी नहीं सकते। एक लाइन, नालंदा लीट फेस्ट याद रखिए आप सभी, इसलिए हम कभी नहीं करने का सोचे थे, जो विजन था कि हम पुराना ज्ञान केवल आपको दें। समझिए, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में गीता की तरह है। आज से 1500 साल पुराना रेलेवेंस था, आज भी है, और हमारे 5 जनरेशन आगे भी रेलेवेंट रहेगा। नालंदा केवल ज्ञान के लिए नहीं फेमस था, ये मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ का जगह था। वहाँ कोई 50 साल का आदमी भी क्लास करने जा सकता था। एक दूसरा, नालंदा पूरी दुनिया को रिसर्च कराता था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस की बात थी, मॉडर्न साइंस की बात थी, जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और इंडिया के जो भी वो आज करते हैं। तो ये आगे के लिए हम कर रहे हैं, केवल हम कल्चर को नहीं बता रहे हैं, कल्चर से हम पूरी दुनिया को मॉडर्न साइंस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आगे क्या है, गीता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारी जी, बहुत प्रिसाइजली, बहुत संक्षेप में देखिए, ज्ञान भारतम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो रिपॉजिटरी क्रिएट करेगा। रिपॉजिटरी जो होगी वो ज्ञान भारतम पोर्टल पे होगी, जो सिस्टम है कि अपलोड करेंगे। वो रिपॉजिटरी केवल किसी देश के लिए नहीं होगी, पूरे विश्व के लिए होगी, कोई उसे एक्सेस कर सकता है। तो जब कोई उसे एक्सेस कर सकता है तो अभी हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये मोमेंटम, क्योंकि दोनों जगह पोस्ट आई, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में, खुदा बख्श में, और हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो सिंपल एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी जैसा क्वालिफिकेशन रखी गई है, थोड़ा सा कोई वर्कशॉप किया हो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में वगैरह वगैरह, और ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं। पोस्टें खाली रह जा रही हैं। पूरे देश में इतने सारे सेंटर बने हैं, आप गूगल पे खोज लीजिए। ना हमारी यूनिवर्सिटी में उतने लोग मिल पाए, ना खुदा बख्श लाइब्रेरी मिल पाए। तो ये एक चुनौती है जिसपे कि इसलिए मैंने यंगस्टर्स के सामने हिंदी में बात कर रही थी कि ऐसे कोर्सेज जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के भारत के चलते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के लोगों को यदि वो करें तो वो रिपॉजिटरी पे जो अपलोडिंग होगी और बहुत तेज़ी से हुई है, करीब 60 लाख 70 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स अपलोड हो गई हैं।
और उसको आप देखें तो उसके बाद रिसर्च के नए आयाम पैदा होंगे। ये किसी यूनिवर्सिटी के प्रशासक के केवल हाथ की चीज नहीं है कि उसके पास जादू की छड़ी हो और वो इंस्टीट्यूशन को बना डाले। एक कॉन्शियसनेस, जब मास कॉन्शियसनेस पैदा होती है अपने ज्ञान के प्रति, अपने अतीत के प्रति और उसको आधुनिक जीवन से कनेक्ट करने के प्रति, तब सारे लोग जागरूक होते हैं और तब स्कॉलर्स पैदा होते हैं। इंस्टीट्यूशंस कभी वाइस चांसलर्स के लिए नहीं जाने गए, इंस्टीट्यूशंस हमेशा जाने गए स्कॉलर्स के लिए। जब विद्वान तमाम जगह जाते हैं और जब परफॉर्म करते हैं या लिखते हैं, तब लोग उनसे पूछते हैं कि आप किस विश्वविद्यालय में हैं, आप कहाँ पढ़े हैं। तो हमें वाइसे वर्सा सोचना होगा, बजाय कि आप सोचें कि कुलपति के पास कोई जादू की छड़ी होगी। ये एक अच्छा मोमेंट है मुझे लगता है, जिस पे ज्ञान भारतम पे बात, इसीलिए मैंने एक्चुअली ये मेरा आइडिया था, मैंने गंगा जी को बोला कि ज्ञान भारतम पे एक सेशन रखना चाहिए जिसके बहाने हम बात कर सकें इस पीढ़ी से कि भाई एक ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें कि एक ऐसा डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें कि वो आप विश्वविद्यालयों में चले जाएं, पांडुलिपि छूने तक नहीं दिया जाता आपको। बीएचयू का मैं प्रोफेसर हूं, बीएचयू की लाइब्रेरी में जाकर के मैं एज ए प्रोफेसर आज तक मुझे पांडुलिपियां हाथ में नहीं मिली हैं। वो इतने बहाने बनाएंगे, इतना घुमाएंगे आपको, है कल आइए परसों आइए। बनारस में एक संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है जिसकी देश में सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, सरस्वती पुस्तकालय। वहां आप कदम रख दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। अब सोचिए कि जब जो चीज डिजिटल रिपोजिटरी के तौर पे हर व्यक्ति के पास मौजूद होगी, चाहे वो भारत का हो, चाहे जापान का हो, चाहे चीन का हो, तो उससे एक नए ज्ञान पैदा होने की उम्मीद है जिसमें हम सबकी भागीदारी आवश्यक है। बहुत धन्यवाद। Thank you. On that note, I'll thank the panelists for a very insightful discussion, and I also thank Gangaji, Aliaji, and the whole team of Nalanda Literature Festival. Nalanda Literature Festival for giving us a platform to share our thoughts basically. Thank you. Over for lunch, I believe, right? आप याद रखिए, ये सब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में सब सेशंस आप फिर देख सकता है। बहुत लोग अभी जल्दी से भागा और खाने के लिए चले गया, सब बच्चे लोग। उसको तो आप समझाइए ना कि बाद में जाकर के जो खास बात बोला वो जानेंगे। अच्छा, दूसरा बात, अभी नेक्स्ट सेशन जो खाना का बात जो होने वाला है, ये गजब का है। ये है AI एंड रोबोटिक्स, ठीक है, और लिटरेचर। और इसमें एक खास आदमी आने वाला है, डॉक्टर अमित पांडे, फ्रांस से आया है। वो खाली AI ने रोबोटिक्स का ज्ञान वाला है, और बाकी जो पैनल गेस्ट हो वो सब बहुत अच्छा पुस्तक और लिटरेचर। तो आपको थोड़ा सा जल्दी वापस आना है ना, 2 बजे से पहले, ठीक है? धन्यवाद।
प्राचीन नालंदा, जहां कभी दुनिया के सबसे बड़े इल्म का चिराग जलता था। इन्हीं खंडरों से शुरू हो रही है एक नई सफर, नालंदा लिटरेचर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरे 7 महीने का सफर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब का जश्न मनाएगा। वर्कशॉप, एग्जीबिशन और ऐसे डायलॉग के साथ जो नई सोच जगाएंगे। इस सफर का दिल है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 21 से 25 दिसंबर 2025 बिहार में। 5 दिनों तक 50,000 से ज्यादा लोग, किताबें, विरासत की सैर और कला संस्कृति का रंगीन मेला। अंगिका, बज्जिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, असमिया, बोडो, मणिपुरी, ये सब भाषा और बोलियां बोली ही नहीं जाएंगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने चमकेंगी। और सबसे अहम, ये सफर भविष्य की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारी भाषा और साहित्य आने वाली पीढ़ियों तक महफूज रखने का वादा है।
प्राचीन नालंदा, जहां कभी दुनिया के सबसे बड़े इल्म का चिराग जलता था। इन्हीं खंडरों से शुरू हो रही है एक नई सफर, नालंदा लिटरेचर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरे 7 महीने का सफर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब का जश्न मनाएगा। वर्कशॉप, एग्जीबिशन और ऐसे डायलॉग के साथ जो नई सोच जगाएंगे। इस सफर का दिल है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 21 से 25 दिसंबर 2025 बिहार में। 5 दिनों तक 50,000 से ज्यादा लोग, किताबें, विरासत की सैर और कला संस्कृति का रंगीन मेला। अंगिका, बज्जिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, असमिया, बोडो, मणिपुरी, ये सब भाषा और बोलियां बोली ही नहीं जाएंगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने चमकेंगी। और सबसे अहम, ये सफर भविष्य की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारी भाषा और साहित्य आने वाली पीढ़ियों तक महफूज रखने का वादा है।
प्राचीन नालंदा, जहां कभी दुनिया के सबसे बड़े इल्म का चिराग जलता था। इन्हीं खंडरों से शुरू हो रही है एक नई सफर, नालंदा लिटरेचर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरे 7 महीने का सफर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब का जश्न मनाएगा। वर्कशॉप, एग्जीबिशन और ऐसे डायलॉग के साथ जो नई सोच जगाएंगे। इस सफर का दिल है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 21 से 25 दिसंबर 2025 बिहार में। 5 दिनों तक 50,000 से ज्यादा लोग, किताबें, विरासत की सैर और कला संस्कृति का रंगीन मेला। अंगिका, बज्जिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, असमिया, बोडो, मणिपुरी, ये सब भाषा और बोलियां बोली ही नहीं जाएंगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने चमकेंगी। और सबसे अहम, ये सफर भविष्य की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारी भाषा और साहित्य आने वाली पीढ़ियों तक महफूज रखने का वादा है।
प्राचीन नालंदा, जहां कभी दुनिया के सबसे बड़े इल्म का चिराग जलता था। इन्हीं खंडरों से शुरू हो रही है एक नई सफर, नालंदा लिटरेचर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरे 7 महीने का सफर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब का जश्न मनाएगा। वर्कशॉप, एग्जीबिशन और ऐसे डायलॉग के साथ जो नई सोच जगाएंगे। इस सफर का दिल है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 21 से 25 दिसंबर 2025 बिहार में। 5 दिनों तक 50,000 से ज्यादा लोग, किताबें, विरासत की सैर और कला संस्कृति का रंगीन मेला। अंगिका, बज्जिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, असमिया, बोडो, मणिपुरी, ये सब भाषा और बोलियां बोली ही नहीं जाएंगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने चमकेंगी। और सबसे अहम, ये सफर भविष्य की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारी भाषा और साहित्य आने वाली पीढ़ियों तक महफूज रखने का वादा है।
प्राचीन नालंदा, जहां कभी दुनिया के सबसे बड़े इल्म का चिराग जलता था। इन्हीं खंडरों से शुरू हो रही है एक नई सफर, नालंदा लिटरेचर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरे 7 महीने का सफर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब का जश्न मनाएगा। वर्कशॉप, एग्जीबिशन और ऐसे डायलॉग के साथ जो नई सोच जगाएंगे। इस सफर का दिल है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 21 से 25 दिसंबर 2025 बिहार में। 5 दिनों तक 50,000 से ज्यादा लोग, किताबें, विरासत की सैर और कला संस्कृति का रंगीन मेला। अंगिका, बज्जिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, असमिया, बोडो, मणिपुरी, ये सब भाषा और बोलियां बोली ही नहीं जाएंगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने चमकेंगी। और सबसे अहम, ये सफर भविष्य की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारी भाषा और साहित्य आने वाली पीढ़ियों तक महफूज रखने का वादा है।
थे ना। अच्छा अभी तक मिल रहा है ऊपर? नहीं वहाँ से ऑन होता है, यहाँ से पावर ऑन होता है, वहाँ से ऑन करते हैं। नमस्ते सब लोगों को। अभी जो नया सेशन होने वाला है ना, ये बहुत खास वाला सेशन है। उसको ये सेशन जो है ना, AI, नॉलेज सिस्टम्स एंड फ्यूचर लर्निंग, तो इसमें बहुत खास की चीज़ हम लोग को मौका मिलने वाला है सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले हम पैनलिस्ट को बुलाता है ना, प्रोफेसर उमा कंजल, आइए पढ़ाइए ऊपर में। और माफ़ कीजिए अगर उच्चारण से थोड़ा गड़बड़ से बोल दिया, लेकिन ये भी देख रहा है कि आप वाइस चांसलर है IGNOU, तो आप तो बहुत मशहूर, बहुत ऊंचे पद पर है। आइए आइए और बैठिए। नेक्स्ट है डॉक्टर अनंत कुमार, और वो भी खुद राइटर है, पुस्तक लिखता है। हाँ आइए आइए, और वो भी प्रयागराज से है, इतना मेरे जानकारी में हूँ। अच्छा, उसके बाद
एक ऐसी व्यक्ति है, आप विश्वास नहीं करेगा, वो पेरिस से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आया है। और खाली एआई नहीं, वो फ्रांस में रोबोटिक्स के लिए बहुत मशहूर है। तो वो बहुत जबरदस्त सेशन होगा। डॉक्टर अमित पांडे, आप पढ़ाइए ऊपर में। और उसका अलावा डॉक्टर अकील अहमद, वो भी कुछ लिखता रहता है, बड़ा अच्छा बनाता है। आइए, मेरे साथ हमेशा बैठा रहता है। आइए पढ़ाइए, ऊपर में बैठ जाइए। वो भी खुद पुस्तक लिखा है। और इसके जो आज के जो मॉडरेटर है इस सेशन का, उनका नाम है मिस अदिति महेश्वरी। वो भी खुद लिखता है और खूब बड़ा ज्ञानी है। आइए, अभी भोजन खा के ना तो थोड़ा मुस्कुराना पड़ता है ना सब लोग को। हाँ, थोड़ा झगड़ो। मैं एक खूब बात बतलाता है, ये जो मॉडरेटर है ना, ये उपवास किया और खाली हलवा खाया था। तो ठीक है, धन्यवाद। आप सेशन चलाइए। हाँ, फिर मिलता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। लंच से पहले के सेशंस में आमतौर पर सब बातें बहुत लंबी लगती हैं और लंच के बाद के सेशन में आमतौर पर बातें काफ़ी बोरिंग लगती हैं। कारण आप सबको पता है, लेकिन हम फिर भी कुछ बहुत रोचक करने वाले हैं आज यहाँ, क्योंकि मंचस्थ जितने भी विद्वान और विदुषी हमारे साथ हैं, ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होनी शुरू भी नहीं हुई थी, उस कहानी का ब्लूप्रिंट तैयार करने में, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करने में आज मंचस्थ जो हमारे साथ स्पीकर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत हो अकील अहमद जी, अमित पांडे जी, आनंद कुमार जी और उमा कांजी लाल जी का। इस देश में आज़ादी के बाद शिक्षा में जो बड़ी क्रांति हुई, उसमें ओपन स्कूल्स का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि महानगर के विश्वविद्यालय सभी के एक्सेस में नहीं थे और क्योंकि हमारा देश ग्रामीण भारत एक बहुत बड़ा एक विस्तृत समझ है उसकी, वहाँ पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को पहुँचाने का काम इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दशकों से करती आ रही है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ब्लू डार्ट और डिलीवरी के ज़माने में भारतीय डाक सेवा आज भी सबसे ज़्यादा रिलायबल है। इग्नू सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ एजुकेशन आज भी हमारे देश में है। मैं उमा मैम के पास चलती हूँ सबसे पहले। मैम, the delivery of content resources digitally across the globe to the students who enroll in IGNOU is iconic, and the monumental increase in numbers each year is iconic. I myself am a student of a very prestigious college of Delhi University, but I can't deny that we would not take exams without going through IGNOU's notes, even though we were regular students. The quality of course material is so rich, so big, and so well researched. Now comes a learning model which integrates everything that's available on internet, beyond the paywall, across the paywall, without the paywall, whatever the condition is, and kind of intermixes everything and brings out intelligent answers for lamest questions. Where is IGNOU's role in this? How is our education system and a pioneer beacon of hope and excellence that IGNOU is, opening up its library to the world in the age of large language learning models and artificial intelligence? Sure, ma'am, sure. Most welcome. Yes. Good afternoon to all, and I'm sure post-lunch is very difficult to stay awake. I'll try my best. So,
at the outset, I would like to thank the organizers of Delhi Nalanda Dialogue. It's a great pleasure to be part of this initiative, because when we talk about literature and all, I think IGNOU is somewhere lost. And moderators clearly mentioned that IGNOU has a major role to play. IGNOU happens to be the largest university in the world with 3.9 million students on the rolls. And you can understand at the scale that we operate. So when we talk about scale, I think the theme is something really which gels in with our activities. When we talk about AI, knowledge, and future learning. In fact, if you look into, India is at a transformational stage where one side we are talking about artificial intelligence. And that has been, becoming, everyone is started talking about AI after the summit that we had. I think that has created a great impact. And when we come from the education system, I think that has a lot of potentials which we need to look into. Now, if you look into the education systems over the years that had developed, we had Gurukul system. And very nicely in one of the articles, Professor Patwardhan has mentioned that we have moved from Gurukul to Kulguru system. So what is Kulguru system? I think earlier we were focusing on exchange of knowledge, immersive learning, learning by doing, that kind of a thing has moved on, massification of knowledge, where we have, rote learning has been brought in, it's more structured. I think with AI coming in, we need to review the system, and also, of course, with the NEP 2020, which talks about holistic learning, which is talking about holistic development. I think there a lot of emphasis has been put in, which talks about Indian knowledge systems to be integrated with the curriculum. That's something that we need to look into. So when I talk about the transformation, the interaction, intersection that is happening, on the one side we have artificial intelligence, the other side we have civilizational knowledge, multilingual diversity is unique in India, and of course, ODL system that we started in IGNOU, open and distance learning, is moved gradually towards digital learning, and now we are talking about digital university. We are talking about virtual university, and perhaps we are moving with AI, something called agenting university, agentic. I think that's the major transformation that we will have. Ma'am, if I may request you to please elaborate on the agentic university I'll concept. just come Yes, from that. yes. So if you look into, I think possibilities are there. Nalanda, we know, that we had a fantastic education where global exchange of knowledge was happening. It got destroyed, and it is now being revived. I think with the AI and other ICT tools, AR, VR coming in, why not think in terms of having a digital Nalanda? I think that's the transformation we should be looking at and how we can go on. I think AI should be looked into as an enabler. In fact, I have been part of the major projects of the Government of India, Ministry of Culture. I was part of the National Virtual Library of India, which now is India Culture Portal that is there. I had worked with the IIT Kharagpur for the NDLI project. And of course, there was mentioned about IGNOU's, Aditi ji mentioned about IGNOU's repository, which world over people are using. This came way back in 2005, where we digitized all our course material, and it's available. And I think really the use of the, it's known as eGyan Kush, our repository was really realized during COVID-19.
what happened when students did not have access to teachers, classrooms and all. Everyone was referring to the course material that are there. So what we need to change is that how we preserve using AI and how we take it forward. So when we talk about, I think Gyan Bharatan, the earlier session, people were mentioning, I think it's restricted to the manuscripts. But why not go beyond that, talk about tacit knowledge, how do we capture oral traditions that are there, folk knowledge is there. I think it's high time, and AI can do wonders. I tell you my experience for the NDLI project or the NVLI project, it was a real difficult proposition. We had lot of initiative, even manuscript mission is there, but the, capturing all, collating them is a real challenge, and the challenge comes when you digitize and have the metadata in place. That is a real challenge, and I think in that context, AI can play a major role with the tools like recognition, handwriting recognition, OCR tools that were earlier also there. We have now AI-based translation tools which actually even can translate your Sanskrit and in regional languages. We have already platforms like Anuvadini, Bhashini. IGNOU is working with IIT Bombay using Udan. All our course materials that are available on eGyanKosh, we plan to translate them into 22 scheduled languages. That's a major project already we started and work is on. Apart from that, tools like Sarvam, which talks about speech to text and text to speech translation, and also into Indian regional languages. That's a breakthrough. I think we have a lot of videos available, course materials that are available, and if we can actually get them translated in different languages, that will be a great thing that we talk about. Now, talking about future learning, Indian knowledge system and future learning, if you refer to the NEP 2020, it talks about heavily on Indian knowledge system, holistic learning. It talks about interdisciplinarity, bringing in ethics and values, sustainability, talks about harmony between humans and nature. These are major things that are there. And a major initiative by UGC is restructuring the curriculum, which is learning outcome-based curriculum framework, which integrate Indian knowledge system into the higher education curriculum, which means that it's not just restricted to running a course. Institutions have a tendency, everyone's talking about Indian knowledge system, and they come up with courses in Indian knowledge system, and they say that we have already implemented. It's not what the government is planning. I think institutions will now need to integrate Indian knowledge system into at a modular level, going into the, integrating it with the curriculum. So this is where I think a lot of work can be done, and NEP can help in a big way. So I think I'll go to the question that you have put in about IGNOU's role. I think with the large-scale operations, it's a Jan-Jan ka Vishwavidyalaya. And being Jan-Jan ka Vishwavidyalaya, the awareness building, if it is required, I think IGNOU, the way IGNOU can work, no one can do that. And we have been doing with our knowledge, and it's not just even someone mentioned that we should go beyond, talk about Ghar Ghar Ka Vishwavidyalaya. Because every home there's someone studying in IGNOU. You will find that. Can we go into that? So what do we do? How do we go about it? So what is there? Okay. So basically, I think IGNOU has moved over the years. We have been talking about technology we have been using. We have been adapting to different kinds of technologies that were there. But what we have changed, the first was going in for your repository, that eGyanKosh, very popular. All our courses are available, all course material, and very popular among, and the best part is, it is open to all. World over, people are using it. Second was, we have been using a lot of audiovisual materials that was supplementing our course material. Those have been also digitized and made available. The next important breakthrough was
we thought that just making course material available is not good enough. Why not also have teaching learning inbuilt? So we went in a big way going in for online programs that are available. And when we say online program, it's right from registration to certification. The next step that is coming, I think everyone is talking about digital university. We have already performed that way back in 2009. But we were waiting for the regulations so that we could implement in a big way. Right now, most of our course materials are digitized available. Now, talking about how best we can use AI, I have already mentioned that we are working at a scale. Just imagine 3.9 million students onto that. How do we interact with the learners? What kind of AI platforms are required? We have already started working with IIT Bombay. We are using the BharatGen platform for that. I think one weak area that is there is the assessment. Digitizing course material, making it available is good enough. But what happens to the assessment part and how agentic tools platforms can be used for that purpose, that's where we are working towards. So what we look forward to in future will be a platform. IGNOU will be moving from digital to agentic university framework where AI in a big way will be used. Teachers will be using generative AI to develop content, question paper generation, though human intervention of course will be there, because the question comes, if AI does everything, who does what will be the work of the faculty or the teacher? I think their role will be moderating, because we have found that AI hallucinates a lot. So it actually throws up things which may not be actually what we are looking forward to. I think that's one area we are focusing on. How good it is going to be for students, how do we use that? Now, if we want to do the hand-holding, how we are doing it through our counseling sessions. But in an agentic platform, there are agents available, AI agents, which can do the personalization, customization of the learning, interact with the learners, like chatbot kind of a thing, but it goes beyond that hand-holding and giving them a whole learning experience that is, okay. So that's what we should be looking at, and that's the kind of agentic AI platform that we are working on. And of course, the most important thing is the assessment part, evaluation part. How best we can use AI to evaluate our answer scripts. Lakhs of answer scripts are coming. So what we are trying to do, work with IIT Bombay, getting these tools available. Already experimentation has started, and I think in future, we will be extensively using those tools for the purpose of assessment as well. So this is how we are moving from a digital university to an agentic university. That's what our purpose is. And in fact, any questions come, I will be happy to answer. Thank you very much. Thank you so much. This is really a 360-degree view of getting a student into the system, getting them accustomed to the AI ecosystem, and then the certification bit that ma'am highlighted. We'll come back to that in a while. Meanwhile, we take a next step in this conversation and include Dr. Amit Pandey, who is the robotics guy we have here on stage with us. जब नालंदा का पहला चैप्टर नालंदा में ही हुआ था इस साल, तो वो एक रोबोट लाए थे अपने साथ, और हमने उसे लाइव देखा कि वो क्या क्या कर सकता था. आज अमित जी के पास एक और कहानी है, क्योंकि वो कहानी बच्चों से ज़्यादा बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे देश के. वो कहानी इसलिए भी सुनना ज़रूरी है क्योंकि हम कुल मिलाकर अपने जीवन में कहानियों का ही मेला जोला है. अगर कहानियाँ ना हो, कथाएं ना हो, तो हम भी नहीं होंगे. और ऐसे में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग टूल्स को मिलाकर हम कैसे इस सुंदर बड़े देश को एक सूत्र में पिरोकर अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर सकते हैं, आज हम उनसे बात करते हैं इसके बारे में. ओवर टू यू अमित जी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी दुनिया आज जब बात कर रही है, आप उसकी पढ़ाई उस समय कर रहे थे जब इसके बारे में कोई चर्चा मुख्य धारा में नहीं हो रही थी.
और आज आप जब एक स्थापित नाम हैं इस विषय पर पूरी दुनिया में, आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, आप नई नई तकनीक के साथ अपने पोस्टुलेशंस देते हैं जो आने वाले समय में ठीक साबित होती हैं। तो जैसे कि होता है ना कि कोई घर में ज्योतिष आ जाता है तो सब अपना पत्री खोल के बैठ जाते हैं, हम आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट इज़ इन होल्ड फॉर द फ्यूचर, और क्योंकि हमें पता है कि आपको पता है। और दूसरी बात ये कि आज आप एक कहानी शायद हम सबके लिए लेके आए हैं, तो हम वो भी सुनना चाहेंगे। नमस्कार आप सभी को। जब आपने कहानी की बात की तो हमें डर लगा कि कौन सी कहानी आपको पता चल गई है और कौन सी पत्री खुल रही है। प्रकाशक हूँ ना पता लगना पड़ता है। So बेसिकली कहानी वहाँ से शुरू होती है जब एआई और रोबोट्स अलग अलग हुआ करते थे। मतलब कम्युनिटी में, कम्युनिटी मीन्स साइंटिफिक कम्युनिटी, टेक्निकल कम्युनिटी, वहाँ पर एआई का अलग एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। एआई में लोग काम करने वाले रिसर्चर अलग हुआ करते थे। फिर जो रोबोट्स पर काम करते थे वो पूरी तरह से अलग काम करते थे, उनके लिए हार्डवेयर हुआ करता था रोबोट्स का। तो ये दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे। तो हम ऑलमोस्ट 20 साल हो गया हमारा फ्रांस में, तो हम वहाँ पीएचडी करने के लिए गए हुए थे। तो हमने ये एक पर्सपेक्टिव देखा कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को रियल इम्पैक्टफुल वे में समाज तक लाना है तो क्या करना होगा। तो उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझ में आई कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को रोबोट्स को यूज करना है हेल्थ केयर सेक्टर में, कैसे किया जाए। एक मोटर रख दिया जाए या कुछ मशीन्स रख दिया जाए, उससे काम हो जाएगा, या उनको इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। तभी वो रियल में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सिस्टम से आगे बढ़कर सपोर्ट करना शुरू कर सकेंगे। तो वहाँ पर ये बात शुरू हुई कि कैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साथ में सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इन सब को एक साथ जोड़ें, और तभी किसी टेक्नोलॉजी को हम लोग सोसाइटी में इंटीग्रेट कर पाएंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को थोपना नहीं चाहिए इन द सेंस दैट ये मशीन है इसको यूज कर लो। इसको इस तरह से बनाना और डेवलप करना ज़रूरी है जो लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टेक्नोलॉजी जैसी आ जाती हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं सारे लोगों को यूज करने के लिए, तो वहाँ एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग इन सारे चीज़ों को अगर मिक्स कर दें और कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को उनके कंफर्ट जोन में ही रहने दे, लेकिन उनको असिस्ट करे, जो गैप है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो उनकी नीड्स हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करे। तो इस तरह से हमारे पीएचडी के समय में हमने बेसिकली यही किया कि रोबोटिक्स, एआई, उनको तो साथ में लाया ही, लेकिन साथ में एक जैसे चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें क्या क्या बेसिक फीचर्स इन द सेंस दैट कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती है, वो कैसे होती है, उसको हम लोग कैसे मॉडल करें इन कंप्यूटेशनल वे में, जिससे हम लोग उस तरह के चीज़ों को रोबोट्स में डाल सकें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन है जो वहाँ नीचे है, आप उस साइड में बैठे हुए हैं तो आपको वो स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। तो एटलीस्ट हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम उस स्क्रीन पर कुछ पॉइंट कर रहे हैं तो वो आप नहीं देख सकते हैं। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है जो पर्सपेक्टिव टेकिंग जिसको कहा जाता है, कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज करें, देखें, समझें, सोचें और बिहेव करें। ये सब चीज़ कहाँ से आएगा? हमारा समाज ही सिखाएगा कंप्यूटर को, रोबोट को, और उस तरह के कैपेबिलिटीज़ को रोबोट्स में डालना कैसे है वो फिर साइंटिफिक काम होगा कि हम लोग कैसे उसको मॉडल करें। लेकिन पहले ये तो समझें कि हम लोग एग्जिस्ट जब करते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो और कैसे किसी चीज़ को करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये फ़ोन दिखाना है आपको और स्क्रीन दिखाना है तो हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे कि आपके साइड में ये दिख सके स्क्रीन, इस तरह से हम नहीं दिखाएंगे आपको। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो बहुत ज़रूरी है अगर हम बात करते हैं मूवी से इंस्पायर्ड रोबोट्स की, या रोबोट्स क्या कर सकते हैं। बहुत बार हमसे ये पूछा जाता था, ये कोई रोबोट कब किल करेगा, ह्यूमैनिटी को कब फिनिश करेगा। वो सब तो बहुत आगे की चीज़ है। पहले ये हम लोगों को सोचना है कि हम लोगों के पास जो नीड्स है, क्या हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव वे में उस नीड्स को समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इंटेलिजेंट रोबोट को यूज करें इन ए सोशली एंड कल्चरली कॉन्टेक्चुअल अवेयर मैनर में। एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन, सर्विस सेक्टर और बहुत से सेक्टर हैं जहां हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो यूरोप में हम लोगों ने बहुत से सेक्टर में इसका यूज किया है,
साथ में हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग सेक्टर ये था जो ट्रांस कल्चरल नर्सिंग था। जैसे एक नर्सिंग फैसिलिटी होती है, वहाँ पर डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कैसे रोबोट उनको उसके लैंग्वेज में, और बेसिकली अगर हम लोग इंडिया से हैं तो इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो खुद ही बहुत डाइवर्स है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किसी का टेक केयर करे, कैसे किसी को सपोर्ट करे, कोई जापान से है, कोई अमेरिका से है, कोई फ्रांस से है, तो उसके लैंग्वेज और कल्चर में कैसे हम लोग बात कर सकें। इस तरह के चीज़ों पर हम लोगों ने बहुत काम किया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इससे रियली में इनिशियल स्टडीज़ में लोगों का मतलब जो एल्डरली केयर फैसिलिटी में भी लोग हैं, उनके लाइफ में एक बेटर एक्सपीरियंस हुआ, वो लोग बेटर कनेक्ट हो सके वो आउटर वर्ल्ड से, फैमिली से, और उनके अंदर में जो अपना इच्छा एक होता है जो जीने का, वो भी बेटर हो रहा था। ये सब इनिशियल स्टडी है, बट इस तरह के चीज़ों को हम लोग मास स्केल पर ला सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टीड ऑफ रिप्लेसिंग, रोबोट को रिप्लेसमेंट नहीं सोचकर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी ज़रूरत है, जो जहाँ गैप है, उसमें हम लोग कैसे यूज कर सकें। पर इतने जो ले ऑफ्स हो रहे हैं दुनिया भर में, बड़ी कंपनीज़ में, कॉन्ग्लोमरेट्स में, वो सब यूं ही हो रहे हैं कि एजेंटिव एआई और जनरेटिव एआई हैज़ टेकन ओवर अ फ्यू ऑपरेशंस that were taken care of by the humans, and they are very replaceable now. तो भविष्य में सब, जैसे मुझे याद है कि जब प्रकाशन में ई बुक्स आ रही थी तो सबका ये बहुत डर था कि अब छपी हुई किताबों का क्या होगा, लेकिन आज लगभग 20 साल बाद हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि पेपर बैक इज़ द क्वीन एंड ऑफ कोर्स कंटेंट इज़ द किंग। तो ऐसे में जनरेटिव एआई और एलएलएम मॉडल्स किस तरीके से इंडस्ट्रीज बदल रहे हैं, और आने वाले समय में क्या कोई ऐसा आधारशिला बनने वाली है, क्योंकि आधारशिला और स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो आपके बाद मैं डॉक्टर कुमार के पास जाऊंगी, लेकिन क्या ऐसी कोई आधारशिला की हम अपेक्षा कर सकते हैं आने वाले भविष्य में, जो एक मार्गदर्शन के रूप में सामने रहे कि अगर टेक्नोलॉजी का इंटरफेस होगा तो ऐसा होना निश्चित होगा? फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसको हम लोग एज ए टूल देख सकते हैं, और इस टूल को यूज करना सीखना होगा, और इस टूल को इम्प्रूव करना सीखना होगा कि कैसे हम लोग अपने नीड्स के लिए यूज कर सकें। तो अगर वो चल रहा है तो आप एक बार वीडियो वो चला दीजिए। जैसे हम लोग इस बात पर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बहुत सा समय, एफर्ट और पैसा मोस्टली क्रिएशन ऑफ कंटेंट में भी चला जाता है, कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट तो नेक्स्ट फेज में करेंगे, लेकिन क्या कंटेंट जनरेट करना है, कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, कैसे उसको गेमिफाई करना है, जैसा आप बता रही थी इंटरेक्टिव इमर्सिव लर्निंग में, और कैसे उसको इंगेजिंग और इंटरटेनिंग बनाना है। तो ये सब चीज़ को अगर हम लोग एज ए टूल एआई यूज करें या रोबोट्स यूज करें, जैसे रोबोट्स में बॉडी लैंग्वेज होता है, डांस फॉर्म के लिए हम लोग या फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रोबोट्स का यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग फोकस कर पाएंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट उसको करना है। जैसे ये वीडियो अगर चले तो प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय, वीडियो कहाँ चल रहा है? वहाँ भी नहीं चल रहा है, नीचे भी। अब आएगा। हजारों वर्ष पहले ये प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय खड़ा था जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। नालंदा, ज्ञान की नगरी, विचारों का तीर्थ, सत्य की खोज करने वालों का आश्रय। इसके विशाल पुस्तकालयों में सभ्यताओं का ज्ञान सुरक्षित था। यहाँ खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन और अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर देशों से विद्यार्थी महीनों की यात्रा करके यहाँ आते थे, धन के लिए नहीं, सत्य के लिए। नालंदा सिखाता था प्रश्न करना, सोचना, अज्ञान से ऊपर उठना। विद्वानों का मानना था ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है, और नालंदा वही प्रकाश बन गया। उसका महान पुस्तकालय धर्मगंज सत्य का खजाना, अनगिनत ग्रंथों और खोजों का घर था। फिर एक दिन आ गए, पुस्तकालय जल गए, दीवारें शांत हो गई और मानव इतिहास का सबसे महान ज्ञान केंद्र खंडरों में बदल गया। लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी, क्योंकि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। आज भी नालंदा के अवशेष दुनिया से एक ही बात कहते हैं, सत्य की खोज करो, सीखते रहो,
और ज्ञान को फिर से मानवता का प्रकाश बनने दो। नालंदा केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना और कालजयी प्रेरणा है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और अनंत काल तक विश्व को ज्ञान, संवाद और सभ्यता का मार्ग दिखाती रहेगी। नालंदा केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वो एक जीवित चेतना और अनंत प्रेरणा है। नालंदा केवलम अतीतस्य धरोहरः नास्ति, अपितु सा जीविता चेतना अनंता च प्रेरणा अस्ति। नालंदा खाली अतीत के विरासत ना है, बल्कि ईगो जीवंत चेतना अकालजयी प्रेरणा है। नालंदा इज नॉट merely a legacy of the past, but a living consciousness and a timeless inspiration. जिस कहानी की बात हो रही थी वो ये वीडियो थी। तो इसके पीछे की कहानी बस 2 मिनट में हम बता देते हैं। थैंक्स टू गंगा जी एंड आलिया जी, हमने अपने बच्चों को जो फ्रांस में पैदा हुए हैं उनको नालंदा ले जाने का मौका मिला। उनको हमने दिखाया कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था जहाँ से लोग पूरे दुनिया से पढ़ने आते थे। जो अभी है वो देखने पर और उसके पीछे क्या हुआ करता था वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अगर हम लोग बोले मॉन्क हुआ करते थे या गुरुकुल हुआ करता था या कुछ आते थे, वो जो इमेजिनेशन का गैप है, अगर हम लोग उनको नैरेट भी करें तो वो उसको नहीं समझ पाएंगे। वहाँ पर एआई उस गैप को फुलफिल करता है। उस वीडियो को देखने के बाद वो समझ सकते हैं कि रियल में वो क्या हुआ करता था। इतिहास और भविष्य के बीच जो एक पुल है वो कहीं ना कहीं कहानियों और अब कहानियों को तकनीक से जोड़ने का एक काम करता है। मैं डॉक्टर अहमद के पास आती हूँ अब, क्योंकि उर्दू भाषा हमारे देश की धरोहर का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितनी बाकी 22 भाषाएं हैं। और ऐसे में एक रिवाइवल चल रहा है, मैं तो कहूँगी यूथ में, कि भाषा के प्रति, ज़बान के प्रति, लिपि के प्रति, रेखता के प्रति वापस आ रहे हैं वो। तो ऐसे में डॉक्टर अहमद, कैसे आपको लगता है कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है उर्दू भाषा में लिखे साहित्य को समझने के लिए या उसके भविष्य को नए रूप से गढ़ने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नालंदा लिटरेरी फेस्टिवल 2026 के सरबराह चीफ जनाब गंगा कुमार जी और उनकी अहलिया साहिबा और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जब से इस प्रोग्राम का शुरुआत हुआ उस वक्त से लेकर और अब तक सोसाइटी के अंदर हर शख्स को अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब के तई फ़िक्र होने लगी। और उन लोगों ने अक्सर हमने देखा है कि वो सोचा कि किस तरह से अपने लिटरेचर को, अपनी ज़बान को, अपनी मादरी ज़बान को, अपनी तहज़ीब को हम प्रिज़र्व करें और आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम था आपका, इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। एआई का इम्पोर्टेंस लिटरेचर में भी बेहद अहम है। हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, ख़ास तौर पे जो पुराने ज़माने में मुशायरों का जो रिवाज था, गालिब के ज़माने में, मीर के ज़माने में, हमने देखा है कि मीर या गालिब या उनके दौर के जो बड़े बड़े शायर थे, उनकी शक्ल को एआई ने बिल्कुल बदल दिया। वो बिल्कुल उन्हीं की शक्ल में एक इस तरह से मुशायरों को अरेंज किया है कि ऐसा लगता है कि सचमुच आज हम गालिब को देख रहे हैं, हम सचमुच मीर को देख रहे हैं। गालिब जो लिबास पहना करते थे, मीर जो लिबास पहना करते थे, या उनके दौर के जो बाकी शुअरा थे जो लिबास पहन के मुशायरे में जैसे आया करते थे, हम देखते हैं कि बिल्कुल वो हमारे सामने हैं। और ये सब एआई का कमाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूट्यूब के ऊपर जो पुराने ज़माने के क्लासिकल मुशायरों को अपलोड किया गया है, उसको देखने वाले बूढ़े लोग नहीं हैं, नौजवान भी नहीं हैं, यानी मिडिल एज के लोग नहीं हैं। उसके 90% वो व्यूअर्स हैं जो स्टूडेंट टाइप के हैं, जो बिल्कुल यंग लड़के हैं, वो देखते हैं। अगर वो हमें देख रहे हैं, हमारे मुशायरों को देख रहे हैं, हमारी तहज़ीब को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो
ये बहुत बड़ी बात है। और हम अपने कल्चर को, अपनी तहज़ीब को, अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए, उसको प्रिज़र्व करने के लिए ये बहुत अच्छा हम इस्तेमाल कर सकते हैं एआई का, और बल्कि किया भी जा रहा है। उन्हीं को देखते हुए आज जो शायर हैं, बहुत सारे शायर हमारे दोस्त हैं जो हमें वीडियो भेजते रहते हैं, उनकी गज़लों को वो इस अंदाज़ में एआई के थ्रू, न जाने वो कैसे बनाते हैं, वो हमें नहीं मालूम कि वो कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो बेहद खूबसूरत ऐसा लग रहा है कि वही मुशायरा पढ़ रहे हैं। आवाज़ भी ज़बरदस्त उनकी है और बेहद बेहतर से बेहतर तलफ़ुज़ में मैं देखता हूँ कि वो मुशायरे में पढ़ रहे हैं और उनकी चारों तरफ तशहीर भी हो रही है, उनको लोग जानने भी लगे, पहचानने भी लगे। हमने 20 किताबें लिख दी, हमें कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है, इसलिए कि हमने कभी एआई का इस्तेमाल ही नहीं किया। और हकीकत में एआई क्या है ये तो मेरे बेटों ने मुझे समझाया और सिखाया। अगर हमें कुछ पूछना रहता है तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ। पिछले दिनों मुझे एक किताब की डिज़ाइन बनवाने के लिए मैं टेलीफोन करता फिरता था जो डिज़ाइनर को, मेरे बेटों ने कहा कि मैं बना के देता हूँ आपको डिज़ाइन। और वो मेरा बेटा जो है वो 11th क्लास में पढ़ता था, उसने मुझे एआई के थ्रू एक डिज़ाइन बना के भेजा। वही डिज़ाइन हमने किसी डिज़ाइनर को बना के भेजा और उसने मेरी किताब की पूरी वो डिटेल बना करके भेज दी। तो ये तो एक हमको लगता है कि आजकल के ज़माने में ये किसी वरदान से कम नहीं है एआई, और इसका इस्तेमाल आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और उससे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एआई के साथ साथ जो अपना इंटेलिजेंस है उसका भी वो इस्तेमाल उतनी ही ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है कि पिछले दिनों मैंने अपने स्टूडेंट से उनको कुछ असाइनमेंट दिया और हमने कहा कि शाद अज़ीमाबादी के ऊपर कुछ लिख करके लाओ। हमने सारे बच्चों को लिखने के लिए कहा। 26 बच्चों में से 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने शेर कोट किया शाद अज़ीमाबादी के। बाकी जो बच्चों ने शेर कोट किया मीर का, गालिब का और बशीर बदर का और पता नहीं किसका, उसको पता भी नहीं है कि ये शेर किसका है। तो हमने बड़ी परेशान हुआ। हमने कहा कि तुम ये क्या लिख करके लाए हो और कहाँ से लिख करके लाए हो? तो वो डर से बताए नहीं बच्चा। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि वो एआई के थ्रू लिख करके लाया है। तो ये एक डेंजरस भी है। एआई का इस्तेमाल भी वही करे जिसको अकल है। जिसको अकल नहीं है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और जिसको नॉलेज नहीं है वो भी एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी अक्ल का, अपनी समझदारी का भी उतनी ही इस्तेमाल करना चाहिए कि जितना हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। तीनों बड़े पैनलिस्ट्स की बात हमने सुनी और ये समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन में क्या क्या हो रहा है और किस तरह से दुनिया बदलने वाली है। जब हम सब कुछ ये देख लेते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें एक दार्शनिक को सुनना चाहिए, एक विजनरी को सुनना चाहिए, जो कि एक ढांचा हमें दे सकें सोचने समझने के लिए कि जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है दरअसल उसको एसिमुलेट कैसे करना है। एंड सो वी गो टू अ फिलोसोफर एंड देयरफॉर वी आर नाउ गोइंग टू डॉक्टर आनंद कुमार। सर, ओवर टू यू। सर, आप अगर बैठ करना चाहें तो ओके ओके। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पिताजी से बोलती थी कि प्रीफेस क्यों पढ़ना चाहिए किताब का, किताब शुरू करनी चाहिए सीधा। तो वो कहते थे प्रीफेस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि किताब कैसे पढ़नी है वो समझना ज़रा ज़रूरी है। तो अब हम सर को सुनते हैं कि एआई को कैसे समझना है, ज़रा ये समझ लेते हैं। हम लोगों ने अभी बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुना जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एआई के एप्लीकेशन में, एआई के डेवलपमेंट में, और हमारे जैसे अनाड़ी भी अकील साहब हैं, वो हम दोनों एक ही स्थिति में हैं कि दोनों ही एआई से अभी अनकनेक्टेड हैं। और शुरू करने के पहले मैं दिल्ली नालंदा डायलॉग की चेयरपर्सन आलिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बुलाया, और गंगा जी को उनकी बर्थडे पे आज उनकी हैप्पी बर्थडे और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
अब मैं अपनी स्लाइड से, ये ज़माना जो है मशीनों का है और इसके लिए एक नया टर्म आजकल इस्तेमाल होने लगा है, पोस्ट ह्यूमनिज्म। तो दिस इज़ एन ईरा ऑफ पोस्ट ह्यूमनिज्म वेयर ह्यूमन बीइंग्स का रोल जो है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में रिड्यूस होता जा रहा है और मशीन्स का, उसमें एआई भी उसका ही पार्ट है। तो एआई वर्सेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इस पे मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा। So this is the era of post-humanism and machines. I can't read, I read from here. तो इसमें जो है machines, they are mimicking human intelligence. हमें जो भी काम करना है उसको एलेक्सा को बोल दीजिए, वो कर देती है। एलेक्सा ये गाना चला दो, एलेक्सा ने चला दिया। तो ये जो है machines are mimicking human intelligence and mind, and machines and minds both have one principle in common. दोनों डाटा प्रोसेस करते हैं, या तो सेंसरी डाटा या जो भी उनको डाटा फीड किया जाता है और उससे डाटा को प्रोसेस करके उसमें उनकी रीजनिंग बनाते हैं। देन सम सॉर्ट ऑफ थिंग डेवलप्स दैट इज कॉल्ड रीजन। और रीज़न भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो है डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो मशीन्स में दोनों किस्म के रीजन्स कैन बी फेड, इट कैन बी प्रोग्राम्ड टू हैव both kind of reasoning, deductive and inductive. Deductive means knowing the word, we can apply it on a particular situation. जैसे उसका कहा कि आदमी के दो पैर होते हैं और जो इधर बैठे हुए हैं उनके भी दो पैर हैं, इसलिए वो भी आदमी ही हैं। सिंपल, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग जो है साइंस में यूज़ होती है कि यू मेक अ वेरी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपने इन्फरेंस ड्रॉ किया। डिडक्टिव लॉजिक जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें डिडक्टिव लॉजिक होता है विच इज़ वेरी जनरलाइज्ड। और इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है, बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में, and it is never 100% valid कि this is possible। तो ये दोनों चीज़ें machines जो हैं, you can feed all this data and they can do that। so हाँ, so तो डाटा आता है, डाटा से फिर वो मेमोरी होती मशीन के अंदर, वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद memory से then they are able to develop the process of reasoning in the machine। और mind का function क्या है, to analyze whatever data is given to it, it can analyze, it can synthesize the data and it can generate ideas, thoughts and imagination। ये सब human mind के भी function है, machines के भी function है। delusion, hallucination and all what mind can do, machine can do। So even machines can, as she said, they can hallucinate and they can have other kind of problems which a mind may have। Now this post-humanism हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम में कैसे देखेंगे? हमारे यहाँ भी एक बड़ी पुरानी संस्कृति है और जिस पे बड़ा विचार हुआ है। तो ऑर्डिनरी ह्यूमंस का तो हमने आपको बता दिया, मशीन्स का भी बता दिया। मशीन्स को इतना डेवलप किया जा सकता है कि वो माइंड की जेनिथ तक पहुँच जाए। टू द पीक ऑफ माइंड दे कैन अटेन and they can almost function like human mind or rather better than human mind। then what we will be here for, हमें क्या करना होगा? अगर ये सिचुएशन होगी, मशीन सब कर रही है और मशीन को अगर hallucinations हो रहे हैं तो we will be suffering in that situation। तो हमारे यहाँ जो दूसरे टाइप का पोस्ट ह्यूमनिज्म था, ये मशीन का पोस्ट ह्यूमनिज्म है। और हमारे यहाँ
जो पोस्ट ह्यूमनिज्म था वो योगीज का था. These machines lack two things जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है. दैट इज इंट्यूशन. वी हैव अ इंट्यूशन विच मशीन्स डू नॉट हैव, दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड द सेकेंड थिंग इज हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड knowledge by identity. If you want to know a thing, become that thing and then you automatically know. If you know what is beyond mind, you become that and know what is that. जैसे समाधि में आप जाके you can experience those kind of things which machines cannot do. Even at the peak of the mind, you know, they can do everything like mind, but they cannot transcend the mind. Human yogis, they were able to transcend their mind, surpass the mind and go in a zone where mind does not exist. आपको एक मैं दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ. हाँ, ये आप स्लाइड देखिए. तो इसमें आपको ये इस स्लाइड में हमारे यहाँ ये अब आप अगर ये नीचे देखेंगे इसमें आई कैन आई पॉइंट दैट फ्रॉम समवेयर. आप जो नीचे की स्लाइड देखेंगे ये हम लोगों का आजकल का कॉन्सेप्ट है. हमारा आज का कॉन्सेप्ट है कि ये जो वेव और पार्टिकल थ्योरी, द पार्टिकल इज द वेव and the wave is the particle. And all these are subatomic particles. And these subatomic particles, in some way, they make the universe. अच्छा, हमारे Indian knowledge system में भी, it is the same idea. You will be so surprised to know that Indian knowledge system also, you know, it begins with something which is oscillating. Subatomic particles also do not need any external thing to oscillate or vibrate. Indian knowledge system, maybe there is something which oscillates before the beginning of the universe and also which has the light. So there is oscillation and light. Wave and particle both are there. And both of them, without any external pressure or stimulus, वो वाइब्रेट करते हैं. इसको हम लोग कहते थे अनाहत नाद, अनस्ट्रक वाइब्रेशन. अनहद, अनहद की अनाहत, अनाहत मीन्स अनस्ट्रक. सुजाता जी हमारे बीच ही हैं. हाँ. इनके साहित्यिक प्लेटफॉर्म का नाम ही अनहद है. हाँ, आहत अनहद. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अनाहत, जो अनाहत means which is unstruck sound on its own. Similarly, we have an uncreated light, and that is prakasha, that is also called consciousness. So these two things together, they create the cosmos, and here also the wave and the particle, that creates the cosmos. But the Indian system believes that there is a consciousness. The idea of consciousness is not there in the AI system. The consciousness which overrides mind, which is beyond mind, that idea is not in the AI. AI, but in Indian system, there is a consciousness and there is an intelligence behind creation which creates the vibration and the wave, both everything, which is, you know, there is something called consciousness which leads to the movement of these particles and production of these waves and their interchangeability. But in Indian system, consciousness is there. So therefore, I'll go to the another one. Yeah.
So our post-humanism is not only limited to machine. This is the era of post-humanism, which, as I said, it's the era of machines and the machines acting as mind. But our Indian knowledge system says that the post-humanism is further evolution into the states of intuition and knowledge by identity, as I described you. So we believe in post, and there is another thing, that the evolution of human beings have not stopped. So this worry, in case these machines mimic mind, then what we'll do in case they go berserk, they get schizophrenia, because they will have everything which mind has. They are replicas of mind. Then where we'll go in case something happens? So we believe that the human beings are still evolving, and mind is a state of evolution. At the moment we know it is the highest state, but because if we evolve out of our humanity, we will have some other organ or some other thing other than the mind, which we may, we do not know what it will be, and we'll think and we'll act from that special faculty which will grow with the evolution. So like Sri Aurobindo has said, man is a transitional being. He is not the final product of evolution. Man is a being who is becoming something, and man is the embryo of a future race. So with this, we really need not worry too much about machines becoming minds and even surpassing human beings, because we will evolve out of our own minds where machines cannot go. And with this, I will not now, there are some other slides that how we can use AI in different ways. I will not go because you have heard very great experts, and just to read a few things. The dimensions of AI are knowledge access, produce cognitive models, also to have some kind of ethics in AI governance and pedagogy, as you heard Professor Kanjilal. And also it can be used in surveys, as you heard Professor Singh in the earlier session. It can be used for documentation, we have already heard. It can be used for material analysis, AI can be used. A material like, C14 technology is there to date organic material, wood, or, remnants of the body. Spatial analysis, you can do the, time is, I think, over? Yeah. So like this, and also in say conservation, etc. So this is the my take on AI and the human mind, and also surpassing of the human mind by human consciousness that is there. So we should enjoy AI, let it develop to its maximum, but it is not going to overrule us, because we will have other means, and there will be a great pressure on us to do yoga, etc., to surpass AI. So thank you very much. Thank you so much, sir. An absolute pleasure. Can we take one or two questions, sir? Yes. May I request the volunteers to help with the mic? Last nail in the coffin of existence of humanity. If it operates on nuclear power, it will destroy the world. If it operates on the human genome, जिसका पूरा पता है दुनिया को आप, तो it will, अभी जो आपने देखा है कोविड आया था, अभी एंटा वायरस का चल रहा है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? So may I get the question? टेक्नोलॉजी, मैडम बोलने दो मुझे, आप इतनी देर बोले हो, ज्ञान की बात शेयर कर रहा हूँ, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। सर समय हमने तो सीमा यही है। सिखाया है। सर समय सीमा है।
सर बोलने ही नहीं देते तो क्या करें? सर सवाल पूछ रही हूँ ना। मैंने कहा सुझाव, मैं एक दो बात बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ नॉलेज। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए तो मुझे May I please have another question? If anyone has a question, yes, please. Sorry, yes. I am not literate in AI and neither intelligence, IT, but I heard recently at a international conference on diaspora in Gujarat last week, somebody told me that a robot can commit suicide also. That it happened last year in Korea. Can you, Panditji, Dr. Ji, please tell us about that? They also instigated other robots to do the same. I think something like that also happened. Sir. I think it is simply how we interpret a term, because if something is not living being, I don't know how we can say that it is committing suicide or dying. It is mostly a machine which has some kind of reasoning, and sometimes those kind of reasonings or perceptions or the program which was fed in the machine might not be working properly, and then perhaps it can fall down also, and then people can say that, okay, it fell down. Yes. It refused to do the work. Yeah. Yes, please. We have a question there. Thank you, ma'am. हेलो। तो सबसे पहले मैं सभी पैनल मेंबर को अपना नमस्कार करना चाहूँगी और यहाँ पे उपस्थित सभी गणों को भी मेरा प्रणाम। सर, मेरा सवाल एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से है कम्प्लीटली कि अभी एआई जो है हमारा, ठीक है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लर्निंग टू लर्न द टूल्स, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जिनको यूज़ करके दे कैन मेक देयर लाइफ सिंपल, ठीक है, बट स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट सो मच प्रोफाउंड इन लर्निंग हाउ टू क्रिएट वन सिस्टम और अ मॉडल लाइक दैट। और मेरा बहुत बेसिक सवाल है एंड इट्स टोटली रिलेटेड टू द करिकुलम, ठीक है। द करिकुलम दैट वी बिलोंग टू, इट कम्प्लीटली एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन एग्जाम सेंट्रिक पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हम बहुत कम वैल्यू करते हैं चीज़ों को इनोवेट करने के लिए, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम सेंटर्स एंड सम इंस्टीट्यूशन। मैं 90% ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ, सारे के सारे एग्जाम सेंट्रिक हैं। आई बिलोंग टू सच वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस। हम जितना भी चाहें प्रमोट करें रिसर्च बैकग्राउंड को, हम प्रमोट करें मॉडल मेकिंग को, वो बहुत कम होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट पे आते जा रहा है। वी एवरीबडी हियर नोज एट सम एक्सटेंट, मे बी यू पीपल नो हाउ टू यूज ChatGPT, हाउ टू यूज Gemini फॉर एन एग्जाम्पल, but how will you promote students to go into the field of making such technologies? I think ma'am can take the question. Yes. I think very important question that you have put in. Yes, AI is changing, and that's why I mentioned that in my talk also, that we have moved on to an education system which was mass producing, very generalized, curriculum generalized, everything is there, assessment generalized. I think with AI, which can do a personalization, customization as per individual requirement, and that's how we should be using it. And how best we can utilize, that's what we need to see. Because through the data that's available, each learner's learning path can be defined. And in fact, the intelligent agents, already there are tools available which can do the hand holding. And it can actually identify the potentials of the learner and create an environment where the learner is doing innovations. So that's where AI can play a very important role. And of course, I agree with you. Everyone is talking about AI. A lot of changes in the curriculum is required. Many are coming up with the courses, but at a mass scale that is required. And capacity building of teachers as well as learners is most important. That's my take on this. Yes, please. So, Amitji wants to add something. I think what she has asked, that how students can create it. Maybe you may have to run a program in the university for AI creation. This is what you asked. Yes, sir. Yeah. So you can be trained to generate AI models. Sir, I think it's very important question, and
we need to create the innovative ecosystem, innovation ecosystem in India, and I think that is already happening. For example, if we teach 2 + 2 4 होता है, आप उसको समझ गए, ये सोचना शुरू करना होगा कि 2 + 2 5 क्यों नहीं होता है. वो माइंडसेट जब आना शुरू हो जाएगा, then we can start thinking that okay, let us go deeper in any concept and try to understand the basics of that, and perhaps those basic can be the building blocks to innovate something in the future. And that's where I think the policy makers and all the media and the whole ecosystem has to play a big role in this to create those kind of R&D and innovation ecosystem. Sir, may I? Yes. May I? Sir, okay. नेक्स्ट प्रोग्राम चल रहा है ना. Thank you. Thank you, Thank you thank you. so much. Thank you फिस- for being a discerning audience. आप बहुत फैसिलिटेशन हो जाएगा. आइए श्रीमन और श्रीमती गंगा कुमार, दोनों आइए. अरे कोई बात नहीं, मैं अकेला करेगा, कोई चिंता नहीं है. नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं है. अरे मैं अकेला थाली बजाएंगे. एक आप आइए. So now I have it on good authority that the gentleman in front of us थोड़ा बहुत हिंदी समझता है. तो देखिए, ये छोटा बात नहीं है. मैं आपको एक अच्छा बात बतलाना चाहता है और एक दुखी बात बतलाना चाहता है. मैं तो ऑस्ट्रेलिया से है, 5 पीढ़ी. आप समझते हैं विलियम, 5 पीढ़ी. ठीक. मेरा सारा रिश्तेदार आपका पुस्तक पढ़ा है, लेकिन हिंदुस्तान नहीं आया. लेकिन बहुत दिन से पूछता है कि विलियम से कभी मिला. लेकिन आजकल एक अलग प्रश्न पूछ रहा है, सैम कहाँ है, और उसको पुस्तक पढ़ करके बहुत आनंद आया. लेकिन आज आपसे मुलाकात करेंगे और ये फैक्ट है, विलियम जी जो है ना, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता है, कोई लिटरेचर फेस्टिवल नहीं है दुनिया में जहां उनको निमंत्रण नहीं मिलता है. अभी वो सिडनी में भी था,
कोलंबो जहाँ भी लिटरेचर फेस्टिवल है विलियम को स्वागत करता है और भारत का कितना अच्छा से ऐसी ज्ञान देता है कि कोई जानता भी नहीं है, बहुत जबरदस्त है। तो विलियम जी कृपया करके आ जाइए ऊपर। हाँ, और टंडन जी तो किसी को तो बोलने की जरूरत नहीं है, टंडन जी को अच्छा से जानता है ना। सुनील टंडन जी आप भी आप आइए ऊपर में, आइए। गजब का बात है, मैं विश्वास नहीं हो रहा है कि विलियम जी है यहाँ। So now that Dalrymple ji is with us, let's request him. He has a presentation on this wonderful book, which of course has done the rounds everywhere in India, and it's become so popular that he's become the most popular Indian spokesman, I think, at least as far as our ancient history is concerned. Thank you very much. Why don't you take the stage and give your presentation, and then if we have time, because we have only half an hour for this session, we'll have a few questions. Yes, it's only half an hour. So we'll have... Where is the slide? If it's only half an hour, do you want to do it through questions? We can do that also, whatever you prefer. Let's All get right. the slides up there. Okay. So, no, I just want to know, what was the impetus? Because your previous books haven't really gone into the ancient period. This is the first time you really ventured into the ancient world. And what was the impetus that impelled you to do research in this particular area and write this absolutely wonderful book? Thank you. So, my original interest was always archaeology. And when I first came to India, the sites that I made a beeline for in 1984 were Ajanta, Ellora, Sanchi, Khajuraho. And I think my younger self would have been very surprised that I ended up focusing on the 18th century, which was the period. I ended up... the PowerPoint, you do not have it? No, okay, well, don't worry about it, we'll do that. Yes, I think my younger self would be very surprised that I ended up writing about the 18th century, because throughout my childhood it was ancient history, which was always my fascination. And my 4 books about this transitional period between the last Mughals and the East India Company, which I focused on partly because it's a neglected period. Historians often concentrate on the golden ages, whether it's the Taj Mahal or Ashoka or the freedom struggle, the kind of the headline figures, and no one has ever really focused on people like Shah Alam or Bahadur Shah Zafar. It seemed to me to be a fascinating period. So I ended up writing 4 books over 20 years on that. And the main USP of those books was the fact that they accessed a huge amount of previously unused Persian sources. And I did them with a friend called Bruce Wannell, who was had a spectacular facility for reading scribal Persian. So could look at manuscripts with scribal shorthand from the 18th century and read them as fluently as you and I can read Hindi or English. Bruce died of pancreatic cancer very rapidly, just 2 months after The Anarchy was published. Oh, I'm sorry. And it seemed to me like a sort of perfect punctuation, that those books were complete in themselves. So we boxed them up as a set. And I went back, in a sense, to what had been my first love. It gave me an opportunity to, I suppose, to have the courage to go and do an entirely new period. One that I'd always been interested in, but one that I'd never written at book length before. I'd written a great deal of articles in the New York Review of Books and London Review of Books and that sort of stuff on Ajanta and so on, but I'd never done book length writing. And the other opportunity that allowed me to do that was COVID, because we were all stuck at home. And again, it just gave me 4 months to just, or 5, 6 months to just really dive into this period, read every day. Normally, we're all buzzing around, going to the IIC, disappearing off to literary festivals, whatever it is. But COVID
was wonderful for writers because we can work from home. Yes. And it allowed us, many of us, to do deep dives into stuff that we'd longed to do but hadn't had the time before. And this book emerged from that. As soon as COVID was over, I began traveling. And the central idea was how people in this country are very well aware of the history of ancient India, but they're not, I think, aware so much of its resonance outside India's boundaries. And every time I've been to somewhere like Angkor Wat to go and visit, you bump into groups of Indian tourists who are astonished to see Kurukshetra or the Battle of Lanka or images of Bhagavad Puran or whatever it is on the walls of the largest Hindu temple in the world, which is not in India but is in Cambodia. Cambodia, yes. So it was answering those questions, and if it's unknown if it's little known in India, it's completely unknown in the rest of the world. And I became more and more obsessed with the fact that so much that India has given to the world is known, is sort of disguised and hidden and obscured. For example, most obviously, numbers. Mathematics, yes. The numbers that India pioneered with Aryabhatta and Brahmagupta. They're all Arabic numbers. We know them as Arabic numbers, which actually is only since the 19th century it's had that term. When Indian numbers were first introduced to Europe by Fibonacci in the 12th century, they were known as Hindi numbers, or in Latin, the modus indorum. Yes. But some point in the colonial period, the numbers got attributed to the Arabs. And if you ask anyone in America, or even sort of guys that have got PhDs in maths and science, people think that these came from the Arab world. And it's not wrong in the sense that Europe got it from the Arab world, but the Arabs got it from here. That's right. And that is forgotten, except in the Arab world, where they're still called Hindi numbers. If you go to Egypt, they know exactly where they got them from. Hindi, the word Hindi is used. No, but tell me, I mean, this, of course, is the product of COVID, as you say, and I think there should be another study on how COVID became the most creative period for many people, because a lot of people attribute the remarkable things they did during those years to the fact that they were absolutely housebound during COVID. But coming back to Nalanda, the topic that we have before us, because I find that of all the place names cited in your index, Nalanda is cited more frequently than any other. So the centrality of Nalanda, I think, has more or less manifested itself in your book. But I'd like you to speak a little bit about it. How is Nalanda central to the spread of Indian ideas, Buddhism, mathematics, and philosophy throughout certainly the East and later on even in the West? So there are two issues here, in a sense. One is the spread, and one is the development. The spread happened before Nalanda. You start getting Buddhism going up to what's now Afghanistan and Pakistan, down to Sri Lanka, across to Burma, long before Nalanda is founded. And there is already an entire world of Asia which is familiar with Indian ideas before Nalanda becomes the great institution that it will become. But once Nalanda is established, it becomes, for those both in India and outside it, the undisputed center of learning, of authority, and above all, the place where you can access rare text. Today, we just come out of a session with AI. Today, we can go onto AI and access almost anything in the world instantly. And we sometimes forget how much scholars struggled to access text and information in early periods. And the story which I lead into Nalanda with, which is the story of the Chinese monk Xuanzang, is directly relevant to that, because Xuanzang was a scholar. His grandfather was the rector of the Chinese equivalent of Nalanda. There was already in Xi'an a major university there too. Yet when he devoted himself to Buddhism, he found references to a group of texts called the Yogacara texts
which he could not find reliable copies of in China. So, being the extraordinarily brave and nerdy man that he clearly was, he went off and traveled 2,000 miles on foot to get those texts. And arrives in Nalanda, where he, rather than having to go through the normal exam, which people had to go to get the so-called entrance exam at the entrance. The famous entrance exam, yes. which I think was often just a very sort of, bullshit porter, sort of telling idiots to go away. But I don't think it was quite, joining the IAS or something, ICS or the. But it was. He gets welcomed there, and he spends, in the end, on and off 20 years in Nalanda, copying out the manuscripts that he couldn't find in China. And there's two groups of manuscripts he's particularly after. One is the Yogacara texts. The other are what are called the Vinaya texts, which are the books of monastic discipline, not particularly of interest to us today, but if you're a monk in China, obviously of essential. And he was convinced that the texts they were using in China were corrupted, and the one place he could go to the source of all learning was Nalanda. And he goes as a Buddhist monk, and Nalanda, we should recognize, is a Buddhist monastery and is primarily a Buddhist institution, but he also accessed non-Buddhist information. Yes. And he is very clear that you can study a whole variety of subjects there, which have nothing to do with Buddhism at all. Correct. So the university was very eclectic, despite being a Buddhist university. Sometimes you read accounts of Nalanda that almost omit the Buddhism. It was a Buddhist institution, and we should foreground that. But it was a Buddhist institution that took in non-Buddhists and taught non-Buddhist subjects. So how much of a role did Nalanda actually play in the development of these Indic systems of knowledge? Because after all, it comes at a period which is a little later than many date the development of, these developments much earlier. And what kind of role did it play in dissemination and propagation? So the impression we get is that the great advances in mathematics precede Nalanda. So Brahmagupta and Aryabhatta are a couple of hundred years before Nalanda really gets going. There is a very early institution in London, but it doesn't become the great university that everyone is looking for, really until the 3rd, 4th, and particularly 5th and 6th centuries AD, CE. And the most detailed accounts we have of it and its centrality are by Korean, Japanese, and Chinese Buddhist monks who regard it as the last word in Buddhist studies. But all of them are emphasized that you can study things like mathematics there, you can study magic there, you can study a whole variety of other subjects which are not directly relevant to your life as a Buddhist monk. But because Buddhist monks were very good at writing travel accounts, and there was a whole tradition of this, we know it mainly through the lens of these foreign travelers. Of these foreign Buddhist monks. Which are the other accounts, apart from the famous ones of Fashen and Xuanzang? So there's Yijing, a very important one, who's a little bit later. And Yijing's interesting, because by the time Yijing is going to Nalanda, he goes through Sumatra, then the thalassocracy of Sri Vijaya. And so thoroughly Indianized had Indonesia come by this point. I mean, Sumatra is a place that most people are pretty unfamiliar with. I've just actually come back from there because I became interested writing this book. It was the one major place, really, that I didn't visit in the course of writing it, and I've now visited it. And there are hundreds of Buddhist monasteries there, and this is what Yijing says. Yijing says that if you're coming from China, you now no longer need to risk the pirates of the Bay of Bengal, or that you can just go to Sumatra, which is only 5 weeks sailing from Guangzhou. You don't need to do the whole thing of going up the Gangetic Valley. I mean, Xuanzang has a rough time. He gets captured by pirates, he nearly gets sacrificed, he twice gets robbed. So, it wasn't a thing you undertook lightly. Correct. And by the time Yijing is around, which is the 7th century, you could access at least
you couldn't get the library, obviously, that you had in Nalanda, but you could get a lot of, you could learn Sanskrit, which is something that the Chinese monks were very keen to do and couldn't do in China. So for Sanskrit lessons, they went halfway to Sumatra. They learned Sanskrit in Sumatra. Yeah. Fantastic. From the 7th century onwards. Yeah. So there's you do point out in the book that there's a huge footprint of India in all these countries of Southeast Asia, East Asia. But there is very little backflow. There is very little footprint of these countries in India, and the only accounts that you find are in donations made to Nalanda, for instance, by some people from these countries to support the scholars who came there. I don't know how many of you have been, hands up, how many people have been to the extraordinary exhibition at Ladu Sarai of the Buddha's relics? Put your hands up. So half of you have not. And among the amazing things that you could all go and see today, because it's open until 8 o'clock at night, and I strongly recommend, I don't know how many months it's up for, but it's one of the greatest exhibitions of early Indian learning, sculpture, history and spirituality that's ever been put up in this exhibition. In this city, and I strongly recommend everybody to go. Among the exhibits there is this copper plate from Nalanda, which records, and it's a very modern document in many ways. It records the setting up in Nalanda of a college for expatriate Srivijayans. So just like you can go to Harvard today, and you can find the Mahindra Humanities Center, which Mr. Mahindra, with his profits from all the Jeeps that we've all bought, has set up at Harvard as a center for humanities. So in the 7th century, you could go to Nalanda, and if you were an Indonesian, you'd have your own little college with its own endowment. 100 villages he gives in order to... Rather massive endowment. A big endowment. A substantial endowment. Yeah. And it's a measure that, though we only have 3 or 4 travel accounts, there were clearly hundreds of monks by the 6th and 7th century coming on this journey to access, particularly the library. And it is the library which is the thing that blows Xuanzang's mind. Xuanzang well, there are 2 accounts. There's Xuanzang's own account, which he writes immediately on his return. And then there's a slightly more mythologized version by his biographer. I see. And his biographer is the one that gives the physical description of Nalanda. We have the best description of it in its peak from Huai, who is his biographer. And he describes the library being in 3 divisions. Yes. And 9 stories tall. And he says that anyone can borrow any manuscript, but they have to leave it in a pigeonhole in the central courtyard in the evening. So they're allowed, anyone is allowed to access it. And so only for the day. Only for the day. I think, you can imagine Xuanzang getting up very, very early to copy these things out and then put them neatly into its little pigeonhole. And if you go to these in London, you still see some of these little cavities, which maybe were the place where people put these great manuscripts. Works. Yes, absolutely. It's a fascinating place, and I do advise that everybody should go to visit. Really easy again. I mean, it's an hour's flight. Indigo fly every day. You can just fly to Bodh Gaya and just Rajgir, and there you are. But Nalanda, you have also asserted, I think, several times, that only a small percentage of the actual university has been excavated so far. This is a very larger percentage is not excavated yet. So what we've got is a succession of 8 courtyards, which looks very like Oxford High Street. If you go to Oxford High Street, you see there's Balliol, Univ, Queen's, All Souls, and then Christ Church, all in a row with these courtyards. Nalanda has exactly that plan. Same layout. And there's a road, and then there's these courtyards lining it all the way up, each with scholars' rooms around the courtyards. That's right. And wells and tanks in between. Water supply. Exactly. And so you get the impression that this was the heart of it. But I think as little as 20% of Nalanda is excavated. 80% remains to be. So you can imagine how massive it was, because the ruins as they are, what you can see is massive enough. Yeah. But imagine another 80% of this, which is still lying buried. And the shocking thing to me is that, I mean, it seems to me that you have in Nalanda the ultimate symbol and representation of Indian soft power.
Why has money not been available? We've had every airport in this country redone with government money in the last... Why has money not been available to excavate the rest of it? Why is this site museum shockingly old-fashioned with dusty cabinets, tiny bad strip lights? It's a really tatty site museum. You'd have thought that any nation that had something that had been so influential, so important, that reflected so well on their reputation in antiquity, would devote huge sums of money to boasting about this, to building an extraordinary visitor center, and you go somewhere, even a country like a medium-sized power like Turkey, you go now to provincial cities, and Erdogan has put out money for huge museums in provincial cities, which are brand new, sparkling with television screens and beautiful lighting, absolutely state-of-the-art. Why is Nalanda, which is the best advertisement imaginable for the power, the brilliance, the intellectual might of ancient India, why has that been left neglected with a positively fourth-rate museum at the moment? I'm sure things are going to change. I think much of it may be attributed to your book, which has really drawn attention in a very spectacular way to something we've all known, but somehow have not paid as much attention to as we could have in the past. One final question before we wind up, and maybe ask one or two questions from the audience if we have a little time. Although there's the famous instance of Bakhtiar Khilji sacking the university, burning the library, which was the treasure house. But you have also implied, and others have also implied, that by the time this happened, actually the university was in serious decline by itself due to internal factors. Yes, the popular version of the end of Nalanda is not right. It's a more complicated story, as history usually is. The first thing is that the archaeologists who've dug the 20% that has been dug have found multiple layers of burning. And Xuanzang himself prophesied... Which means it was burned several times by several different people. And from an early period. And Xuanzang, in his own account, or is it his biographer, but one of the, Huli, I think, makes a prophecy in Xuanzang's voice that he's divinely prompted to leave Nalanda before a disaster comes. Another raid. Another raid. So while ancient India was every bit as brilliant and as world-dominating as we want it to be, you don't have to invent anything there to... What it isn't is as peaceful and as sort of halcyon. The world is a violent place throughout history, and Nalanda clearly was burnt on a number of occasions, long before the rise of Islam in any way. The other thing that's wrong is that we always attribute Bakhtiar Kaki. He definitely raided Bihar, he definitely destroyed monasteries. The scholarly opinion at the moment seems to be that the famous account we have is not actually Nalanda, it's one of the other, Odantapura, another Bihari monastery. But there's no question that it is burnt. Yes. And two things to say. First of all, that quite a lot of the manuscripts are evacuated first and made their way to Tibet because people were aware. Remember, Delhi and Lahore had gone down earlier. And so people realized that the threat was imminent. So various monks make a point of getting the crucial manuscripts out to Tibet, where some of them have survived. They have survived, and in fact, much research needs to be done still on those surviving manuscripts from Tibet. That's the first thing. And the second thing is that something survived in Nalanda, because as late as the time of Kublai Khan, which is 1270s, he is made emperor by a Buddhist monk who'd studied in Nalanda. So we have several references. So, I mean, it was obviously on a diminished scale. It wasn't at all the big deal it had been in the 6th and 7th century at its peak. But it wasn't completely destroyed. We have several other inscriptions and references to something continuing and monks carrying on maybe in the ruins, respecting this site which had been so important and central for so many centuries. But without doubt, say from the 2nd or 3rd century BC,
before the Common Era and till about the 5th or 6th century. In the Common Era, you would say that this was the greatest center of learning on the planet? Would you say that? So the rival is, of course, the Library of Alexandria. Yeah. And we don't have anyone who visited both to compare the two. But I think the Library of Alexandria was probably destroyed by Christian monks in the 3rd century, which is when Nalanda's just getting into its stride. So yes. From the 3rd century on, unequivocally, definitely. The greatest center of learning, or collection of learning, the greatest library on the planet. Thank you very much, William. May I just see if there is time for a few questions? Because I'm sure everybody would be eager to ask you a few questions on this very, very popular work. Do we have time? Since nobody's refused, we do. Any questions, please? Would you like to raise your hands? Yes? The lady there. Yes, please. We'll have a mic across to you. Yeah. Could you identify yourself and... Yes, hi. My name is Varanya. I'm sorry, it's a Hello. Hi, it's a very quick and silly one, actually. You mentioned there's a very good exhibition here that we can go see. What was that again? So this summer, some relics of the Buddha from the Piprawa stupa came up on the market. And Nama Nahuja, the professor of art history at JNU, alerted the government to the fact that this was on sale. And an extraordinary and unprecedented public-private collaboration took place, and Pircha Godrej of the Godrej family paid to buy the relics. And they've come now, and for a period there he's donating them for to public display. I can't remember, for 5 years or something. And so they are now the center of a really remarkable exhibition, which, if you can Google it, the Piprawa relics in Ladusserai. Yeah. It's a new exhibition space which has been renovated specially with extraordinary speed. And a bunch of very bright young scholars from the National Museum have made a bespoke exhibition that's one of the best exhibited, exactly what Nalanda needs and what isn't yet built there. And it's free. It's open till 8 at night, and it won't be open for much longer. So take the opportunity to go. It's a fabulous exhibition. Yes, Maheshji. Mike, please. Just 1 minute. I'll just do a question, and then we'll give to this gentleman. William. Wave your hand. I can't see you. I'm here. We'll come, Maheshji, after, just after, since he has the mic already. I've got the mic already. William, have you visited Ayodhya in Thailand? And if so, to me, when I go, because I've spent a lot of time there too, the ruins in Nalanda and in Ayodhya are ditto. The only thing I noticed that was different is in the ruins they proclaim in Nalanda that there's also a Hindu temple. So it's we have now very tight divisions in our mind between Hindu and Buddhist, which did not exist at the time. Many, many Buddhist monasteries have Hindu chapels. For example, a newly excavated one in Afghanistan was a place called Mezainak that was a major center for Chinese scholars on their way to Nalanda, stopping off. That has a huge Durga temple right in the middle of it, in a complex that is definitely a Buddhist monastery. And there are many sites in Southeast Asia where there's an even closer relationship. And one of the Thai holy caves has a picture of the Buddha preaching to Lord Shiva, which I've never seen in this country, which is very nice. So yes, there's the other important thing I think to say about Ayodhya is it is, of course, Ayodhya. I mean, it's worth making that point, that not only did Buddhism and Hinduism and Buddhist learning and Hindu learning go over, but the names go to Southeast Asia too. So there's another Kurukshetra in Laos. There is, most obviously, the main river running through Southeast Asia is called Marganga, or as it's pronounced in Khmer, Mekong. Mekong is Marganga. So and if you go to the Hill of Lychees, as it's called by the Cambodians, where the Mekong originates, the source of the Mekong, someone has carved into the bank
Yonis and Lingams Yonis and under Lingams, the right. riverbank. Yeah. In order to sacralize. So the idea is that the Ganga doesn't just, it comes out from heaven, it passes through here, but it reappears in the other side of the Bay of Bengal and sacralizes that whole land. So there becomes an idea, we have in our heads very clearly that we are in a sacred land here with a network of tirthas and Shakti Peeths and so on, which define Bharat, define ancient India. But we don't have so clearly in our head the fact that that continued the other side of the Bay of Bengal with further Kurukshetras, further Gangas, further Ayodhyas. Yeah. And the important fact that the Thai kings, although Buddhist, their official title is Ram. And don't forget. And they have pundits from Kanchipur. Yes, and all their ceremonies are conducted in Sanskrit. Yeah. The anointing of the kings. It's astonishing. This is as surprising as it should be, because I was surprised when this book came out that so many Indians were surprised by what it had, because it shouldn't be surprising, because this should be well known. That's right, Mr. Mahesh. William, do you think that the Europeans have helped us to rediscover our civilization and culture? Some of the most well-known books on Indian civilization and culture, they have been written by Europeans. Max Muller, William Jones, A.L. Bhasham, so many of them, Ashoka. And my second question is, the longest surviving university in the world is the Al-Azhar in Egypt. So why is it surviving for such a long time when the universities have gone down, burnt? These are my two questions. Okay. What was the first question again? That do you think the Europeans have helped us to rediscover our civilization and culture? The European scholars. So it's a mixed picture with Europe. There's a chronology to it. In the 18th century, Europeans had a much more open-minded attitude to other religions and other civilizations than they did a century later in the 19th century during the Victorian period. So you get characters during that time like Sir William Jones, who are classically educated and have spent their time at Oxford and Cambridge studying Zeus and Jupiter and the Iliad and the Odyssey. And they come to India and discover that the Mahabharata and the Ramayana and Lord Shiva and Lord Vishnu are first cousins of that. And you get the excitement of people like William Jones. The last of those Brits, before the shutters come down with Macaulay, is my forebear James Prinsep, who translates the Ashoka Brahmi script. And he then actually goes into battle with Macaulay. His brother is called Henry Toby Prinsep, and he have literally a town hall, what in the States they call a town hall. In Calcutta Town Hall, they have a debate because government money is being used to translate these Sanskrit classics in the 18th century. And Macaulay, who is the very epitome of Victorian bigotry, famously argues, and this terrible quote, that a single shelf of a good English library is worth more than the entire learning of India and Arabia. And I'm ashamed to say that the Princeps lose that debate. Macaulay is triumphant in 1825, I think. And the shutters come down, and people cease to respect this learning. It moves to Germany. That's why Max Muller is important, although he starts off in Oxford. And it's only really in the 20th century that we get a rediscovery of the value of Indian learning. And I think today, as India rises, its reputation will continue to increase in the same way that the Chinese have managed to put across, within only the last 40 years, the idea of the Silk Road. And the idea that all these ideas of porcelain and gunpowder and printing and books passed from China to the West. India, I'm sure, as it rises up, will be attributed as a reflection of its increasing power and footprint as the source of much that's been forgotten. And you know, it is completely forgotten in the West. Yeah, and preceding the Chinese Silk Road, or so-called Silk Road,
this period was much earlier. The Indian influence was much earlier. The great age of the Silk Road is Right. really the Mongol period in the 13th century. I think one last question there. Sorry, you had a second part, yes? Al-Azhar. Yes, Why it it's is. continuing. Sorry, so we'll I come think to you. it's actually one in Morocco that is supposed to be the oldest functioning, older than Al-Azhar. There's one college, I may be wrong about this, but I think but it's the same sort of period. Yes, there's Islamic University, which is older than anything in Oxford or Paris or Bologna Italy. or Salerno. Yeah. Yes. Sorry. This lady was. Yeah. Okay, first of all, thank you, Mr. William and Mr. Tandon, for such a wonderful session. It was very informative and we learned many new things, especially me. My question is that I was learning that you talked about that after the massive fire in Nalanda, some of the manuscript has gone to Tibet, right? Before. And how we can access to that? Like if I would like to know about it and I want to learn for my own research work, how can I access to that work now? So some of them have now gone from Tibet into Western collections. So some of the very earliest Indian manuscripts went from Nalanda to Tibet, and now from Tibet into the Met Museum, for example, or so on. Because Tibet has obviously been under assault from the Chinese, and many of the monasteries were destroyed in the 1950s and 1960s and the Cultural Revolution. But some have been smuggled out. And there are good, you just have to Google it actually, you will find, or if you want to go to a written source, B.N. Goswami's wonderful Masters of Indian Art, which is a 2-volume book that I'm sure is in the IIC library, and is the great summary of where we stand on Indian art history now. That begins with Nalanda manuscripts, and you can find in volume 1, right at the opening, lots of pictures of and they're palm leaf, they're thin, that sort of size, often with beautiful paintings. Thank you so much. Thank you very much indeed, William. That was a wonderful session, brief though it was, and we could have gone on for hours, I know. But thank you so much for being here. आप श्रीमान गंगा और श्रीमती गंगा आ जाइए फैसिलिटेशन के लिए. आपको मालूम है ना क्या परंपरा होते हैं हिंदुस्तान में? और जब ये हो रहा है ना, आप एक चीज याद रखिए ना, कभी विदेश जाना है 3 जगह जाना है, अयोध्या, सुकोथाई थाईलैंड में और अंकोर वाट. तब आप विलियम को जो समझा रहा है ना, आप समझ जाएंगे. नालंदा इतना महत्वपूर्ण है और वो सब छोटा छोटा कितना सुंदर से बनाया. और हर एक विदेशी जब नालंदा जाता है 3 जाता है थाईलैंड, वहाँ अयोध्या देखने के लिए ना. अब हम लोग को यहाँ को जगाना है ना. धन्यवाद. हो गया. अब चलिए नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है. और ये है थोड़ा लेट चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं. दिल्ली नालंदा डिक्लेरेशन सेशन. और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और हम लोग को सबसे प्राण प्रिय पद्मश्री डॉक्टर सुनील मानसिंह विभूषण, माफ कीजिए उच्चारण, हाँ पद्म विभूषण, हाँ मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है.
उम्र बढ़ गया ना, आँख इतना तेज नहीं है। तो आप जब तैयार है डॉक्टर सनाल मन सिंह जी, आप स्टेज पर आइए। उसके बाद डॉक्टर पंकज केपी श्रेष्ठ, आप भी आ जाइए स्टेज पर। आलिया मैम, आप भी आइए स्टेज पर, और सोनिया मैम को भी लेके आइए। अच्छा, यहाँ भी काफ़ी खास आदमी है, पूरा दिल्ली का संस्कृति देखता है, डॉक्टर के महेश, आप भी पढ़ाइए ऊपर में। और आज का जो मॉडरेटर है ना, ये है श्री संजय कुमार, सब तो उनको जानता है, सारा काम तो वही खाता है। आप भी ऊपर आइए और मॉडरेट कीजिए। और ये संक्षिप्त वाला थोड़ा सेशन है ना, सब तैयारी हो रहा है। और मैंने तो गया है ना अयोध्या, सुकोठाई और एंकरवॉट, और कमाल का जगह है। कमाल इसलिए सुविधा बनाया है, नालंदा में बहुत काम बाकी है। हेलो। 2 दिनों के 11 सेशन और कई सारे स्कॉलर, डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट, कल्चर लीडर, सबको आपने सुना। अब ये जो नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल की जो यात्रा 2025 से शुरू हुआ था, जो कि 6 सिटीज से होते हुए कोलकाता, कालीकट, मुंबई, पटना, दिल्ली और गुवाहाटी में कर्टन रेजर और इसका फंक्शन हुआ, और जो कि जाके मर्ज हुआ 21 से 24 दिसंबर 2025 को राजगीर में। और उस भव्य आयोजन के बाद ये मैंने जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरपर्सन सोनल मैम हैं, सारे लोगों ने मिलकर किया कि 2 साल के बाद पुनः राजगीर में हम लोग मिलेंगे, और उस यात्रा में हम 12 अलग अलग सिटीज में अलग अलग इसी तरह के इवेंट को करेंगे। उसी श्रृंखला का पहला कार्यक्रम जो आज दिल्ली में हो रहा है, जो आज संपन्न होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये 12 सिटीज में हम करेंगे। उसके बाद फिर इंटरनेशनल भी 2 इवेंट हमारे होंगे, और इनको करने के बाद अक्टूबर में पुनः 2027 में राजगीर का वो महासम्मेलन, महाकुंभ नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल होगा। 2 दिन का जो सम्मेलन हुआ, 2 दिन का जो दिल्ली नालंदा डायलॉग 2026 संपन्न हुआ, उसमें करीब 11 सेशन हुए। 11 सेशन का डिटेल डॉक्यूमेंट हम प्रस्तुत करेंगे, वह डिटेल डॉक्यूमेंट आएगा। लेकिन उसके टेकअवे क्या रहे हैं, जो सेशन रहा है उसमें हमने बहुत स्कॉलर ने जो चर्चा यहाँ पे किया, जो डिस्कशंस किया है, उसमें हमें बहुत कुछ लेने के लिए है। कुछ चीज़ें सरकार को निर्णय लेना है, कुछ चीज़ सोसाइटी को निर्णय लेना है, और कई सारे सजेशन और कई सारे जो ब्रेनस्टॉर्म हुए हैं, उसमें नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के मैनेजिंग कमेटी को भी लेना है। तो आज ये सेशन इसके लिए है कि हम आपके समक्ष ये जो 11 सेशन में जो चर्चाएं हमने की है, उस सेशन से
अलग अलग विषयों पे हम क्या आगे देखते हैं और आपके एक्सपेक्टेशन पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या करती है, सोसाइटी तक किन चीज़ों को पहुंचाती है, रिसर्च किस तरह का करती है, रोजगार के किस तरह के अवसर पैदा करेंगे, ये तमाम चीज़ों पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो 11 सेशन का बहुत ही प्रिसाइज जो एक प्रेजेंटेशन है भी कभी करेंगे। बस Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my honor to be here today to help with the closing off of this particular wonderful Litfest and the discourses that have been delivered by so many erudite scholars, professors, people within the government, and so on. So when we talk about what happened over the last 2 days, from my perspective, I've seen a huge variety of stories, some exciting arguments taking place, some very interesting outcomes taking place. And so what I'd like to talk about today is, if you like, a summary of what we've seen over the last 2 days. So do we have someone with the pointer? So without delay, this is what we call the Delhi Nalanda Declaration. And so the declaration is all about what were the achievable and projected outcomes of this event. Okay, that's forward. It's on now? Yes. Okay. So thank you for your patience. Now, the theme of our Nalanda Literature Festival is the 3 L's: legacy, language, and literature. And we've covered all 3 of those amply in the last 2 days in this particular feature. So we're encouraging, if you like, the integration of governance and culture, the strengthening of Delhi's cultural leadership, the promotion of India's knowledge base and depth of culture, the traditions, youth engagement, academic collaboration, and cultural diplomacy. So those are the kind of topics that we're achieving the outcomes. These are the outcomes we want. And what we saw over the last 2 days demonstrates how aptly that has been addressed. Okay, so in the first session that we had yesterday, we covered the concept of governance and civilizational wisdom. I think one of the key takeaway points was the comment, Vikas ki saath virasat. Another of the key points that I felt resonated was the focus on the present, as in we target the present. However, do not forget the past. The past is extremely relevant in driving how we make our decisions in the present. And thirdly, the point was there must be a foundational basis or a foundational emphasis in how we're delivering education and the knowledge from the past into the present context. So in other words, foundational meaning, let's start with the small chota bachas and work upwards. So the foundational basis is very important. In the second session, we talked about civilizational knowledge and India's governance ethos. Both are very similar with a slightly different angle, and so many of the concepts were covered again in the second session. However, one of the key points I found was that more flexibility and freedom is needed in governance, especially at the delivery end where the teachers are delivering the knowledge to the students. More flexibility and less rigidity in the curriculum.
Another key point was to close the gaps between the decision makers, between the policy makers and those that deliver the education. Closing that gap, because there seems to be some disparity in thinking there. And the third point was more of an emphasis on collaborative governance. In other words, governance not being imposed upon people, but a collaboration of thinking, which can include the youth, include the middle management, include the universities and colleges, and include the government instrumentalities. So those were three important session outcomes in session 2. Session number 3, we then move on to the culture, diplomacy, and India's soft power. One of the key points that came out of that was the helpfulness of multilingualism. Multilingualism being a celebration of the local languages, and here at Nalanda Litfest, we are very much focused on promoting regional languages. However, along with that is the importance of addressing world language, for example, like English, and maintaining a strong Hindi language as well. So all in all, the multiplicity and the multiple use of language is a key strengthening factor. And here in India, most people are at least bilingual. That's wonderful. I come from a country, Australia, where basically we only speak one language, and that's English. So those people that are speaking 2 or more languages, I think, are smarter than most Aussies. Having said that, one of the interesting arguments, and it was hotly debated in session 3, was the perspective on the use of soft power and the importance of hard power, supporting, or if you like, pushing along soft power. That's a very controversial debate, and it was quite interesting. Sparks flew during that time. Another point was the value of scholarship in terms of promoting the opportunities for people to learn who come from perhaps economically challenged backgrounds. They should also have a chance, especially if they're academically brilliant. Why not give them scholarships? And of course, the value of books. While everyone seems to have their face today in mobile phones, the beauty of having a hardcover book and flipping through the pages at your own will, the dust that comes up from an old book, all these things are cherishable moments. I love reading from books. I don't like reading from tablets. That's a personal choice. But it seemed to me that there's a common refrain amongst educators. The written word, the book, is still as relevant today as it ever was. Then we move to session number 4, Roots to Roots, the diaspora and cultural identity. This was interesting because several people on the dais spoke of the importance of recognizing the diaspora, the Indian diaspora, who live abroad. There may be multiple generations living abroad, and from Mauritius, for example, from South Africa, from Fiji, and so on. So the importance of recognizing that even abroad, Indians maintain cultural value and cultural heritage. And so that was a very interesting point that came up, and a very valuable point, I thought. The linkages of India and Africa was another point that was raised by the High Commissioner from South Africa, the High Commissioner to India. And so he was stressing on the fact that let's not forget there's lots of Indian people living in South Africa who may, after 5, 6, or 7 generations, may feel a little bit dispossessed. They should be brought in and allowed to come back in the fold and be recognized as part of the greater Indian community. That was very lovely. One of the other perspectives that was raised was the importance of building international and domestic bridges in terms of making sure that the culture and the wisdom of India is understood abroad, and it builds bridges and better understanding intercommunally. Session number 5 dealt with youth issues. In fact, probably session 5 and session 6, there was a bit of an overlap there, but the youth innovation and cultural leadership is important. Encouraging
the Gen X, the Gen Y, the Gen Z, to embrace the beautiful culture that belongs to India, promote it, learn it, and honour it. So in that particular session, several contemporary issues that are affecting youth of today were raised. Another issue is, what about the expressions of youth? Youth are using AI and are using multimedia as a method of expression, much more than perhaps we did amongst our age group. So their expression through multimedia is very different than how, if you like, the majority of us dinosaurs handle it. Session 6, Indian languages and knowledge preservation. Again, the importance of regional language was stressed. We should not forget our cultural roots, no matter which part of the country we're from. That should be honoured and nurtured in the context of being relevant for the entire country. There was also a comment on the prejudicial emphasis on languages, for example, where some institutions might favour a language like English, for example, over and above honouring the local languages. The local languages are an important part of the cultural diversity of this country, and they should not be steamrolled by one master language. And that was a key point that came out in our session number 6. One of the comments I'd like to make about the first day was there were a couple of occasions where the moderation needed a little bit more of a sterner hand. And sometimes the arguments became quite hotly debated, and some of the speeches went a little longer than they should have. In that sense, look, that's all part of a healthy debate, but the moderation exercise perhaps needs to have a little bit of tweaking to make sure that timeliness is there. In session number 8, the language of wisdom, decoding Nalanda through Gyan Bharatam. I thought, for me, that was my most favourite session. The discussions were erudite, were very clear. For example, as Dr. Siddharth spoke of, the languages of architectural context, the wisdom and Buddhism. Did I forget to change that? There's one more I've got to do. Okay. So I thought that his speech was particularly poignant. The architectural and historical context of what was happening in Nalanda and the changes of the mores and the values over the hundreds of years that Nalanda University was active. So there were many changes. We can't rely on one narrative of one period. We have to look at the context of the entire 500, 600, 700 years. And the variety of secular and spiritual sciences that were covered at the Nalanda University. Very interesting. It wasn't just Buddhism. There were other languages, cultures, diversity included in that. Then we talk about the last 2 sessions, the AI knowledge system and future learning. Well, I think it's a no-brainer. Everybody in this room understands the value of AI if it's used as a tool and not as a toy. In a historical context, AI can be used in order to bring in all the knowledge of the past, the wisdom of the ancients, and have it at our fingertips for our future. So AI has a very important part to play to codify and to pull that knowledge base together. So that's going to be an interesting exercise over the next 20, 30 years as all the documents we're getting regarding what was held in the monastery, held at Nalanda University, all that document, once that's all translated and once that's all codified and put on AI, this will be a wonderful resource for our researchers. Another key point was, and I was surprised to learn there's 3.9 million students at IGNOU.
So IGNOU has really positioned itself very well in terms of mass delivery and also the utilization of AI to do that. Great. I think that deserves an applause. And lastly, the golden pathway. It's always very valuable to sit with someone so erudite as William Dalrymple. His work in researching the history of India is absolutely amazing. I have his books, I've read them, and I honour the man for his knowledge. So he gave us a very, very lovely discourse this afternoon, very knowledgeable and very relevant. So that was a very nice closing off of all the sessions. So on that note, I think the biggest round of applause goes to the people sitting here who are the energy behind this entire program. And I would hope that today marks a really wonderful birthday for Gangaji, having successfully pulled off yet another Nalanda Litfest. Yes! So thank you so much. Namaskar. Yeah, thank you, Big. मैं अब कुमार महेश जो कि सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर दिल्ली गवर्नमेंट में हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे आपने 11 सेशन में देखा और बिक ने बहुत ही प्रिसाइजली सबको बताया भी, लेकिन आप स्पेशली कि ये जो नालंदा दिल्ली डायलॉग 2026 हुआ, उसके डिक्लेरेशंस में जो गवर्नेंस का इशूज़ था, जो सॉफ्ट पावर था और कल्चरल डिप्लोमेसी, इन तीनों विषय पर फोकस करते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप उस पर बात करें कि क्या ठोस कदम सरकार को, सिविल सोसाइटीज़ को, दिल्ली सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? Thank you, Sanjay ji. Thank you, Sanjay ji. First of all, congratulations to Ganga ji and his better half. To me, this Delhi dialogue represents civilization and culture. Nalanda represents civilization and culture. Delhi represents civilization and culture. And the beauty of this dialogue is the fusion of these two civilization and culture, Delhi and Nalanda, under the able cultural leadership of Dr. Sonal Mansingh, our living legend in culture, as I always say. But we must take it forward. How we can take it forward? You talked about cultural diplomacy, the soft power we talked about. Now Bhojpuri is spoken in 12 countries in the world. Yet Bhojpuri does not find a place in the scheduled languages. We have a schedule, but we don't find Bhojpuri in that schedule. So there's a lot to be done. And we can use Bhojpuri as part of a cultural diplomacy when India has assumed an important and critical role in South diplomacy. That's point number one. Number two, I would like to speak about how we can contribute, how we can collaborate. Let's look at Gyan Bharatam. Now, Gyan Bharatam started, it's a great project on the Manuscript. In Delhi, we were doing it. We are still doing it. So you get Manuscript from the private parties and from the government. So we have a list from the government. But to getting this Manuscript from the private individuals, citizens, that's a huge task, which we are doing it, by the way. But here, our Nalanda Delhi dialogue can act in a big way to support that, look, the private parties themselves should support the government in trying to give their Manuscript. They don't have to physically deliver it. We'll be sending our research scholars who will take pictures. And the government is supporting in a big way, by the way. And it's a win-win situation in terms of even if some scholar later on wants to use that, he'll be contributing a small amount. That is point number two. Third is, what I wanted to just say that, look, you talk about culture, art, please understand. These are, if I put it moderately, these are the activities undertaken by the elite of any society in the world. I repeat, it's the elite, because you need leisure.
When do you have leisure to write? When do you have leisure to dance? When do you have the leisure to sing? It's only when you have resources in abundance. You have money, you have education. Now, how to take this culture? I'm talking about the massification of culture. How do you take it to the poor people of this country? And here the Delhi Nalanda Dialogue has made great efforts. I must say, hats off to them. They are taking it to 12 other cities, but why not go down to tier 3 cities as well? To me, everybody is born equal. Everybody has talent. Everybody has intelligence. I think it's how you nurture. What opportunities do you provide? That's point number 3 I just wanted to highlight. The last point, I talked about gazetteers. We have the Honorable Chief Secretary of Bihar here, very distinguished civil servant. And I did flag this issue that we stopped writing our gazetteers. Now, how can, these gazetteers were a mine of information which became the basis for governance for the Britishers. We continued writing our gazetteers post-independent India, but we stopped somewhere. So how can our Delhi Nalanda Dialogue contribute? This could be a collaborative effort to start with Nalanda district itself, and how we can make it as a model gazetteer for the country. These are the 4 points I would like to flag and later on take on other issues. Thank you very much. थैंक यू महेश जी, आपने ठीक ही कहा कि इंडिया के पास कई सारे सॉफ्ट पावर हैं, कल्चर जो इसका है, जो बोलियां हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, इसके फिल्म हैं, सारी चीज़ें सॉफ्ट पावर हैं। और गजेटियर की बात आपने इनॉग्रल सेशन में भी किया था। डेफिनेटली इस पे आपने जो कहा है कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल बना करके उसको रिप्लिकेट किया जाए और टायर 3 और 4 सिटीज में भी नालंदा डायलॉग को पहुंचना चाहिए। आलिया जी, आपसे मेरा ये है कि आप युवाओं को बहुत एड्रेस करती हैं और आईटी के प्रति बहुत ज़्यादा आपका आईटी सेवी है। हम इस लिटरेचर में 2 जो यूथ के पास जो आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ऐसे समय में लिटरेचर फेस्टिवल उसको कैसे कनेक्ट कर सकता है और युवाओं में किस तरह की चीज़ को आप देखती हैं? और आईटी जो एआई और लिटरेचर्स का जो किस तरह से हो सकता है, उसमें क्या किस तरह का हम कदम उठा सकते हैं, किस तरह की घोषणा हम करते हैं इस सेशन के अंतिम सत्र में? पहले तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ और सारे लोगों को धन्यवाद। हमारी पद्म विभूषण सोनल मान सिंह, हमारे डॉक्टर के महेश जो ये स्टेज पे हैं, संजय जी, गंगा जी, हमारे विक, और हमारी इतनी डेलीगेट्स ऑडियंस और इतना पेशेंस वाली और इतनी एनर्जेटिक, इतने अच्छे लोग हैं आप और इतना आपको इच्छुक है लिटरेचर में, एआई में, आज की चीज़ों में। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जानकर कि इतना हमारे आज की यूथ में इतना पैशन है, पहले ये नहीं था। आज जो बढ़ रही है चीज़ें, हमारा जो 3L है, लैंग्वेज, लिगेसी, लिटरेचर, ये जो तुम्हारा 3L है, ये जो संभाल के रखने वाले हैं वो आप हैं। हम तो सिर्फ रास्ते हैं, संभालने वाला सिर्फ आप यूथ हो। आप बहुत अच्छे से इसको संभाल रहे हो और जब यहाँ पे इतना एनर्जेटिक, इतना पैशन से, जैसे मैं अपने वॉलंटियर को देखी और उनका पैशन देखा मैंने इस चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, फिर मैंने स्टूडेंट को देखा, इतना मुझे अच्छा फील हुआ कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो कहाँ जा रहा है। आने वाला जो हिंदुस्तान है, ये लोग रास्ता जो अपना रहे हैं बहुत आगे जाएगा। ये पहले नहीं था, जब हम बच्चे थे इस लेवल का नहीं थॉट था। और नालंदा लिटरेचर जो हमारा इसमें फेस्टिवल करने जा रहा है इन लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा जो इसका फोकस एरिया है वो यूथ ही है। और यूथ जो है उनको आज के टाइम के यूथ इतना कुछ मिल रहा है। ये 10-15 सालों में जो चीज़ें, टेक्नोलॉजी आई है, हम कहाँ से कहाँ, मुझे लग रहा है हमने 1000 साल ट्रैवल कर लिया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण, ये एआई टेक्नोलॉजी के कारण हम कहाँ, मतलब
कहाँ सोच पा रहे हैं हम ना प्राचीन नालंदा का, जैसे आज अमित जी के थ्रू हमने देखा और उसको बिल्कुल साक्षात हम उस तरह का देख रहे हैं, और उसको क्रिस्टलाइज करके छोटी छोटी चीज़ें जब पूरी बनाई जाएगी तो हमारे यूथ सोचो किस लेवल का उसको देख पाएंगे, किस लेवल का समझ पाएंगे। जो उस टाइम का ज्ञान था वो बिल्कुल आधुनिक ज्ञान है, सिमिलर है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो छोटे से क्लिप से समझ जाएंगे कि जो प्राचीन ज्ञान है वो बिल्कुल आधुनिक से ही तालमेल करता है, और उसको बहुत इजी से समझ पाएंगे। तो बस हम लोग आगे चलकर आपके लिए वो रास्ता क्रिएट कर रहे हैं। हमारा नालंदा लिटरेचर जो फेस्टिवल है वो आप यूथ लोग के लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। आप लोग जो लिटरेचर के शौकीन हैं, स्पेशल बच्चे लोग जो राइटिंग में जिनका स्किल है, जिनका बहुत सारे इसमें ऑथर बनने का स्किल है और वो बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश हैं, उसके लिए हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी लेके आ रहे हैं कि गांव का बच्चा भी देख सकता है उसमें, और एक अमेरिका लंदन में भी जो रह रहा है वो भी देख सकता है और उसको पढ़ सकता है, और उसकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी उस वजह से कि वो एक डिजिटल लाइब्रेरी से हम न्यूज़ लेटर लेके आ रहे हैं जो क्वार्टरली हम पब्लिकेशन करेंगे, ईयरली। हमारा बहुत बड़ा विज़न है। हम 15 इवेंट करने जा रहे हैं 26-27 में, और इस इवेंट में 13 नेशनल 2 इंटरनेशनल भी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे युवा हैं सिर्फ नेशनल लेवल पे इन्हें नहीं जोड़ने जा रहे हैं, हम इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है आज के ज़माने में, एआई के ज़माने में। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका में क्या हो रहा है और चाइना में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पूरे दुनिया के स्टूडेंट इसको जान समझ पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच संजय जी, बस मेरा इतना ही है, आप लोगों से और आगे आप बढ़ाएं। ऐड करना चाहेंगे महेश जी? हाँ हाँ बिल्कुल। Madam Alia has really, in fact, you have flagged some very important issues. I would just like to add about connecting with our youth. How do we connect a youth with our civilization and culture, which is so important? Now, this cannot be done when you are in your college and universities. This has to be done at the school level. In UK, there are 3 subjects which are compulsory. One is religion, second is history, and third is sex education. So it's very important we make these subjects compulsory in the school itself. And the manner in which you impart, the pedagogy which is adopted should be gender neutral, religion neutral, caste neutral, so that there's a lot of integration in learning. That's the point I just wanted to add. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद आलिया जी, आपका मार्गदर्शन और आपकी दूरदर्शी सोच के लिए कि आप किस किस तरह के प्लान और किस तरह की योजनाओं पे आगे चलना चाहती हैं और पूरा नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल को किस नक्शे कदम पे आगे लेके जाना चाहती हैं। सोनल मैम, जब आप हमेशा जब हम लोगों के बीच रहती हैं तो आप सारी दुनिया को, सारे भारत को संदेश देती हैं कि आनंद एक मूल बिंदु है, मूल केंद्र है, जिसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं और उसकी हमेशा बात करती हैं। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के इनॉग्रल इस नालंदा दिल्ली डायलॉग 26 के इनॉग्रल सेशन में आपने कहा था कि जब राजगीर जो केंद्र है वह कई धर्मों का केंद्र है, हम लोग कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, जैन है, बौद्ध हैं, वहाँ सिख हैं, इस्लाम है, सब कुछ है वहाँ पे। उसी श्रृंखला को जब आगे बढ़ाया गया तो ये चर्चा के दौरान आया कि जब नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें 5 तरह की धाराएं थी और उन 5 धाराओं के बीच वाद विवाद का बहुत ही स्वस्थ परंपरा था। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो मार्गदर्शन इनॉग्रल सेशन में किया था और हमने 2 दिन में उसी मार्गदर्शन के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते रहे, तो आप कहाँ तक संतुष्ट हैं और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं हम लोगों से, सोसाइटी से, यंग टीम से और सब लोगों से? धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि मैं कल के बाद किसी भी सेशन में नहीं रह सकी, क्योंकि मेरी अपनी और
पहले से तय किए हुए कमिटमेंट्स थे, लेकिन मैं बैठ के आराम से आपके वीडियोस देखूंगी, इसका मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। और महेश जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं, आलिया ने भी कहीं पूरा। अब मैं अपनी कुछ थोड़ी सी ये सोच रखना चाहती हूँ। पहले तो धर्म नहीं है, ये पंथ है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म पंथ है, धर्म सनातन है। तो इन शब्दों को, टर्मिनोलॉजीज़ को समझना, मुझे लगता है कि क्या छोटे क्या बड़े कोई भेद नहीं है, चाहे स्कूल है, कॉलेज में है, चाहे सरकारी अफसर हैं, चाहे कलाकार हैं, चाहे आप विद्वान हैं, लेकिन शब्दों का चयन और शब्दों का अर्थ इसी में आजकल बहुत गड़बड़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि नालंदा डायलॉग्स में इस बात को थोड़ा आगे हम बढ़ा सकते हैं। आप बार बार जो सॉफ्ट पावर करते हो ना, वो मेरे दिल को चोट पहुंचाती है। आप यदि कला, विद्या, संस्कृति को सॉफ्ट पावर समझते हो कोई भी, तो इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती है। इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर which has withstood, जिसने हजारों वर्षों से अनेक आक्रांताओं का भय झेला है, कार्रवाइयाँ झेली हैं, और फिर भी हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारी परंपराएं अक्षुण्ण खड़ी हैं। तो इसे आगे से हम यदि कहते हैं कि द सॉफ्ट बट द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर दैट मूव्स, सभ्यताओं को वो साथ में लेके चलता है। तो एक शब्दावली का फिर से मैं चयन ये कर रही हूँ। एक बात में और मेरे मन में आ रही थी कि नालंदा के समकालीन और भी जो, या उसके बाद वाली विक्रमशिला, ओदंतपुरी, वल्लभी, हाँ 9 थी, 9 विश्वविद्यालय, तो इनको भी जो सहन करना पड़ा, उनका भी जो, उनकी बर्बादियाँ हुई, somewhere we also can highlight, because आज नालंदा को इतना महत्व दिया गया, of course, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि हमारी ये जिम्मेवारी हो सकती है कि हम बाकी का भी वो करें, उनको लाएं साथ में, उनका दृष्टांत दें, उनका इतिहास दें। तो क्या होगा कि एक पूरा परिप्रेक्ष्य आएगा सामने, that you'll get an historical overview, and that is very important in the context of Indian history. और ये तो आपने हम सब ने, यानी आप तो मुझे श्रेय दे रहे हो और मैं लेने को तैयार हूँ। कोई भी श्रेय देता है मैं कभी मना नहीं करती हूँ, और कोई मुझे प्रेजेंट देता है, मैं हिंट दे रही हूँ, तो वो भी मैं कभी मना नहीं करती हूँ। ये मेरे दादाजी की सीख है, और ये बहुत एक सुंदर गंभीर बात उन्होंने मुझे बताई बहुत पहले, कि जब कोई कुछ आपको देता है और आप कहते नहीं नहीं जी रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह, दैट्स नेगेटिव। और उससे जो भी कुछ अच्छा आ रहा होता है वो भी टलने लगता है। दूसरी बात कि कोई आपको क्यों देगा। हाँ, ये अलग बात है कि महेश को कोई अलग दे दे या गंगा को कुछ अलग दे दे, वो अलग बात है। लेकिन एक उसके पीछे भाव होता है। उस भाव को यदि आप ठुकराते हैं तो आप उस व्यक्ति का ही नहीं, उस भाव का अनादर करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, इन्होंने मुझे श्रेय दिया है, थैंक यू वेरी मच। मैं तो साथ में हूँ पहले दिन से ही, और देख रही हूँ कि कैसे काम बढ़ रहा है, और बहुत ही एक सतर्कता से बढ़ रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको गिनना है कि हमने इतने
कर लिए, इवेंट कर लिए, इतने ये कर लिए. नो, ईच थिंग हैज़ अ बिगर एंड डीपर मीनिंग. मुझे एक ही डर लगता है कि चलो 26-27 का तो नक्शा खींच दिया, 28 में क्या करोगे? अभी से मुझे चिंता सता रही है, क्योंकि आपने इतना इसको सुंदर तरीके से आगे किया है. मुझे अब मैं आपको एक आखिरी ये कह के समाप्त करती हूँ. बीच में मुझे श्री रविंद्रनाथ ठाकुर का भी जिक्र करना था, क्योंकि कल उनकी 165वीं जन्म जयंती थी, 165th birth anniversary of Nobel Prize winner and of course writer of our national anthem, as well as the national anthem of Bangladesh, Sri Rabindranath Tagore. And we pay our heartfelt tributes. And Ganga says that please declare from next year, 9th May, will be celebrated every year by Nalanda Litfest as Gurudev Thakur's birth anniversary. तो एक जो आखिरी मेरा मुद्दा ये था कि आप बड़े ज्ञानी लोगों को बुलाते हैं, मैं थोड़ी डरती रहती हूँ. एक आनंद बैठे हैं सामने, डॉक्टर आनंद कुमार, ऐसे ऐसे भारी भरकम लोग जो हैं, लेकिन आप कलाकारों को भी जोड़िए एंड गेट देयर माइंड्स कि वो जो हम लोग नृत्य करते हैं वो भी साहित्य है. उस साहित्य की क्या महत्ता है, उस साहित्य में उन्होंने क्या पाया, यह कब का है, किसने लिखा, क्यों लिखा, विचार क्या है, एंड हाउ इज इट ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली इनटू वर्ड्स बट इन थ्री डायमेंशनल आर्ट. तो मुझे लगता है कि इस पे भी हम आगे काम कर सकते हैं. और बहुत 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 बधाइयाँ, अभिनंदन, और आप सबको बहुत शुभकामनाएं. आगे बढ़ते रहिए, फूलिए फलिए, ऐसे मत फलिए फूलिए, बट यहाँ फूलिए फलिए और खुश रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. आप उसका श्रेय लेने से आप जो भी आपको रहे, लेकिन हम लोग बहुत तहे दिल से समझते हैं कि आप ही के मार्गदर्शन में, और जब भी कुछ इसके निर्णय की संशय की स्थिति आती है तो आप ही के संपर्क से हम लोग इसका निदान पाते हैं. तो हम लोग हमेशा इसको महसूस करते हैं और दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं. आपका जो सजेशंस है कि शब्दों का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, कि पंथ और धर्म में जो अंतर आपने बताया ये रियली अप्रिशिएबल है, और हम लोग इसको आगे भी ख्याल रखेंगे. तीसरा जो सजेशन आपका था कि जो साहित्य के लोग आते हैं, कला के दूसरे स्ट्रीम के लोगों को भी इसमें बुलाया जाना चाहिए, तभी एक पूर्णता की तरफ हमारा नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल जा सकेगा. निश्चित रूप से मैडम, ये मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, और हम लोग इसका भविष्य में ख्याल भी करेंगे. अब जो बारी आती है कि गंगा कुमार जी, जिनसे शायद प्रश्नों की सीमा में बांध कर उनसे पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गंगा कुमार जी की पूरी पृष्ठभूमि में जिस मेहनत और मशक्क़त के साथ, जितना डेडिकेशन के साथ ये लगे हुए हैं और उसको ये पूरा करते हैं, तो एक प्रश्न पूछकर मैं इनकी पूरे पर्सनालिटी को बहुत छोटा नहीं करना चाहता हूँ, और गंगा जी से ये अपील करता हूँ कि आप 2 शब्द बोलें. एक जानकारी के लिए, गंगा जी का थोड़ा गला खराब है, बहुत ज़्यादा हम लोग से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन सीमाओं में जो कुछ भी कह सकते हैं. गंगा जी. धन्यवाद संजय जी. आज 2026-27 का दिल्ली नालंदा डायलॉग का ये अंतिम दिन है. और सबसे पहले मैम सोनल माँ को बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो 2 चीज़ बताया हमारा, कि केवल साहित्य बिना, केवल राइटर्स के अलावा जो परफॉर्मर्स है उनके बिना पूरा नहीं होगा. मैम सॉरी, इन चीज़ों को हमारे पास ध्यान नहीं आया था. अगली बार से हम लोग इसको रखेंगे. एक ये, हाँ, दूसरी 9 यूनिवर्सिटी जो अलग अलग थी उस समय में, तीसरी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्म दिवस के अवसर पे 9-10 मई को दिल्ली नालंदा डायलॉग हमेशा होगा. त्रिपुरारी सर हंस रहे, सॉरी सर आवाज़ बैठी हुई है. थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ हम क्यों करते हैं.
मैम ने जैसे कहा 26-27 में है, 28-29 में क्या होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैम अगर आदेश हो तो मैं 2-4 मिनट में इसको थोड़ा। 26-27 में हमारा 25 में था नालंदा एज ए रीजनल मैटर्स, लोकल लेवल पे हम क्या सोचते हैं। 27-28 का जो हमारा थीम है नालंदा इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इन नालंदा। इसमें से ऐसे कंट्रीज़ के लोगों का पार्टिसिपेशंस भी हम कर रहे हैं जो 28-29 का भी हमारे पास में थीम ऑलरेडी तैयार है, धर्मा एंड नालंदा। 28-29, 26-27 से निकलेगा 12 ऐसे लोकेशंस जो जैना से, वैष्णवा से, महायान, हीनयान, बुद्धयान, बौद्ध धर्म का बहुत सारे अपने अपने एक रीति रहे हैं, उन सब को ध्यान में रख के हिंदुस्तान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज प्लस श्रीलंका के 12 जगहों पे करने का प्लान है 28-29 में। 26-27 में हम जैसा मैम ने बोला है और फेस्टिवल चेयरपर्सन ने बोला है वो रहेगा। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर अगला 4 साल का है, वो चलेगा। अब आते हैं हम कि हम करते क्यों हैं। तो मैं सब लोगों से, जैसे सारे लोगों ने बोला कि यंग जनरेशन्स को हम लेंगे, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग सोचे थे 2024 में कि वाई लिट फेस्ट, बहुत सारे लिट फेस्ट होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता में, हम सब जगह होते हैं। तो हमारा ड्रीम ऐसा कतई नहीं था कि हम आए, पार्टी करें, बात करें, निकले और चले जाएं। नो, लिट फेस्ट हम ऐसा चाहते हैं जिसका क्वांटिटेटिव आउटकम हो, जो लिट फेस्ट यंग जनरेशन्स को कुछ दे के जाए क्वांटिटेटिव वे में, मतलब उनको टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दे, रिसर्च में, पब्लिकेशंस में, एडिटिंग में, राइटिंग में, और भी तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है जो इसमें हमारी एकेडमिक कमेटी भी बनी हुई है, 2 मेंबरान यहाँ हैं भी। तो यह है कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें, यंग राइटर्स को। अल्टीमेटली साहित्य को हम लोग इतिहास की तरह देखना कतई पसंद नहीं करते हैं, अदरवाइज केवल सिविल सर्विसेज और बैंकिंग के लिए तैयारी के लिए रह जाएगा। साहित्य को एक दर्शन की तरह लें जिसमें हम न केवल कला, संस्कृति, सभ्यता, बल्कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के गुर को समझें। हम साहित्य को साइंस की तरह प्रस्तुत करें। साहित्य है तो कला भी रहेगी, सारी चीज़ें, लेकिन साहित्य को अगर साइंस की तरह हम प्रस्तुत करेंगे जिससे हम आगे आने वाले जनरेशन को कुछ दे सकते हैं, तभी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यंग जनरेशन्स को कुछ फ़ायदा होगा। कहना है पेट भरेगा तभी दर्शन की बातें होंगी, जब तक पेट नहीं भरेगा दर्शन फिजूल बातें लगती है मैम। तो हम दर्शन करें, लेकिन पहले ये रहेगा, इन सब पहलुओं को ध्यान में रख के हम लोग कर रहे हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी के जो थीम थे, गीता की थीम की तरह है। मैंने 1 बजे भी बोला था, गीता हमें ज्ञान देती है न केवल पुरातन सभ्यता के बारे में, बल्कि फ्यूचर में और वर्तमान में कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, उस तरह का सार गीता से हमें मिलता है। उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय से हमें 3 महत्वपूर्ण सार मिलते हैं जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों के लिए वो सीख हो सकती है। पहला, मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ का जो धीरे धीरे बंद होते जा रहा। नालंदा विश्वविद्यालय केवल विश्वविद्यालय नहीं था, वो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ दुनिया के बच्चे अपनी आके बात कह सकते थे, पढ़ सकते थे। दूसरा, साहित्य, दर्शन और एवं विज्ञान दर्शन की सारे बात, साहित्य, विज्ञान और फिलॉसफी और इन सब सारे दर्शन के बारे में, सामाजिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसके दर्शन के बारे में बातें की जाती थी। और तीसरा, पुरातन संस्कृति, सभ्यता को कैसे बचा के पूरी दुनिया में रखना है। ये 3 पहलुओं पे नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में फेमस थी और वो आगे के विश्वविद्यालय के लिए भी वो बहुत कारगर, कामयाब एवं सफल कर सकती है प्रणाली को, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को भी बचा के रख सकती है। हमारा थीम नालंदा लिट फेस्ट के लिए केवल वही है और वैसे ही रहेगा, वही हमारी सार होगी। गीता का सार ही
नालंदा लिटफेस्ट का सार है। धन्यवाद। हम लोग फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू। तो अंतिम गंगा जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बाद और अंतिम सेशन यहीं पे संपन्न होता है। और गंगा नालंदा दिल्ली नालंदा डायलॉग 26 जो नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत हुआ है, जो इसकी यात्रा यहाँ से शुरू हुई है, जो 27 तक जो चलेगी, वह यहाँ से गुजरते हुए देश के अलग कोने से पहुँचते हुए अक्टूबर में 27 अक्टूबर 2027 को पुनः हम लोग राजगीर में मिलेंगे और एक भव्य आयोजन होगा, एक भव्य समागम होगा, जिसमें कि ज्ञान विज्ञान और तमाम तरह की चीज़ों पर चर्चाएं होगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जितने लोग थे हमारे वॉलंटियर, सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया है। आजमी है यहाँ, मौसम है, देव ऋषभ है, तमाम हमारे जो टीम के लोग थे, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मैम का प्यार और आपका आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहेगा। और एज ए फेस्टिवल डायरेक्टर दिल्ली नालंदा डायलॉग के मैम औपचारिक समापन की घोषणा और अगली बार हम श्रीनगर में कर रहे हैं अगले मंथ में। जी नमस्ते। फेलिसिटेशन। संजय अग्रवाल जी कृपया मंच पे आएंगे। संजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल, अंबिका जी आप भी आए। अंबिका जी, वॉलंटियर्स आल्सो एंड टीम आल्सो, प्लीज आगे आ जाओ आप लोग। पिक्चर ग्रुप पिक्चर, वॉलंटियर्स एंड टीम। आजमी सर, पिक्चर सर, विनीत सर, अभिलाष पिक्चर। हाँ खड़े हो जाओ ना सब ऐसे लाइन से। वॉलंटियर्स, मुस्कान प्लीज कम फॉर द पिक्चर। वॉलंटियर्स, ऋषभ, इम्तियाज सर, पिक्चर हो रहे हैं। अब आप सभी लोग चाय के लिए प्रस्थान करेंगे। चाय के लिए, है ना? चाय। सब ऊपर आ जाओ, वॉलंटियर्स जल्दी जल्दी, वॉलंटियर्स। हाँ सर आप लोग बैठ जाइए, बड़े लोग बैठेंगे आगे। आगे बैठ जाओ। Madam Sarta Buddhu ji presenting her written books to Ganga ji and Sonal ma'am.
Charles, come. बढ़िया मजा है कि नहीं? I want the book. बड़ा जरूरी है हमारे लिए